King Sports YouTube channel. And meanwhile, the previous delivery, Altaf Walpadi picked up a single down to deep long off of scoreboard. Now moves on to 5 on the board without loss of any wicket. So far, both the batters are really batting very well. As for the condition, it's not an easy condition for the morning for the batters. Outside enough off stamp. As you get down, oh, total mix up. Can you believe this? I think what the short third man fielder is doing there. It's his job is to collect the ball, but he's just waiting for that Pradeep who is in the short to final leg region. What could be a certain stoppable runs because of total misunderstanding, miscommunication. That ball travels quickly down to deep third man boundary for 4 runs. Ashok has got a very lucky boundary, but an unfortunate boundary conceded. Especially it's a really disappointment for the bowler Sustan, because that 4 definitely going into the accounts of his bowling figure, and that will definitely going to frustrate the bowler. What could be a certain, it's not a convinced cricketing stroke outside the line of time. Almost he got an edge of that one, and the ball went very quickly. I already mentioned it's a very quick outfield here in UCG cricket ground because of the hardness of the ball. Ball travels very quickly. Again, beautifully bowled by Basustan. That's a very good line indeed. Just inviting the batsman to go for the extra cover drive, but this time he's just reducing the phase in his bowling, and ball is just missed this bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Right arm over. They can ball him, clean him up. Looks like ball is just deflected from the leg, the boot of the shoes of the batsman. Then ball hits the stumps. Wicket number first is back into pavilion. The Shustan got a very important breakthrough, but a little bit disappointed at seeing that the boundary which is conceded in that over. Altogether, it's a very good first over for both the teams. As far as the run is concerned, Red Wings, Kunjatpail, they got exactly the 9 runs in that first over, and at the same time, they got a very valuable wicket of Ashok in that particular over. So Team Fortune Mangalore proudly organizing this cricket tournament in the name of YUVARATNA Trophy 2022 in this most beautiful and historical UCG cricket ground. The winners will go to get a huge cash prize of rupees 1 lakh with the YUVARATNA Trophy. The second place getter, the winner will go to get, runner-up will go to get rupees 50,000 with the YUVARATNA Trophy, and very attractive individual prizes. Best batsman, best bowler, and man of the series, as well as man of the match will be awarded. And
Sagar bowls beautifully bowled. That was a sharp incoming delivery in the negation. The last moment, I think Sharan is got a bat onto that. Otherwise, that ball definitely will going to hit a midland. Sagar away from us. Right above the wicket. That was a really good one indeed. Very lucky indeed. Ashwin across the line of the delivery. He's swinging his bat. If he missed it, definitely is going to be a flum in front of wicket. The last moment he is across the line, just closing the face of the bat. He managed to get a single down to deep whitish long on. This time slashed that one outside and off stamp. Got outside the tick outside edge of the bat before the fielder from short. Fine leg region to run across towards a short third man region. Ample time for the batter to complete the single. Pradeep, the fieldsman, one of the quick fielder, very athletic fielder in the side of Sarvagni cricketers, is standing at short fine leg region. One more addition, 15 for the loss of 2 wicket. Sagar, right above the wicket, bowls to Ashwin. Ashwin, good placement, very good placement indeed. Just making a little bit room to play the shot, wide off shot, mid off region to get the single before Sujit. Little bit moving towards his left side to field that one. Ample time for Ashwin to complete the single. 16 for the loss of 2 wickets. So far it's quite over. The runs are coming in the form of single in this particular over of Sagar. This time absolutely not needed in the delegation. He's really outstanding in this over so far. But he bowled one wide delivery, the last delivery of his over. So that one more extra is added to total. 17 for the loss of 2 wicket. Sharan facing beautifully ball. Giant pummeled and chance of run out, but they made it quite comfortably. Again the big frustration for the bowler, and that was really not a good wicket keeping there from Giant. It's definitely going to be a easy collection for Giant, but sometime maybe the little bit extra bounce and difficult for the bowler, wicket keeper, to collect the ball. So 3 overs completed after completion of over number 3. And after winning the toss, Sarvagni cricketers field first. I think they're really bowling very well. Just excluding that first over, after that last 2 overs been outstanding here for Sarvagni cricketers. Now 18 for the loss of 2 wicket. Before the next over will going to commence, it's time to ask my close friend Mr. Gopi to take over the microphone. And Gopi, good morning to you and welcome for the day number 2 of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. Just like it's a slow start. Of course, first over it's a 9 runs. Then it's a 3, then afterwards it's a 6. Altogether, I think slowly this Sarvagni cricketers able to put some pulley stop on the run rate. And 18 for the loss of 2 wicket. Another 3 overs remaining. I think Red Wings, Kunjat Bail have to look for some acceleration of run rate in remaining 3 overs. एग्जैक्टली सतीश, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 ओवर के बाद 18 रन बन चुका है। इन बचे हुए 3 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन इस वक्त बनाने होंगे रेड विंग्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें यहाँ पर एक बेहतर स्कोर खड़ा करना था। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया है विद अ ट्विस्टेड बैट। 4 रनों के लिए बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। शरण के बल्ले से चौका लग चुका है। जस्ट प्लेड दैट वन with a twisted bat and finds the gap as well between cover point and a backward point. He gets an bounty for that और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। और जैसा कि मेरे दोस्त सतीश ने फरमाया था, 3 ओवर में रन रेट एक्सेलरेट इस वक्त करना होगा रेड विंग्स को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और जहाँ तक सर्वाग्नि उर्वा का सवाल है, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उनके कप्तान ने लिया था, उस निर्धार का पूर्ण समर्थन करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सर्वाग्नि उर्वा के। और यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका लग चुका है। ये गेंद ऑन साइड पर टॉप एज और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछाला था, लेकिन डीप मिड विकेट पर जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। हालांकि कुछ दौड़ उन्हें जरूर लगानी पड़ी अपने आगे की ओर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर नजरें गड़ाए हुए उन्होंने इस कैच को लपका बाखूबी। और इस विकेट के साथ विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और शरण आउट होकर पेविलियन वापिस लौट चुके हैं। तो 22 रन 3 विकेट्स डाउन
It's 22 for the loss of 3 wicket, and this is the over number 5 in progress. This is the day number 2 of Yuvaratna Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune in loving memory of power star late Puneet Rajkumar, who expired a couple of months back. और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर इस श्रृंखला का, तो इस श्रृंखला का दूसरा दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ रेड विंग्स कुंजत बैल और सर्वाग्नि उर्वा के बीच। और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, तो अगला मैच खेला जाएगा फुटलैंड होसंगड़ी और रूफटेक काटीपल्ला के बीच में। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही दर्ज करने के लिए। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है अमन का, तो इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए अश्विन और दाहिने हाथ इस वक्त तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, ड्राइव नॉट फॉर अ रन। और गेंद इस वक्त सीधे पहुंच चुकी है गेंदबाज के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर विकेट परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद। ओह, दिस इज एन मिसजजमेंट और विकेट कीपर ने थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अगर वो चलकर आकर भी अगर विकेटों को उखाड़ने का समय था उनके पास, इतना वक्त था कि वो सिर्फ चलकर आए और यहाँ पर बिल से उड़ा दे, लेकिन बिना देखे उन्होंने गेंद को थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इस वजह से बल्लेबाज यहाँ पर सुरक्षित था। और कुल मिलाकर जहाँ तक रनों का सवाल है, रन तो नहीं मिले, लेकिन बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौट कर आने में सफल रहे हैं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार बेहतरीन कलेक्शन विकेट कीपर जयंत द्वारा टाइमिंग लगाते हुए गेंद को उन्होंने इस वक्त रोका, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी। 23 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अजय अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को यहाँ पर फील्ड कर लिया। 4 ओवर के समाप्ति, 23 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स फॉर Red Wings Kunjat Pail after being losing the toss and put it to bat by Sarvagni Urva in the match number 1 of the day 2 of Yuvaratna Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune. और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 2 overs play left in their innings। और जहाँ तक माहौल का सवाल है, तो एक बेहतरीन माहौल इस मैदान पर छा चुका है। सुबह का वक्त 9:35, 9:36 कहना पड़ेगा अगर सही तरह से कहा जाए, इस वक्त बच चुके हैं। और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके टीम फॉर्चून। और इस श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई। दर्शक कुछ ज़्यादा हद तक मैदान के चारों ओर इस वक्त नज़र नहीं आते हुए, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो विजय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद आज बार चिप किया बैक टू द बाउलर की दिशा में, लेकिन मैं समझता हूं द बॉल केम आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद को इस वक्त दबा दिया था, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था और गेंद पहले टिप्पे के बाद सीधे पहुंची गेंदबाज के हाथों में और कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज विजय तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह रनों की सख्त दरकार इस वक्त रेड विंग्स कुंजत पेल को। अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें पार करना होगा, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाजी इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, स्टंप्स को कवर करते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद उस वक्त फील्ड की जा चुकी है फाइनल की दिशा में।
रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। कुल मिलाकर इस ओवर में चौथी बार विजय एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा, इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात आफ्टर पावर प्ले इस श्रृंखला के अंतर्गत, और दाहिने हाथों पर द विकेट। विजय की गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में, और इस बार यह विकेट गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर टकराने के बाद आउटर ऑफ द बैट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउटसाइड ऑफ द बैट, टकराने के बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर, माफ कीजिए गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज ने इस कैच को लपक लिया आसानी के साथ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। आई थिंक he's got an inside edge on that, and the ball after being hitting to his foot, it went in the direction of the bowler, and he completed the catch on his follow through. 4th wicket down, it's 25 for 4, और 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर। किंग स्पोर्ट्स के जरिए इस श्रृंखला का आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर। और जहां तक सवाल है, यहां पर एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव कवरेज देते हुए किंग स्पोर्ट्स के सर्व सदस्य, और कुल मिलाकर कल इस श्रृंखला का छुट्टी का दिन, और रविवार को मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों के मैचेस यहां पर खेले जाएंगे। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो विजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से गेंद लेग स्ट्रिप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, it's 25 for the loss of 4 wicket for रेड विंग्स कुंजत पैल। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर का, तो एक ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो यहां पर अंतिम ओवर का खेल बाकी, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार इस अंतिम ओवर में अश्विन इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अश्विन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सुल्तान ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर, दिस इज एन क्लीन हिट, यस इट डज, इट्स गॉन ओवर द फेंस, 6 रन्स इनटू द अकाउंट ऑफ द बैट्समैन। गेंद की गति को भांपते हुए अंतिम क्षण में थोड़े से सफल होते हुए गेंद को इस वक्त उछाला डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस बीच अश्विन ने बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से लग चुका है, और स्कोर इस छक्के के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक पर रहने वाले बल्लेबाज के, तो अश्विन ने इस वक्त छक्का लगाया था, और एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार। तो 4 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। अश्विन और मंसूर क्रीज पर मौजूद है। जहां तक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मंसूर का सवाल है, आज उनका जन्मदिन है, द बर्थडे बॉय, और निस्संदेह हम संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनको हार्दिक बधाई यहां पर देते हैं। और खासकर आतिफ जो कि एनएम क्रिकेटर्स के सदस्य है, उन्होंने भी उन्हें बधाई दी है मंसूर को उनके जन्मदिन के अवसर पर। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी।
और सुस्तान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अश्विन के लिए। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलते हुए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप कवर पॉइंट इस वक्त तैनात। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, स्टंप्स पर गेंद टकराए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। एक अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर गेंदबाज मत स्ट्रेट लाइन गेंद को उन्होंने फेंकी थी और अंतिम क्षण में गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई देखिए किस तरीके से हुआ। हैव अ लुक एट दिस वन और स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड नाउ जस्ट 4 बॉल्स रिमाइनिंग इन द रेस। सिर्फ 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। फिलहाल जहां तक सवाल है सर्वाग्नि उर्वा का एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक उन्होंने दिया है और टॉस जीतने के बाद जो निर्धार उनके कप्तान ने लिया था उस निर्धार का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हुए इस वक्त वो एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए और इस वक्त फलस्वरूप ऐसा कहना पड़ेगा रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज रेड विंग्स कुंजन पहल के और गेंदबाज सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज शरण का आगमन यहां पर हो चुका है। दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद लगो पर और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद हवे में डोलती हुई अंतिम क्षण में पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है। पहली गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है। पहली गेंद पर शरण का गोल्डन डक के रूप में और विकेट नंबर 6 का पतन हो चुका है 31 रनों के योग पर। तो 2 लगातार गेंदें और 2 लगातार विकेट, तो हैट्रिक का इस वक्त सुनहरा मौका और देखना यह है कि सुस्तान अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। और इस बीच स्ट्राइक लेने के लिए तैयार मंसूर इस वक्त जो कि बर्थडे बॉय हैं इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार। सुस्तान की गेंदों का ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉर्ट फाइन लेकिन दिशा में गेंद पहुंची, नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन वो पूर्ण कर सके। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज रंजू इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉट स्लिप आउट की दिशा में जहां पर खुद विकेट कीपर जयंत पहुंचे, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। लेग बाय का इशारा एक बार फिर से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है सुस्तान। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, एक बार फिर से चूके और गेंद जब तक शॉर्ट गली पर फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का बाई के रूप में। और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर Red Wings Kunjat Bell. They finished with 34 for the loss of 6 wickets in their stipulated 6 overs. And now the target for Sarvagni Urva is 35 in 6 overs. 35 they have to score for victory with the required run rate of just under 6 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 5.85 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets they have to score in the stipulated 6 overs. 35 they have to score and their inning starts with Rajesh Chopwal. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब सर्वाग्नि उर्वा की पारी की शुरुआत यहां पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi. So 35 is the total score, 34 is the total score, 35 is the target now for Sarvagni cricketers to qualify for the next round of prestigious YUVARATNA Trophy 2022. And it's a fighting total. Is in the morning, I think 35 is not, one cannot underestimate that total in the morning. But having such a the very good batting department of Sarvagni cricketers, I think the bowlers of the Red Wings have to bowl very well. So just coming back to that target 35, 36 to win this match. Just I'm mentioning about Sarvagni cricketers. They got some excellent batting department. Of course, they came into the finals in the last Big Champions Trophy with their the bowling department as well as the batting department, and even they got some very good fielding department. So, considering all this fact, I think the Wings, Red Wings, Kunjat Bail have to bowl very well. Especially first 2 overs is going to be very crucial, and especially for the fielding team, because they are depending the total. When you are depending a total like 36, 35 to win the match for opposition, when the run rate required is just less than 6 runs per over, I think it's going to be the very crucial for the fielding team to get with some start with some good start from the bowling, and wait and see how well the bowler will going to give the start. Jairam. Jayant is a non-striker then, and Shravan is a striker. The first ball, just like we were mentioning about, needed some good start, but not a good start here from the bowler. Starts with the wide, down the leg stump, going further away, and the first run comes up here for Sarvagni cricketers. Continues the mistake here by the bowler. The second wide of this over, and 2 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. So straight away Ashwin is running from the wicket keeper, running towards bowlers to give some kind of suggestion. He knows that Ashwin is one of the most experienced campaigner. You know exactly how important it's to start with some good over, economical over, wicket taking over if they wanted to win the match, and straight away he just have a little bit bored with his the bowler, and one at deep mid wicket, the fielder, and one at deep backward square, like the 2 fielders in the deep. This time the captain of the side, Sarvagni captain Shravan, tried to hit across the line of the delivery, but he's not really stretching his front foot towards the line of the delivery to hit that one across the line. Missed it completely, and there is no chance of any run. Score remains on 2 without loss of any wicket. Tilak from the far end. Tilak right arm over the wicket, bounce this time again, one more wide, and misfield there with the fielder in the short third man region. So because of that misfield, the batters has got the time to cross off for a single now. So without any big effort, Sarvagni cricketers, they got 4 runs, 4 without loss of any wicket in the over number first in progress. Asha, the fieldsman there in the short fine leg region, misfielded. So batters has got crossover the single that brings Jayant into strike. So very experienced, very good striker of the ball. Jayant will go into face his first delivery. Tilak little bit suffering from his bowling, line and length. That was a beautiful delivery indeed. Excellent line, and might be the problem for the bowler is a left and right combination, because he couldn't manage ball the good line to left-handed, but he's bowled a very good line for the right-handed batsman Jayant, and Jayant completely missed out. This time again appeal for leg before wicket across the line after he is swinging his bat ball, lining up to fine leg boundary. There is a fieldsman there in the deep, and before he ran across to field that one, ample time for the batters to complete the single. So with that single, scoreboard now moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. So no need to panic at all for Sarvagni cricketers. They're chasing 35 to win this match, but one cannot underestimate this small total. Small total always, I think it's going to be a dangerous one if you underestimate that total. And here is the next one. Driven that one powerfully, beats the infield, down to deep long on boundary for 4 runs.
Quick outfield in UCG cricket ground. Once it beats the infield, and no chance at all for the fielder to chase that one. Ball is really travelling quickly down to deep whitish long on boundary for 4 runs. Little bit short pitch delivery. And Shravan, look at that one, across the line, swinging his bat, and ball is just passing that mid-on fielder. And look at that ball, how quickly that ball travels. And he got that right from the middle of the bat. This time, in other end, it's going to be one more boundary. Yes, he does. Ball is just landing in just short of that boundary line, but that ball went like a tracer bullet. The line is not good. Short pitch delivery. You cannot bowl that line to the left-hand batters. They're always very strong of their legs. Even the fielder there in the deep backward square leg is just a spectator watching the ball going over the rough after one bounce. So terrific start, explosive start here for Sarvagni Urva. They got already 13 valuable runs. I request Foodland Osangadi as well as Roof Tech Katipala players, please complete your signatures as soon as possible. The next match will be played between Foodland Osangadi versus Roof Tech Katipala. This time he got that one aerial route and he got the distance right. Yes, he does. That was a tremendous blow there from Shravan. He's in a hurry. What expensive over is bowled there by the bowler Tilak. Look at that stroke, that high and handsome. That ball really sailing and going into the trees, hitting the trees out of the park. Just ball is landing in front of the rickshaw which is standing outside the boundary line. The spectator watching the cricket sitting in auto rickshaw. He may be a little bit thinking about ball will going to hit his the glass, the front glass. But nothing to worry about that. Tennis ball. So 19 without loss of any wicket. What a great start there from the captain of Sarvagni Urva. He himself taking a full in charge of getting some big shot. 2 boundaries and a 6. 19 runs from that over. When you consider 19 runs in 1 hour, when you are depending a small total like 35 to win this match for the opposition, I think it's very difficult for the Red Wings Kunjat Bail to save this match. Anand brought into attack from the commentary box and second over of the power play. Deep back point and deep long off for the 2 fielders in the outside the circle. The first ball outside the run of off time. Jayant tried to reach that one, slower one, change of pace. Anand bowling a slow leg cutter in the negation, so that Jayant completely missed out. 19 without loss of any wicket. Anand again bowling with a short run up. Away from us with a before delivering the ball. He pitching the ball several times. This time very good line, perfect line to bowl for the leg spinner bowler. It's a very good to see that leg spinner has been introduced in the power play overs. It's not so easy to come and bowl your leg spin deliveries in the power play overs. Nice to see that the level of confidence from the bowler. And the olden days, there is a lot of leg spin bowlers, 90s, 80s, 90s, in the early 2000s as well. Each and every team has got 1 or 2 leg spinners, but in nowadays, in the present cricket, it's very rare to see the leg spin bowlers in the teams. This time reverse sweep comes into play. I think it's not a good idea to bring the fielder from the backward point region, and ball is just winning the race against the fielder in the deep third man boundary for 4 runs, deep backward point boundary for 4 runs. I think it's a bad idea. The last delivery, they brought that fielder in the deep backward point inside the ring, and Jayant, everybody knows that he's got a potential of playing a reverse stroke quite beautifully, especially when the leg spinner is in operation. You need to get that protection in the deep. You need to get the protection deep because ball is going away from the batters. So easy for the batters to go for the reverse stroke. And he pays the penalty for that. 23 without loss of any wicket. Anand bowls. Again he reverse sweeping that one. This time he didn't got that much of placement right. And overthrow comes into play. Everything is going in favor of Sarvagni. Everything is going against
Red Wings Kunjat Bail, they're cruising towards the victory now. 24 without loss of any wicket. Sarvagri cricketers are really going in a big gun. 14.40 runs per over. We can see in the monitor the required run rate is 2.54. It's going to be a difficult one for Red Wings to save this match, because just 11 more runs required for the victory, and Shravan back into strike. 14 runs he scored in just 4 deliveries. More than 300 plus the strike run rate he got. Shravan facing this time beautifully ball, perfect leg cutter and perfect lined ball to the left hand batters. Just ball is nipped back into the batsman, leg cutter, and Shravan just across the line of the delivery, swinging his bat. Look at that one in the replay. That beautifully ball. Look at that, wide of the crease is ball. He need to be, because he's bowling to left-handed batsman. You need to come wide of the crease if you wanted to keep some turn in the delivery. And that was a beautiful line to ball. Absolutely perfect line to ball to the left-handed batter. So 24 for the loss of 1 wicket. Excellent delivery from Anand. So before Shravan back into pavilion, I think he did the damage what he wanted to do in the first over. He got some runs in the form of boundary and 6. So nothing much worried about that wicket here for the Sarvagri cricketers. Just 11 more runs required for the victory. The over number 2 in progress. We can see that the fielder all inside the ring. Now one fielder from mid-off going back to deep long off. Final time in this over. Anand bowls to Pradeep. Very good striker of the ball. The very busy customer. Very athletic. Very energetic as well. Tried to get the placement in irrigation, but ball went straight to the ends of short mid wicket. Maybe he wanted to send that one between mid wicket and bowler. So Anand completes his over number first, and 2 overs completed, chasing 35 to win this match. And the Sarvagri cricketers are looking in a commanding position. 24 for the loss of 1 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This is a second call for you to complete the signatures. Before completion of this match, you have to complete your signature as well as the toss of the next match. So good morning everyone, those who are very late to tune to your mobile, those who are watching live telecast of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022 through King Sports Mangalore, having a fantastic live telecast of this cricket tournament. Good morning everyone, and welcome for the day number 2 of this prestigious cricket tournament, proudly organized by Team Fortune Mangalore in memory of our beloved late power star Punit Rajkumar. And watching match number 1 of day number 2, and 35 is the target. 24, that means 11 runs required. We can see in the monitor 24 balls and 11 more runs required for the victory. From the far end, start of the over number 3 starts with the wide. So 25, 10 required for the victory in 24 deliveries. Red Wings Kunjat Bala have to do something special from their bowling if they wanted to restrict the opposition from the victory. Shuffled across Lenore too much giant in irrigation. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. They completed the quick single in the irrigation. So with that single leg by called by umpire, with that leg by scoreboard was under 26 for the loss of 1 wicket. 26 for the loss of 1 wicket. 9 more runs required for the victory. Ashoka. Right, a mobile wicket. Drives that one. No need run for that. Just stand and deliver there by Pradeep. Right in the gap. Huge gap between long on and wideish long off. And right from the middle of the bat, he just passed that one. Look at that one. Flighted one. And picking up the line and length so quickly. And look at that ball. Travels. One bounce over the row for 4 runs. No one there to stop that boundary. This time he wanted to finish his match in a style.
But ball is just missing his bat because 6 runs required for the victory now. 30 on the board, 5 runs required for the victory. And Ashok will go into ball that next delivery. Now they're sending that mid-wicket fielder to back. Then cover point, the backward point fielder is coming towards the short mid-wicket region. But this fielding change will not going to help, because already they came into near to the target down the leg stump. You are setting a field, but you are not doing your job, bowler. Again, they balls are wide down the leg stump. One more addition to total 31 on the board. 4 runs required for the victory. Appeal for leg because Flum, absolutely Flum in the occasion as Ashok bowled a quicker one. He tried to swing that one towards the mid wicket. Maybe the intention of Pradeep to finish the match in a style. But by doing that, I think he's choosing a wrong delivery. You can see in the replay that ball is pitched in a line. Ball just moving from the good length spots, coming into the batsman. And batter tried to hit the ball towards the mid wicket, missed the line completely. And easy addition there from Shiniket to raise his finger, and sending the batter into the pavilion. Vijay is a new batter, just came into middle. Opportunity to get some batting practice here. 4 runs required for the victory. Ashok got a wicket. Now bowling from the far end. So donors banner end, those who are supported for the success of this cricket tournament. This time just wide of Ashok in that occasion, which I played that one quite nicely. He picked up a single, one more addition. Scoreboard moves on to 32 now for the loss of 2 wickets. And another 3 runs required for the victory. Giant back on strike. He's batting on 7. This time he finished the match in a style. And ball is landed over, and I think his ball is looks like that will go into a maximum. Sorry for that early celebration in commentary. I thought it might be a big stroke. Looks like once it's hoisting it over down the mid wicket, but ball is landing inside the boundary line. Good piece of fielding there by the fielder in the deep mid wicket. So just a single run, 33, 2 runs required for the victory. (34) 33. 2 runs required for the victory. Giant will go into get the chance here to get a winning runs, but bowler don't think he will going to allow the batsman to get a winning run. He himself conceding some runs here. So starts with the wide, so scores are level. 1 run required for the victory for Sarvagni cricketers. The previous over he bowled a leg spin bowling, and he's just changing his bowling action in this particular over. That was nice to see. That is good enough, even in the medium fast ball as well. He's bowling some accuracy. The very fastest ball. He can bowl leg spin, he can bowl fast deliveries. Anand. Aman. Bowling round the wicket, right arm with a short run up. Just a single run required for the victory. Giant is on strike. Forwarding defensive stroke. And there is one lay a dot ball. Just a single run required for the victory. The 17 balls remaining, and just an 1 run required for the victory. And that's it. Just like I mentioned about, he's not really allowed the batter to get the winning runs, but he himself conceded that runs. That's it. 35 for the loss of 2 wicket. The comprehensive victory for Sarvagni Urva defeated the opposition by 8 wickets. They got the runs in a 3.2 deliveries and 2.4 deliveries to spare, and it's a huge victory for Sarvagni cricketers and good start for this YUVARATNA Trophy 2022. Congratulations winner, and congratulations winner Sarvagni cricketers. Hard luck. Red Wings Kunjat Bail
I think the effort is not good enough to defeat the opposition, Sarvagni cricketers. Meanwhile, we're coming to the second match. Foodland Osangadi takes on Rooftech Kadipal. At the same time, it's time to judge as the man of the match of this particular cricket tournament. It's very interesting to say that we'll go into the man of the match. And just coming to that bowling department, it's only the bowler who picked up 3 wickets, Sustan, and Ajay has got 2, and Sagar didn't got a wicket. Vijay has got 1. In the batting department, Captain Shravan scored a 14, quick fire 14 in just 5 deliveries. And wait and see, we'll go into the man of the match of this first match. So man of the match goes to who is dismantled the batting department with his bowling performance. Zustan of Sarvagni cricketers judged as a man of the match for his wonderful bowling performance, who picked up 3 valuable wickets. So I request Zustan, please come here and collect your man of the match award. So Tribal Tattoos will go into sponsor this t-shirt for the man of the match winner. So I request Sustan, please come and collect your man of the match award from our chief guest. So second match, Foodland Osangadi and Rooftech Kadipala. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜೇಶ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಸ್ ಅಂಟ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, famously known as Mangalore Express, one who is using his arm to get some pace in his bowling. Maybe he's a little bit out of the cricket in the last 2 seasons. He's a very good bowler. Rajesh will go in to present the t-shirt. Tribal Tattoos sponsored this t-shirts for the man of the match winner. Congratulations, Sustan, for your wonderful performance in the bowling, picking up 3 valuable wickets, and he is the one responsible for the victory of Sarvagni cricketers. And Sarvagni cricketers entering into the free quarter-final of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. We'll take a short break, commercial break, and after that commercial break, you are right in front of you, live and exclusively. And before for the second match, the match between Foodland Osangadi versus Rooftech Kadipala. Thank you.
I request Roof Tech captain, please send your extra players to us commentary box to identify your player's name, because everyone has got jersey number 55. So very difficult to identify the players. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dhanyawad Satish. So the second match of the day 2 of YUVARATNA Trophy 2022 is now going to begin, and between Footlands Hosangadi versus Roof Tech Katipalla. नकीज और अजहर आरंभिक बल्लेबाज, और नकीज जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, एक रन मिलेगा. और तो फुटलैंड होसंगडी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. फलस्वरूप रूफ टेक के दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, नकीज और अजहर. और नकीज पिछले गेंद पर यहाँ पर खाता खोल चुके हैं, और वो इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजाफ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, एंड ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट. गेंद को इस वक्त खेला था मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से जगह बनाते हुए, ऑफ द बैक फुट खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त पंच किया, और यहां पर पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बेहतरीन तरीके से. तो देखिए किस तरीके से इस वक्त खेला था, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, और जगह बनाते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रनों के लिए. गेंद टॉप पे जब मौका, लेकिन नहीं, फील्डर काफी पीछे मौजूद, काफी आगे मौजूद कहना पड़ेगा. गेंद उनके सिर के ऊपर से निकली, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है. सफल होते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था, गेंद उनके टॉप एज पर टकराई थी. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस बीच मिलेंगे 2, और स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका है 7 रनों पर. यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. पहला ओवर यहां पर प्रगति पर, निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है यहां पर टीम रूफ टेक को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है. बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा slower this time, and along the carpet the ball came, and the ball went into the hands of a wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. और एक बार फिर से गेंदबाज नजाफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड, और एक रन फिर से उनके खाते में जुड़ेंगे. अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए गेंदबाज नजाफ इस ओवर में 2-3 वाइड वो फेंक चुके हैं. और एक बार फिर से दाहिने हाथ राउंड द विकेट, वो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची सिली पॉइंट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में असफल. ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम रूफ टेक का यहाँ पर 10 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. बेहतर शुरुआत कहना पड़ेगा यहाँ पर कर चुका, और इन 10 रनों में 2 रन वाइड के रूप में प्रदान कर चुके हैं
गेंदबाज है। तो नकीज और अजहर इस वक्त क्रीज पर मौजूद, एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए रूफटेक का टिपल्लक, और मैं समझता हूँ कम से कम 45 से 50 रन तक का आंकड़ा उन्हें यहाँ पर खड़ा करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और जहाँ तक सवाल है क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों का, तो यहाँ पर एक बेहतर आरंभिक साझेदारी देने की कोशिश करते हुए पहले ओवर में लगभग वो सफल हो चुके हैं, 10 रन जोड़ चुके हैं। 8 रन बल्ले से बने थे, 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में, और 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 6 overs per side to be played, 1 over gone in their innings and 5 have to come। और देखना यह है कि इन बचे हुए 5 ओवर में रूफटेक के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इस वक्त गेंदबाज तो इस वक्त गेंदबाज शमशीद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ, और शमशीद बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेलना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर टॉप एज पर टकराने के बाद, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे एक टिप्पा खाने के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया अपने आगे की ओर दौड़ते हुए, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है, और गेंदबाज शमशीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, नकीज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शमशीद की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा पे कर गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है या नहीं, और टकरा चुकी है, जी हाँ, गेंद आई थिंक इज गॉट इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद शायद गेंद स्टंप्स पर टकराई थी। देखिए किस तरीके से हुआ था, have a look at this, yes it does, he's got an inside edge on that, and the ball he dragged down to the stumps at the last moment, और ये बोल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है, इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, और पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है नकीज के रूप में। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर रूफटेक, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, फास्टेक वॉरियर्स का मुकाबला होगा YFC बजाल के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। एजाज द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडिल फॉर रूफटेक, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ते हुए, और गेंदबाज शमशीद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, निस्संदेह एक बेहतर गेंदबाजी की जरूरत जहां तक फुटलैंड होसंगड़ी के गेंदबाजों का है, जहां तक गेंदबाजों को बल्लेबाजों को रोक कर रखने का सवाल है रूफटेक का टिपल्ला के, तो यहां पर उस कोशिश में गेंदबाज यहां पर लगे हुए एक बेहतर साझेदारी यहां पर निभाने की कोशिश करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, और शमशीद इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। अजहर इस बार चिप किया लॉन्ग ऑफ पर इनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। क्वाइट मिटिगेटेड द लास्ट मोमेंट बट ही गेट्स एन सिंगल फॉर दैट, और 13 रनों पर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज शमशीद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद एजाज के लिए नॉट क्वाइट बट लेके रन के लिए दौड़ पड़े, ओह दैट इज एन डिजास्टर देयर, दैट कुड बी द डिजास्टर देयर इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स, लेकिन थ्रो निशाने पर नहीं लगा, और स्टंप से थोड़ा वाइडर जाता, और एजाज जोखिम भरा रन यशस्वीतम सफलतम अंतिम क्षण में पूरे करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। कुल मिलाकर रूफटेक के बल्लेबाज क्रीज पर जमने की, क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए, और इस वक्त अजहर सामना करने के लिए तैयार शमशीद की गेंदों का। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ऊपर बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर, और इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति जिसमें सिर्फ 4 रन शमशीद ने
प्रदान किए और वहां पर एक विकेट भी उन्हें प्राप्त हुआ नकीज के रूप में। बोल्ड आउट उन्होंने किया था नकीज को और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। ऐसा कहना पड़ेगा रूफटेक काटीपल्ला आर नाउ स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। Still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और फास्ट टेक वॉरियर्स और YFC बजाल के बीच अगला मैच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर से दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर इन दर्ज करने के लिए। तो ये श्रृंखला जो कि युवरत्ना ट्रॉफी 2022 दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार की मधुर याद में इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है टीम फॉर्च्यून द्वारा और निस्संदेह उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त टीम फॉर्च्यून ने उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए टीम फॉर्च्यून ने इस मेगा श्रृंखला का आयोजन यहां पर किया है युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम से। और ये श्रृंखला इस श्रृंखला का दूसरे दिन का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ और अश्वित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन पर काफी लंबा दौड़ और गेंद को इस वक्त मैं समझता हूं रोक चुके हैं अपने पैरों के जरिए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। तो 3 रन यहां पर दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और गेंद को बेहतरीन तरीके से वहां पर रोका गया था डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 1 wicket in the open number at the start of the third over in fact। और इस बीच अंपायर इस वक्त थर्ड अंपायर को उन्होंने मांग की है कि कृपया वहां पर परीक्षा करें कि गेंद को रोकते समय बल्लेबाज का शरीर माफ कीजिए फील्डर का शरीर इस वक्त सीमा रेखा को टकरा चुकी थी या नहीं। खासकर पैर देखना पड़ेगा जब गेंद को अंदर की ओर ढकेला गया था तब फील्डर का पैर सीमा रेखा को टकरा चुका था या नहीं। तो तृतीय अंपायर इस वक्त परीक्षा करते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 विकेट्स। He saved well inside defense. 3 runs just added to the total और 17 रनों पर स्कोर बोर्ड इन 3 रनों के साथ पहुंच चुका। तो बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया था सीमा रेखा के अंदर। उनका हाथ जरूर सीमा रेखा के सीढ़ियों पर वो रखे थे जरूर लेकिन तब तक गेंद को वो ढकेल चुके थे सीमा रेखा के अंदर। तो 3 रन यहां पर जुड़ चुके हैं उनके खाते में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इनफैक्ट। और फील्डिंग में कुछ हद तक ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ तो फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज अजहर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लॉन्ग ऑफ फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है। लॉन्ग ऑन मौजूद डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास और इस बीच गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची 1 रन मिलेगा। नॉन स्ट्रोकन के बल्लेबाज इजाज काफी तेजी के साथ दौड़े थे जैसे ही गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर टकराई थी स्ट्राइक रेट पर और अंतिमकार सफलतम 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है ये जानते हुए कि इजाज ऑन साइड पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं और यहां पर इजाज ने एक बार फील्डिंग का मुआयना किया और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर वो आगे बढ़ाते हुए
अश्वित दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो उनकी ओर की तीसरी गेंद इस वक्त, और ये गेंद इस बार गेंद इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स एंड दैट इज द एंड ऑफ इजाज। गॉन फॉर अ माइटी हीव ऑन द ऑफसाइड एरिया, और गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी, लगभग जमीन के सहारे आई। हैव अ लुक एट दिस, गेंद को किस तरीके से उन्होंने इस वक्त खेलना चाहा था। देखिए इनसाइड एज, बल्ले का भीतरी किनारा स्टंप्सों पर टकराए, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इजाज का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। तो यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका है, और अब हालत ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक नाजुक सी दिखाई देती हुई रूफटेक के लिए। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर रहा। Junaid, the number 4 batsman, is now coming out to the middle to joining the batsman Azhar, who at the non-striker end, और इस बीच जुनैद सामना करने के लिए तैयार, और अश्वित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। निस्संदेह इस वक्त रूफटेक को एक साझेदारी की जरूरत है इस संकटमय परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, और देखना यह है कि जो कमी इस वक्त नजर आ रही है साझेदारी की, क्या क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज उस कमी को पूरा कर पाएंगे या नहीं। और गेंदबाज इस बीच अश्वित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, बेहतर स्ट्राइटर लाइन, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, आक्रामक स्ट्रोक को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। Scoreboard stays at 18 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress। गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद, और स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज लेग स्टंप पर आते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना दागा, और इससे पहले मैं समझता हूं बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, वाइड का भी इशारा, कुल मिलाकर 2+1, 3 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त, और विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने निशाना दागा था स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन जब तक निशाना स्टंप्सों पर टकरा था बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 2+1, 3 runs now added to the total, and the scoreboard is now moving up to 21 for the loss of 2 wickets। Runs इस वक्त चाहिए रूफटेक का क्रिकेटर्स को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच दोनों अंपायर कुछ बातचीत यहां पर करते हुए, और वापस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, तो स्कोर वाइड को वापस ले लिया गया है। आई थिंक द बॉल वॉज नॉट सो मिसिंग टू फॉर आउटसाइड द लेग स्टंप, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे सिर्फ 2, और 21 - 1 20 नाउ द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अंतिम बार इस ओवर में अश्वित तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग बाय का इशारा इस वक्त, जुनैद स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्वित जुनैद के लिए। ये गेंद इस बार परिवर्तन के तो पति में गेंद हवा में, लेकिन पॉइंट फील्डर थोड़े से काफी पीछे, और जब तक गेंद को वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया था, लेकिन 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 overs had been bowled, 3 have to go in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 3 overs with the help of remaining 8 wickets। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. And the battle is on in the first round of this prestigious cricket tournament, Foodland Osangadi versus Rooftech Katipala. Rooftech Katipala in the previous tournament, BK Champions Trophy, they came into the semi-final in the local pool and couldn't manage to qualify for the finals. But in this particular cricket tournament, definitely they wanted to qualify for the
finals of this prestigious cricket tournament. For that, I think they have to play some better cricket, and they need to come out from the previous mistakes. They have to point out what mistake they did in the previous previous tournament, and they have to correct the mistake and have to come with a positive frame of mind. That one thing they wanted to do in this particular tournament. And so far, it's 7 runs per hour run rate progressing here for Roof Tech. 21 for the loss of 2 wicket, 3 overs remaining. They got 8 wickets stand, and wait and see how well they manage to get the acceleration of the run rate. From the commentary box end, Ashwit will going to continue. Repercussion, Samshid going to continue. Samshid is a very good the left-hand batter as well as left-hand bowler for the side. His ball right arm over the wicket, beautifully driven down to deep extra coverage, and there is a protection in the deep, so that have to settle for the single. The very good field placement by the captain of Roof Tech. Of course, everybody knows that team, Repercussion, Foodland, Asangadi, the team which is came from our neighboring state, Kerala and Kasaragod district. Each and every tournament, so one team which is representing from our neighboring state. That was really good sign, and that will definitely going to build a bridge between South Kendra district versus Kasaragod district. A good relationship we can build, and even the friendship as well. So from the commentary box, and Samshid left arm around the wicket, he bowls slashed that one outside, and none of after not quite getting down from the middle of the bat, but still he managed to get the single down to short backward point region. With that, the single scoreboard now moves on to 23 on the board for the loss of 2 wicket. Zunaid back on strike now. Shamsuddin bowling from the commentary box end with the jersey number 3, pass umpire Shriniket. Left arm around the wicket, he bowls. This time again, ball is a little bit hurried down to the batsman, and they're going for the second mix up, and resulting in a big wicket. Azhar is back into pavilion looking for the second. Look at that one in a replay. The ball is went towards backward point region. Look at the fielder from the deep backward point. He is running very quickly from the deep backward point region. And Nasaf, I think so, he got a very good throw right over the bills, and the formalities which is completed by wicket keeper Unnikrishnan, and completes the job. The wicket number 3 is back into pavilion of Roof Tech. Roof Tech Katipalla lost the wicket number 3, 24 for the loss of 3 wicket. Coming back to the teams which is taking part in this cricket tournament, Foodland Osangadi, one more very good team which has got a lot of titles behind that. Foodland, the tournament which is played in Kerala state, they are the one of the best team, and each and every team. And the last time the well-time Cherigoli, the team which has participated, sometime SNNC, Sai Namana, Kasaragod, they are also came into the participating in the tournament. It's played in UCG cricket ground. Once they become the runners-up as well. So it's good to see that slowly the teams which is coming from our neighbor state to participate in the big tournament like this. Shamsuddin bows. There's a beautifully driven down to deep cover point region for a single by Zunaid. So with that single scoreboard, Iqbal is a new batsman who got a single here. So with that single scoreboard moves on to 25 for the loss of 3 wicket. That brings Zunaid into strike now. Shamsuddin bowling with a short run up. Left arm. Oh, that was ball of back drive, powerfully driven back in the negation by Zunaid, and off stop by Shamsuddin on his follow through. Very difficult sometime on his follow through. You have to react very quickly whenever the batter's hitting the ball powerfully back to bowler, and bowler have to react very quickly. But he managed to stop the speed of that stroke, but couldn't manage to stop the single from the batters. 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. So very good cricket is going on here between these two teams. As the next one again looking for the off drive, not quite getting timing behind the stroke. Bowler's back drive, good over there. Shamsuddin, it's a very good over indeed. So over number 4 completed. After completion of over number 4, and after winning the toss, selected to field first. Roof Tech Katipalla managed to get 26 for the loss of 3 wicket. Now 2 overs remaining in the innings of Roof Tech, and wait and see how many runs they will going to score. Some players which is mixing up in this Foodland Osangadi.
Especially we can see that wicketkeeper behind the stump, Unnikrishnan, usually will represent SNNC, and some players from Weltime as well. So even we can see that Dawood, one of the top player of Woodlands, who's famously known as Asim Amla of South Africa. The players has got a nickname. That's the specialty of the teams of Kasaragod district. Every players has got one nickname of international players. And just like the Dawood who is standing at short final aggression, he's got a nickname of Asim Amla. So from the far end, let's start of the over number 5. Ashwin to continue. Ashwin is also one of the top bowler, and previous is represented for SNNC Kasaragod. Now he's representing for Foodland. So from the Donner's banner end, the start of the over number 5. Ashwin. Pass down by Roland Pinto. Drives that one rapidly down to deep extra cover region. The fieldsman there in the deep. Samshud a little bit pummeled there, so taking advantage of that one. The throw is not good enough. And if it is throw over the bails, a certain chance of run out is provided. But Iqbal complete that second run quite easily. And little correction. Junaid complete that couple of runs. And Iqbal running towards a danger and he completes. So 28 for the loss of 3 wickets. Ashwin bowls this time far outside and out of stump, but nothing much to do with the delivery. And batters just watching the ball till the last moment and left the ball into the hands of wicketkeeper. White called by umpire. 29 for the loss of 3 wickets. Ashwin bowls this time a slower one, change of pace. Unnikrishnan this time really missed out. The bowler frustrated, not happy with the effort from Unnikrishnan. What could be a certain chance of run out? He just missed out. And 1 run conceded. Ali Sai Electricals ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request Sandeep of Sai Electricals, please report here in commentary box immediately. 30 for the loss of 3 wickets. Ashwin back to his bowling mark. From the far end, right arm over the wicket, pass umpire Roland Pinto. Iqbal is a striker. Again, a slower one and little bit slower, much slower in that occasion, so that Junaid Iqbal couldn't manage to get that one from his bat. Excellent change of line and reducing the pace as well from that delivery by Ashwin. So far he's looking pretty good in this over. Right arm over the wicket, he bows. This time went for the reverse sweep, not really getting that timing behind the reverse stroke, because Ashwin cleverly changing his line, bowling around his legs, so that Iqbal couldn't manage to get the reverse stroke easily. So that just a single for him. 31 for the loss of 3 wickets. Over number 5 in progress. Again from the far end, Ashwin. Right arm over the wicket, he bows. This time he lofted high. Will it go into get the distance? Yes, he does. Just going over that deep long off fielder, and ball is just going out of the park for a 6. Look at that one on replay. Lofted right from the middle of the bat, but ball is bent very high. Look at, you can see that the camera work here, absolutely fantastic. The cameraman still the ball is landing, he is just following that ball. Absolutely, it's a good work. The cameraman in the straight angle, I think, is done a great job to pick that one beautifully. So 37 for the loss of 3 wickets. Again, he tried to repeat that one. This time right in the gap. One bounce over the rope for 4 runs. So Junaid started up, open up in this last 2 delivery of the over number 5. Much required. 10 runs which came from 2 deliveries of that over. So because of that productive over, they're rightly back in this game. Look at that one on the second stroke. I think it's really making a little bit room to play the shot. Inside out. Beautifully got driven. And placement is exquisite in that occasion. Between long off and extra cover. 1 bounce over the row for 4 runs. And Junaid has played a very good cricket here. The last 2 deliveries are much required runs coming here for Rooftech Warriors. Rooftech Kadipala. 41 for the loss of 3 wicket now.
So quickly realizing Rooftech Katipala, the batter, seeing that the nature of the ball which is used for this particular cricket tournament is very hard in the nature, so that any score less than 50 is going to be very difficult to defend. So that I think survival is very difficult for the bowlers rather than the batters are really dominating. Now Unikrishnan is in action, very experienced campaigner. Right, you can bowl him, clean him up around his legs. That was the beauty of the delivery. The quicker one in the negation there from Unikrishnan, so experienced campaigner, one who represent Gori young boys for so many years. Look at that one, the kind of delivery which is off cutter, and the batsman this time Iqbal shuffled across the line of delivery, exposing his leg stump, and that was a beautiful off cutter. Not only bowled a half cutter, but it's a quick off cutter. Look at that, using his arm, just using his arm, and the ball is just moving from the good leg spot, jagging back into the batter, and the leg stump, hitting his leg stump. So 41 for the loss of a 4 wicket. Taufik is the new batter, is just came into middle. So Unikrishnan in operation from the commentary box, and last over of the innings of Rooftech Katipala. Taufik, 5 deliveries remaining. Unikrishnan, right over the get, beautifully bowled. Once again a flighted one, and once again the line is so impressive in the negation there from Unikrishnan. This time he didn't got that much of turn, and that's why batter completely missed out. He thought that it might be off cutter from Unikrishnan, but we can see that ball is not really getting that much of turn. The straighter one and quicker one. The wicketkeeper behind the stump just uprooted his stumps, asking scholar umpire Roland Pinto for that result, but no damage done. So 41 for the loss of 4 wicket. Uni away from us, balls big wide on 1+1. It's going to be disaster, and 2 more to the total now. These all runs are really going to be a bonus for Rooftech Katipala. Not only Unikrishnan have to bowl on extra delivery, but he considered 2 extra valuable runs for the opposition. 43 for the loss of 4 wicket. Discipline is so important in cricket. And from the commentary box, and again, this time he lofted straight down the ground, very straight as an arrow, and he got the distance. 6 signal by umpire. Just looking at the reaction of Unikrishnan, I think there the fielder in the deep long one having not that much of good effort to take the catch. Look at that one in replay. Very difficult to get the angle right, and we can see, yes it is. Maybe the fielder little bit late to react to come across to take the catch. That's why Unikrishnan is not impressed with the effort from the fielder. But that was a really good stroke, I must say. Straight down the gun, very straight as an arrow. When you're playing just over the head of the bowler, very difficult for the fielder, for the deep long fielder to take the catch. Wide outside run of off stump, frustration and the pressure straight away. That's all happening when batters hitting some 6. The bowlers little bit started to feel the pressure. 50 comes up here for Rooftech Katipala. 50 for the loss of 4 wicket. Drives that one down to short cover point ridge, deep cover point ridge, and running hard, looking for the second. They made it quite easily. Runs are coming very freely in the last 2 overs for Rooftech. Definitely they're getting some acceleration in the 2 overs, especially last 2 delivery of the previous over. And in this particular over, they got 1 big 6 and some extras as well. Altogether, Rooftech Katipala getting some runs, what they wanted in this particular over. Unikrishnan bowls and he drives that one to a short cover, deep cover point, and chance of run out, back and throw. And I think umpire asking for run out, but in the naked eye, might be the batsman is in trouble. He is in trouble. I think by naked you can see that back and throw, I think might be he was a short of a crease. But we have to wait umpire's third umpire decision. Roland Pinto asking for the third umpire, refer for the third umpire decision. Because whenever the directives comes into play, the umpire always asking for the third umpire to get some result. But here is a batsman, seeing this body language, he is already walking back to pavilion. He's almost 90% is completed his journey towards the pavilion, and he's just waiting for the signal. Well, will it go into a red signal or a green signal?
But bowler, the wicketkeeper is very confident. Here umpire Sriraj examining, and technicians giving all the angles which is better to get the good result here. We can see it's out absolutely for 3-4 yards. I think is a well shot of the crease. The very well shot of the crease. So wicket number 4 is back in the pavilion. 52 for the loss of 4 wicket. That's why the batters, himself, he is short of his crease. That's why he's walking towards the pavilion. So new batters walking towards the middle. Nice. Last delivery of their innings. This time went for the big shot, got outside edge of the bat. Short third man fielder fields the ball. And that's the end of 6 overs quota. And Rooftech, they got the runs what they really wanted in this last 2 overs. They're really back into this game with some big innings. The expensive over, the last over and before last over is really expensive. But I think nothing much worry about for Foodland Osangadi. They got a very good batting department. Some very good striker of the ball. Striker of the ball is there in the team of Foodland Osangadi. Just like we are talking about Unni Krishnan, we are talking about Dawood, and we are talking about Pritham. All we can see there's some good face. The very good striker of the ball there in. So Rajeshwar, the umpire of qualified umpire, KCA, just came here and witnessing the first innings of Rooftech. Thank you very much, sir. So target here 55, and for Foodland Osangadi to win this match against Rooftech Katipala. Wait and see how well Rooftech will going to defend this total, and wait and see how well Foodland Osangadi will going to chase this big total in stipulated 6 overs. And before the innings will going to start, once again I would like to welcome Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi, after the short break. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो the target 55, the target for Foodland Hosangadi, set by Rooftech Katipalla. At batted first, they managed to score 54 runs in the stipulated 6 overs, and the target for Foodland Hosangadi is 55, and as far as the required run rate is concerned, just over 9 runs per over. They have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 9.17 runs per over, the required run rate for them with the help of 10 wickets. And let's see, can they reach the target or not. And their innings now going to start.
Right, the inning starts for फुटलैंड होसंगडी 55 द टारगेट फॉर देम और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का तो देखते हैं यहाँ पर उनके सलामी बल्लेबाज क्या करते हैं और दोनों आरंभिक बल्लेबाज अंसार और प्रीतू इस वक्त क्रीज पर मौजूद जबकि सफान गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा इस बीच सफान ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और वाइड की इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है फुटलैंड होसंगडी के लिए एक रन बिना से नुकसान के और एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त मौजूद कोई पॉइंट नहीं कवर पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद और शॉर्ट फाइन लेग कहना पड़ेगा 20 गज के दायरे के अंदर 7 खिलाड़ी तैनात दाहिना तो ऊपर द विकेट सफवान की गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज गेंद निकल चुके इनटू द गैप लंबा दौड़ लगाते हुए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए ऐसा कहना पड़ेगा लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी और इस गेंद को खूबसूरती के साथ विद ट्विस्टेड बैट खेला था देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त खेला था विद ट्विस्टेड बैट टॉप एज पर गेंद टकराई लेकिन गेंद फाइन निकल चुकी है इस वक्त कोई गली क्षेत्र वहां पर कोई गली पर फील्डर मौजूद नहीं और गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर जबकि सिर्फ एक गेंद उनकी पारी की फेंकी जा चुकी है अंसार चौका लगाने वाले बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त विद ट्विस्टेड बैट खेल दिया था बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए सफान अंसार सामना करने के लिए इस वक्त तैयार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए और इस वक्त अब थोड़ा सा स्क्वायर गली और शॉर्ट थर्ड मैन के दरमियान एक फील्डर को तैनात किया गया है और सफान दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अंसार के लिए अगली गेंद ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को जाने दिया बड़ी मुश्किल के साथ शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने गेंद को रोका काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आई थी और अंतिम क्षण में 1 रन का इजाफा सिर्फ 22 के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है और 22 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 6 रन गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही तरीके से पर शून्य के इतने से सही गेंद घोषित किया और सफान इस बार गेंदबाजी करेंगे प्रीतू के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी गेंद अंतिम क्षण में पैरों पर टकराए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद इतनी तेज रफ्तार के साथ अंदर की ओर आई कि बल्लेबाज को इस गेंद पर कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को खेलना चाहते हैं देखिए किस तरीके से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और इस मौके पर बाल बचते हुए बल्लेबाज बेहतरीन गेंदबाज सफान और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद जाते हुए लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद होने के बावजूद गेंद को वो रोकने में असफल और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए स्विंग किया था ऑफ साइड पर आई थी गेंद देखिए किस तरीके से लगभग मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद आई थी गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया गेंद की टर्न को भापते हुए मिड विकेट पर और जीतोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल फील्डर और गेंद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर यहां पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 10 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहां पर प्रगति पर तो यहां पर स्ट्रेट अवे हमारे सामने जो टीवी मॉनिटर इस वक्त लगाया गया है कमेंटेटर बॉक्स के सामने और यहाँ पर हमें क्लियर पिक्चर इस वक्त मिलता है कि क्या हो रहा है मैदान पर तो यहाँ पर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई लेकिन कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी तो रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और इस ओवर में अगली गेंद लेकर सफान इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया लॉन्ग ऑन की दिशा में और गेंद इस वक्त रोकने में असफल फील्डर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद 4 रनों के लिए तो 3 चौके यहां पर लग चुके हैं इस पहले ओवर में और ये जो कि पारी की ओवर की अंतिम गेंद पर जो चौका लगा था देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त पुल किया था और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त गेंद 4 रनों के लिए तो 55 रन
बनाने थे जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी। अब 14 रन उनके पारी में बन चुके हैं और मैं समझता हूँ सतीश यहाँ पर 55 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कर चुका है फुटलैंड्स होसंगडी। Exactly, Gopi. I know the two batters. Ansar is representing KFC Kodikal. Is a very experienced, and Preetu and the last tournament is represented SNNT, and he's a very good striker of the ball. Even in the tournament which is played in Kuluru cricket ground, I think they become the runners of. In that match also, the Preetu is played a magnificent innings for his team. And they're the two dangerous batsmen. That's why I'm mentioning Gopi. Nothing much worried about that 54 runs because they got fantastic batting department. That's why the bowlers of Katipala have to bowl really very well. And a very good start. And two magnificent strokes that came from the bat of Preetu. And one which is improvisation coming from the blade of Ansar. Altogether, I think Gopi, it's a positive start. And this over going to be very crucial here for Rooftop. They have to restrict the batsmen from the runs of their opposition. बिल्कुल सतीश, और जहां तक इन दोनों बल्लेबाजों के काबिलियत के बारे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। अंसार जो कि केएफसी कोडिकल की ओर से खेला करते हैं, इस श्रृंखला में वो यहाँ पर होसंगडी का प्रतिनिधित्व करते हुए। और जहां तक प्रीतु का सवाल है, जैसे कि आपने कहा कुल्लूर में जो श्रृंखला खेली गई थी जैक्स ट्रॉफी 2022 है, उसमें उन्होंने एसएनएनसी कासरगोड की ओर से खेलते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर वो आगे बढ़ाते नजर आते हुए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा और गेंद इस वक्त पहुंची सिली मिड ऑफ पर, जब वहां पर गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था और यहाँ पर रनआउट आसानी के साथ होता हुआ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, दौड़ पड़े, अंतिम क्षण में गेंदबाज पहुंचे, गेंद को उन्होंने आसानी के साथ थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर और यहाँ पर आसान सा रनआउट स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ। तो पहला विकेट गिर चुका है, आउट होने वाले बल्लेबाज अंसार और कुल मिलाकर 14 रनों के ऊपर पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर फॉर फुटलैंड्स होसंगडी। और जहां तक सवाल है इस वक्त रूफटेक काटीपल्ला का, तो मैं समझता हूं यहाँ पर उन्हें कुछ चंद कसे हुए ओवर्स फेंकने होंगे, चंद विकेट यहाँ पर उखाड़ने होंगे इस मैच में कमबैक करने के लिए, क्योंकि पहले ओवर में उनके गेंदबाज ने 14 रन प्रदान किए हैं और यहाँ पर आने वाले ओवर्स में अगर किफायती गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाज करते हैं तो निस्संदेह रूफटेक का इस मैच में वापस आ सकता है। फिलहाल इक्वेशन स्टैंड्स ऑन द सेम, 35 balls now remaining and in fact 29 balls now remaining and 41 more runs now they have to score for victory। तो सलमान इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चिपकी, गेंद हवे में, कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में और फर्स्ट बॉल डिसमिसल फॉर उन्नी कृष्णन। और निस्संदेह मैं कहूंगा सतीश, उन्नी कृष्णन का विकेट का पतन यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है फुटलैंड होसंगडी के लिए, क्योंकि उन्नी कृष्णन की उपस्थिति इस वक्त उन्हें बेहद जरूरी थी। उन्नी कृष्णन एक ऐसे बल्लेबाज है जो लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस कैच को लपका गया था, नॉट क्वाइट मिड विकेट इन द लास्ट मोमेंट, और उनका विकेट का पतन निस्संदेह यहाँ पर परेशानियों को और बढ़ा चुका है फुटलैंड होसंगडी के ऊपर। Absolutely, Gopi, and you have to give credit to the bowler, Salman. The very young talented bowler for the side of Rooftech. In the previous tournament also, he's really bowled brilliantly, especially in the coming in the power play overs. I think it's not a easy job, Gopi. And at the same time, bowling against players like Unni Krishnan, and you have to get some kind of confidence. And he bowled confidently because of his ball confidently, he got a result for that. Of course, he's not really able to middle that one properly. But I think the Unni Krishnan is definitely going to be a big drawback here for Rooftech. But still, for Hossangadi, but still they got a good batting department in the side, and wait and see how well the new batters will go into bat. Now this man, Shamshuddin, is a very good left-handed batsman. He's not just like a Preetu or not just like Unni Krishnan who are dealing with the big shots straight away, but he's the kind of batter who is just building his innings by rotating the cycle in here and then, but he's got a potential of hitting some big shots as well in the middle, and wait and see how these two batters will go into build a partnership. बिल्कुल सतीश, उन्नी कृष्णन का विकेट गिरने के बाद अब शमशीद का आगमन यहाँ पर हो चुका है और जैसा कि आपने फरमाया सतीश कि शमशीद भी एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाता है और यहाँ पर उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी है होसंगडी को अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो लोगों पर। और इस बार इस कैच को लपकने में सफल शमशीद की भी पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर
मैं समझता हूँ गेंद को उछालना चाहता, इनफील्ड लॉन्ग ऑन न क्लियर करना चाहता, लॉन्ग ऑफ क्लियर करना चाहता, लेकिन गेंद को उछाला जरूर, लेकिन देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। इस वक्त स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं था और बेहतर कैच यहाँ पर अपने आगे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें उन्होंने गड़ाए रखी है और अंतिम क्षण में इस कैच को वो लपकने में सफल हो। तो शमशीद का विकेट भी यहां पर गिर चुका है। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक वक्त स्कोर था 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 14 रन बिना किसी नुकसान के एक वक्त स्कोर था। अब 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर और निस्संदेह 3 लगातार विकेट यहां पर गिरने की वजह से अंतिम 4 गेंदों में जो 3 विकेटें गिर चुके, वो 3 विकेटें गिरने की वजह से इस वक्त तख्ता, इस वक्त रूफ टेक का यहां पर पहली बार भारी लगता हुआ। क्यों सतीश? Absolutely, Gobi. And look at that consistency in the line and length, which is bowled by Salman. This is a really impressive to see. It's not easy to bowl. Each and every ball is going to be need to bowl very good line. And at the same time, Gobi, you have to change his line because left-handed batsman Samshid came into middle. Immediately changing the line, changing his angle, is coming round the wicket. And look at it, he's not really given width for the batsman. That's why he didn't got that much of elevation. He's looking for excellent bowling, and he's on hat-trick now. बिल्कुल सतीश, कुछ ज्यादा विड्थ उन्होंने प्रदान नहीं किया था और गेंद को उछालने में चूके थे, प्लेसमेंट गलत था, विकेट उनका गिर चुका है। हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, इस बार गेंद लगते लगते बच चुकी है स्टंप्सों पर और गेंदबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। अपील इस वक्त जारी है। काफी आक्रामक स्ट्रोक इस वक्त लगाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद इस वक्त मैं समझता हूँ पिछले गेंदों के मुकाबले कुछ हद तक धीमी गेंद यहां पर फेंकी थी गेंदबाज ने और वाइड स्विंग इस गेंद पर करना चाहता चूके और इस गेंद पर वो बाल बाल बचते हुए भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन ओवर सलमान इस वक्त उनका प्रगति पर और सलमान निस्संदेह प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो यहां पर गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त शॉर्ट टर्न की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। निस्संदेह यहां पर इस वक्त फुटलैंड होसंगडी को चाहिए एक पार्टनरशिप साझेदारी जो उन्हें यहां पर उनको इस संकटमय परिस्थितियों से बाहर रन निकाल सके। और जहां तक रूफ टेक का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटें अपनी पकड़ को और इस मैच में मजबूत करने के लिए। और इस बीच सलमान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट है। ये गेंद इस बार चिपकिया है लॉन्ग पर और इस बार गेंद क्लियर कर चुके सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। निस्संदेह एक्सक्विजिट टाइमिंग के साथ गेंद को इस वक्त उछाला था और देखिए कुछ ज्यादा जोर भी नहीं लगाया था इस स्ट्रोक में, एफर्टलेस गेंद को उछाला, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑफ फेंस फॉर 6 रन्स। मंजू के बल्ले से छक्का लग चुका है और यह छक्का मैं समझता हूं कुछ हद तक दबाव को इस वक्त कम कर चुका है फुटलैंड होसंगडी के ऊपर से। इस ओवर में 7 रन बने। अगर उस अंतिम गेंद को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो इस ओवर में सलमान ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। फिलहाल 7 रन सिर्फ उन्होंने प्रदान किए और इस ओवर में 2 विकेटें भी वो प्राप्त कर चुके हैं और रनआउट के रूप में 1 विकेट भी गिर चुका है। 3 ओवर की समाप्ति 21 रन 2 ओवर की समाप्ति 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक लक्ष्य का सवाल है, इस वक्त टारगेट है उनके लिए 55 द टारगेट फॉर देम एंड 21 रन स्कोर, 34 मोर रन्स नाउ दे हैव टू। कप्तान के विश्वास को किस तरह इस ओवर में बरकरार रख पाते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और सामना करने के लिए प्रीतू यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सफान की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पहले गेंद इस बार गेट रीड ऑफ हिम द लास्ट मोमेंट, परफेक्ट इनकटेड डिलीवरी और ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि बल्ले और गेंद के बीच में लंबा अंतर और यहां पर गेंद सीधे स्टंप्सों पर जा टकराए। हैव अ लुक एट दिस, एब्सोल्युटली मच स्ट्रेट लाइन, जस्ट डिवेटिंग अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद को आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और यहां पर प्रीतू का विकेट गिर चुका है। अब मैं कहूंगा दबाव काफी हद तक बढ़ चुका है यहां पर होसंगडी के ऊपर। देखिए किस तरीके से यहां पर विकेट प्राप्त किया था और बेशकीमती विकेट प्रीतू का यहां पर गिर चुका है। हालांकि 3 विकेट जब गिरे थे तब प्रीतू की उपस्थिति यहां पर बेहद जरूरी थी, लेकिन यहां पर जो दबाव उनके ऊपर क्रिएट हो चुका था 3 विकेट गिरने के बाद, उस दबाव को कुछ हद तक कम करना चाहा, हटाना चाहा, एक करारा स्ट्रोक लगाना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में इस गेंद पर वो स्ट्रोक खेल में चूके और गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुके। अब
4 विकेट 21 रन, 34 रन चाहिए, 23 गेंदे बाकी, 34 टू गेट इन रिमेनिंग 23 बॉल्स। और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है अश्वित, और अश्वित भी अच्छे खासे बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। एक बेहतर पारी खेलने की वो क्षमता यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर उनको ज़रूरत है इस वक्त एक बेहतर साझेदारी की, और देखना यह है कि वो इस वक्त मंजू के साथ मिलकर एक बेहतर साझेदारी निभा पाते हैं नहीं। और जहाँ तक रूफ टेक का सवाल है, चंद और विकेटें उन्हें पूरी तरह इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने पर मजबूर कर सकते हैं। और सफान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तीसरी ओवर की दूसरी गेंद उनकी पारी का इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। सलमान दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। सफान है, इस बार गेंद को मिसफील्ड किया था, पॉइंट पर 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। Still a struggling time continuing here for the batsmen of Footland Hossangadi. They badly required a partnership at this situation. और गेंदबाज सफान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद निकल चुकी है फाइन। इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में फील्डर गेंद का पीछा करते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर, और यहाँ पर सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद पैरों पर टकरा करने के लिए थी फाइन शॉट थर्ड मैन फील्डर की बाईं ओर से, और जब तक गेंद को शॉर्ट फाइन लेग फील्डर दौड़ते हुए फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 21 गेंदे बाकी, 32 रन यहाँ पर हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इक्वेशन स्टैंड्स फॉर फुटलैंड होसंगडी, और सफान एक बार फिर से तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, और गेंद काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। हर गेंद पर कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है, और यहाँ पर सफान एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 6 से 7 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, 1 more विकेट फॉर सफान, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज को इस गेंद पर कुछ करने का मौका ही प्रदान नहीं किया गेंदबाज ने। और देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उन्होंने फेंकी थी, क्रीज के कोने से गेंद फेंकी थी, और एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा क्विकर, परफेक्ट ऑफ कटर, और इस बार विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट नंबर 5। और सफान इस वक्त जो उम्मीद उनके कप्तान ने रखी थी, हालांकि 14 रन पहले ओवर में उन्होंने प्रदान जरूर किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन पर उम्मीद आशा रखते हुए उन्हें दूसरा ओवर उनके कप्तान ने जो सफान को सौंपा था, उन उम्मीदों आशाओं को इस वक्त साकार करते हुए इस ओवर में वो 2 विकेटें प्राप्त कर चुके हैं, और अपनी टीम को और मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर चुके हैं। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। और इस मौके पर नए बल्लेबाज का आगमन, दाऊद इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और देखना यह है कि वो इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। हालांकि 5 विकेट गिर चुके हैं, नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज सफान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बीच गेंद को स्वीप करना चाहा, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी पिछले गेंदों के मुकाबले, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 24 द स्कोर बोर्ड स्टेज एट in the over number 3 in progress. Still the equal battle is now continuing here. So the target is 55. That means 31 more runs now they have to score for victory in remaining 90 deliveries. सफान की गेंद, ये गेंद हल्के से पुश किया गेंद को, गेंद हवे में जरूर, लेकिन कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकलती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और सफलतम यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण करते हुए। So couple of runs to end the over, और 18 गेंदे बाकी, 29 रन चाहिए, 26 for 5 after 3 overs, 29 to get in remaining 3 overs. That means in 18 balls with the asking run rate of exactly 9.66 runs per over. Have to score for Footlands होसंगडी, और इससे पहले कि चौथा ओवर पर वो सतीश आप आइए माइक्रोफोन पर, और 29 रन 18 गेंदे, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है, और मैं समझता हूँ यहाँ पर
करारे स्ट्रोक्स इस वक्त लगाएंगे, चंद करारे स्ट्रोक्स चौके या छक्के के रूप में अगर परिवर्तित होते हैं, 2 या 3 स्ट्रोक्स चौके या छक्के के रूप में अगर परिवर्तित होते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर फुटलैंड्स होसंगड़ी इस मैच में वापस आ सकता है। और मैं समझता हूँ पहले ओवर में 14 रन प्रदान करने के बाद यहाँ पर एक बेहतरीन वापसी की है रूफटेक काटीपल्ला के गेंदबाजों ने अगले 2 ओवर में। So thank you very much, Gopi. So only first over which is belongs to Foodland Osangade. Otherwise, you're right, Gopi. The last 2 overs is really the good job did by especially Salman, who really dismantling the batting department with some excellent line and length. But still, Gopi, the match is not fully out of the hands of Sangadi, because 29 to get from 18 balls. Still, they got 5 wickets in hand, and Manju already sent one strong message for the opposition after hitting 1-6 that he is capable of hitting some big shots as well. If he gets some support from other end, just like the new batsman just came into middle as Dawood, usually he's opened the innings for his team when he was representing his home team. He's the opener batter. So he's coming in number 7 batter. That shows the batting depthness of Osangadi. So he cannot underestimate, even though Rooftech, they are looking in a driver's seat of winning this match, but you cannot underestimate the batting department of Osangade, Foodland Osangade. Wait to see how well these 2 batters. Dawood is a very experienced, Manju is a very young, talented cricketer for the side, and wait and see how well they're going to get 29 runs from 18 balls. From the far end, right above the wicket balls. This time Manju went for the reverse sweep, half-hearted shout for the leg before wicket. Umpire suddenly he knows that ball is missing the wicket. No question of leg before wicket. Now 1 dotted delivery. So each and every dot ball, and the asking run rate is really creeping up here for Foodland Osangadi. Nice. What a shot! This is the monumental, and this is one of the biggest sixers of this tournament. As far as the distance is concerned, quite unfortunate, ball is hitting the branches of a tree. Otherwise, that ball will going to travel many miles. Look at that one. Look at that stroke. Absolutely. This is a really, it is a big 6. I must say, one of the biggest 6 of the tournament. This time he won for one more. This time high up in there. Fielder is underneath it. Manju back on strike. This is the only one problem for the batters. So many batsmen doing the same mistake. After hitting 1-6, they desperately wanted to get another one. This is the one area the batters have to be little better. Need to control their emotions after getting that 6. The aggressive frame of mind, and that's costing a big wicket here of Manju. And straight away Nice is really back into this game. The good comeback by the bowler. And coming back, that 6, what a 6 that was. Absolutely one of the biggest 6 I seen in this cricket ground. Even though he's not that much of tall, not that much of a well-built personality, Manju. But just like in a great saying in English, don't judge the book with this cover. And just like that Manju, the way he hit the ball, absolutely, it was a terrific strike. 32 for the loss of 6 wickets. A new batter, Chami came into bat here. This time Dawood went for the reverse sweep, not really getting that what he wanted to be. The placement, as we were talking about, he wanted to play that one down to deep backward point region, and he picked up a single. Next match, Fast Tech Warriors takes on YFC Bajal, so that I request both the teams' captain please complete the tossing ceremony. 22 required from 14 balls. Nice balls. This time outside the line of off time, just go over the top, went over the top towards the deep backward point region before the fielder from short cover point region, backward point region, to run across to his behind and collects the ball. Ample time for the batter to collect a couple of runs. Sanchami, he got 2 runs here, and with that 2 runs, scoreboard now moves on to 35 for the loss of 6 wicket. 20 required, 13 balls remaining. Some drives that done beautifully, but lack of placement, straight to the hands of short extra cover. The captain fields the ball, and over number 5 completed, 4 completed in fact, after completion of 4 overs chasing 55 to win this match, and looks like struggle time continues here for Foodland Osangadi. 35 for the loss of 6 wicket. Now 2 overs remaining, 12 balls remaining,
20 runs required for the victory. Match is still, it's evenly balanced. The toss is completed for the next match. Fast Track Warriors won the toss against YFC Bajal. They elected to field first. So that I request both the teams, please get ready. The match will going to start immediately after this match. So Salman to continue. This is really a crucial over for Foodland Osangadi. Even it's crucial for Rooftech Kadipala, because they know exactly if in this over the Rooftech manages to control, then they can little bit favorite of winning this match. At the same time, Foodland Osangadi, if they're able to get at least 10 to 12 runs in this particular over, then match is definitely going to be widely open for both the teams. And wait and see how Dawood will going to contribute from the bat. Salman away from us. Right above the wicket, balls swinging his bat a little bit shuffled across the line of the delivery. I think it's a bad miss. But Salman is bowled down the leg stump. Maybe he's having some extra pace so that he couldn't the ball batter couldn't manage to get that one from this bat. But it's a bad miss. 11 ball remaining, 20 run required for the victory. Salman. Right above the wicket, balls this time swinging that one, but protection is given in the deep square-like region, so that batter have to settle for the single. With that single, scoreboard now 36 now for the loss of 6 wicket. 19 required, 10 balls remaining. And quickly the wicket keeper just coming down to Salman. Izaz is one of the experienced campaigner. You know exactly the kind of line need to be bowled in this very crucial over. So just giving some tips to Salman. A very young, talented the bowler, a very matured bowler for Rooftech. This time lofted high up in their fielder there in the deep cow point. He couldn't manage to reach there, but here the batters completing a couple of runs quite easily. And I think the fielder has tried his level best. Maybe the ball is just lost his speed. After that, the direction of the wind, you can see that maybe that ball is played against the direction of the wind. That's why the fielder in the cow point region not quite able to reach that catch, in fact, and ball just falling short of the fielder. They got a couple of runs here. Dawood maybe wanted to change his the bat. He's not happy with the bat. Maybe after seeing that stroke which is played in the previous over, couldn't manage to connect that one very well. Now still 17 more runs required, 9 balls remaining. The match is really looks to be very interesting. It's going to be anybody's game. Not yet over. So very high scoring game is going on here. Totally it's a very good game of cricket. I think the followers of Foodland Osangadi, maybe they're watching this live telecast in their mobile through YouTube channel King Sports Mangalore. The day by day the number of viewers is really increasing. Even the subscribers of this King Sports really increasing. Once again I request the cricket lovers, please subscribe this King Sports Mangalore and please support. So 17 ball remaining, 9 runs required for the victory. Right over the wicket, Salman bows. Ball was back drive, beautifully driven down to long off, but protection there in the deep, so that have to settle for the single. Powerful driven back there by the batter Chami in the relegation. But unfortunately we'll get single for that. Now 16 to get from 8 balls. That means each and every ball required 2 runs for Foodland Osangadi. Now Salman, right over the wicket, looking for the improvisation. Good collection behind the stump by Izaz. The bad miss there for Dawood. Not a bad idea to play the reverse because he wanted to just get the little bit bat into that. He can get the boundary for that. And unfortunately just missed the ball from his bat. And a very important dotted delivery there by Salman. 7 ball, 8 runs required for the victory. Swinging his bat towards the deep backer score-like boundary. No one knows where the ball is went. This is absolutely stroke, which is just stroke came from the cannon. Oh, look at that strokes that one from Dawood. I think how well he got that one. Look at the bat speed. Look at the ball where we went. Even the fielder is a deep back square leg. One fielder is a mid wicket, just a spectator. Because ball is just really traveling in such a speed that
Even very difficult for the cameraman to catch that ball. Absolutely fantastic struck there from Dawood. So with that boundary, the match is now widely open. 12 to get from last 6 balls. Dawood has got a boundary in the last delivery of the over number 5. That's why I mentioned about that the batting department of Footland. Even though they lost the wicket 6, but they got some excellent all-rounders in the side. So Dawood, I already mentioned, usually is a opener batsman, open the innings for his team when he is playing in the home condition. Whenever the tournament is played in a Manamguji cricket ground, the cricket stadium, which is just like UCG cricket ground, we have Manamguji cricket ground, Golden Hazi cricket ground in Manamguji, Abdul Qadir Abdul Hazi cricket ground in Manamguji, which is one of the most popular cricket ground in Uppala. So in this particular cricket, there are a lot of big tournaments organized in that particular stadium. And I am observing a lot of time Dawood is single-handedly batting for his team whenever his team is required some responsible innings. He played so many innings, and now also he's taking his responsibility in his shoulder, being the experienced campaigner for the side. Now job is not yet over. 12 to get from 6 balls. It's going to be a more interesting game of cricket now. Qadar is in operation. 12 required for the victory, Footlands. If the match is tight, then the fall of wickets, the number of wickets comes into play. And seeing that the fall of wickets, the 5 wickets, which is Roof Tech is lost, and here they lost 6 wickets. That means desperately required 12 runs. Oh, starts with a beautiful delivery. Change of pace is really working out, and Qadar, he picked up a valuable wicket of Chami. Now 5 balls, 12 runs required for the victory. We're just looking for the big shot. You can see that was a clever piece of bowling there by Qadar. This is a really needed sometime. The presence of mind, using your mind is so important in a situation like this. When the ball is nicely coming to the bat, if you bowl a quicker one, I think the batters will go to enjoy. When you bowl a slower one, then the batter have to wait for the ball, and that's what he did in the previous delivery. He's bowled a slower one, and he got the result for that. Warm welcome to our Kannada commentator, Mr. Ishad, for this cricket tournament. The very good Kannada commentator, state language commentator, just enjoying the game of cricket here in a commentary box. Now 12 to get from 5 balls. Suraj is a new batsman. Came into middle as a number 9 batsman for the side. Facing next delivery from Qadar. 12 to get from 5 balls. This time they wanted a single. But umpire not interested to give the wide. But batsman Suraj misjudging. Just thinking about that might be a wide. That's why he couldn't manage to run for that. Dawood is not interested. Not impressed with the batters because he desperately wanted to came into strikers end. Now 4 ball, 12 runs required for the victory. It's going to be a fantastic last over. 2 deliveries. He managed to contain the batters. Qadar from the far end. Left arm. Over the wicket he bowls. This time he drives it and powerfully, but protection there in the deep long on just a single. And Qadar will not going to bother about the single. He knew exactly how to restrict the big shots. Now, Dawood is famously known as the Asim Amla of South Africa. And wait and see how well he will going to justify that name. Because 11 to get from 3 balls. This delivery is, I think, going to be the very crucial year for Footland or Sangadi. Have to get some big strokes if you wanted to win this match. 3 ball 11 required from the far end. Qadar with a short run up. Left arm round the wicket. This time Dawood went for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Just a single now. 10 required from 2 balls. Suraj back on strike. If Qadar ball, 1 good delivery is quite enough for Roof Tech Katipala to qualify.
But one big shot which is badly required for Foodland Osangari to win this match. Decider delivery. If you wanted to take this match into the final delivery of this innings, in this particular delivery, Suraj have to throw his bat, have to talk with his bat, have to get some big stroke, tend to get from 2 balls, at least the boundary required in this delivery. Kadar from the far end. Left arm. Round the wicket he bows. Went for the big shot. That's it. He beats the bat. Fantastic last over there from Kadar. Now looks like unless bowler making no mistake, bowling no balls and extra wide balls, I think just an formalities left in this game because 10 to get from 1 ball. Even 6 will not going to help Foodland Osangadi to win this match. So last delivery Kadar balls from the far end. Suraj went for the big shot, mistimed it. That's it. Comprehensive victory at last. It's a 9 runs victory for Rooftop Katipala defeating Foodland Osangadi, and they qualify for the second round of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. Disappointment end here for Osangadi, Foodland Osangadi, because one stage looks like they are very much in the way of winning this match, but the wickets are tumbling. And we'll take a commercial break here, and after that commercial break, we are back in this game. And before that, we are going to the presentation of Man of the Match. So time to announce a man of the match. Man of the match which goes to the man who scored valuable runs in the slog overs, got a 24 valuable runs. That is none other than Zunaid of Rooftech Katipala, who judged as a man of the match for his quick fired 24 runs. So that I request Zunaid of Rooftech, please come and collect your man of the match award. Zunaid. ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಡಿಪಲ ತಂಡದ ಜುನೇದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಟ್ಯಾಟೂಸ್ ಇವರು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ರೂಫ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಡಿಪಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜುನೇದ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
So time to announce a man of the match award. Now Irshad, our Kannada commentator, will going to present a man of the match award with a t-shirt, a very attractive t-shirt for Zunaid for his wonderful innings of 24 valuable runs in a difficult condition. He came into bat and scored a valuable runs. Congratulations, Zunaid, for his wonderful innings. Thank you very much, Irshad, our Kannada commentator. Thank you. So match will going to start here. Fast Tech Warriors versus YFC Bajal. And the Fast Tech Warriors, I think, Fast Tech Warriors won the toss. They elected to field first. And before this match will go into commence, I would like to invite our guest commentator, Mr. Ishad. Will go into share the mic here with our state language, sweet language, Kannada. Please welcome Ishad. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ. ಈ ದಿನದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ YFC ಬಜಾಲ್. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ದಿನ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಟ್ಟದ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮುಂದೆ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಎನ್ನುವಂತ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೀಸಿರವರ ಜೋಡಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೀರ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 40 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊಬೀರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ಇದು ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮೊಬೀರ್. ಅಸ್ಗರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೀಶ್ ರವರ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಜೋಡಿ. ಮುಬೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಬೀರ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಇದು ಔಟ್ ಆಗುವ ನಿಶಾನೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ YFC ಬಜಾಲ್. ಆರಂಭದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ತನ್ಕೂಟದ ಮೂರನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಬೀರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಬೀರ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ಫಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1-2ರ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಶರವೇಗವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. YFC ಬಜಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಫಾಸ್ಟೇಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಅದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಬೀರ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ YFC ಬಜಾಲ್. ತನ್ಕೂಟದ ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ಅನುಭವದ ತಂಡಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ YFC ಬಜಾಲ್ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದೋಡೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾನಗಳು ಖಂಡಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪ್ರತಿ ಹಾದು ಹೋದುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲದೆ ಪರ ಊರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಸರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಪ್ರಥಮಾರ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಸ್ಲೀಂ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಟಗಾರರು ಅಸ್ಗರ್ ಆರೀಸ್ ರವರ ಜೋಡಿ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 7, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 11ರಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅದ್ದೂರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಇದು 2ನೇ ದಿನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ದಿನ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಖಂಡಿತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಆ ದಿನ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೈದಾನದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ. ತಸ್ಲೀಂ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನೇರ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು YFC ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ಸಾಧರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಸ್ಲೀಂ 3ನೇ ಬಾರಿ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಡೆತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1+2 ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1.3 ಅರ್ಥಾತ್ 9 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಓವರಿನ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಫಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯತ್ತ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಾಗ ಅದು 1 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 10 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓಟ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ YFC ಬಜಾಲ್. ಓವರಿನ 2 ದಾಳಿ ಬಾಕಿ. ತಸ್ಲೀಂ 5ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ದಾಳಿಗಂತೂ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದ ಹುದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 1 ಹುದ್ದರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬುದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆದರೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾಫ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅನುಭವದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 1 more in left. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನತ್ತ ಧಾವಿಸುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 9 ಓಟ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 4.5 ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ತಂಡವಂತೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಾಗ ಆ 3ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಕರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯನ್ನ ಬೇಡ, ದೇವರನ್ನೊಲಿಸಿದಾತನೇ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ತಂಡವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ತಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನ ಕರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯತ್ತ ದಾಟುವಾಗ ಅದು 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ ಆರೀಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರೀಸ್ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರನ್ನನ್ನು ತೋಚುವಂತ ತರಾತುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ 13 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಬೀರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಬೀರ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅನ್ಸಾಫ್ ರವರ ಜೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯತ್ತ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕದರೋಡನ 6 ಓವರಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 2.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮುಬೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾಫ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಛತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯತ್ತ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯತ್ತ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ YFC ಬಜಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಬೀರ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇದು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರನ ಅರ್ಭಟ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನು ಅಸ್ಗರ್ ರವರು ತೋರಿಸುವಾಗ ಆರೀಸ್ ರವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 3 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 1 ದಾಳಿ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 2 ಓವರಿಗೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು YFC ಬಜಲ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮೋರ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಮುಬೀರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಆ ಕಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿರಿಕ್ತ ಗಾತಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 24 ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮೋರ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮುಬೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಅದು ನೇರ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಆರೀಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದಂತ ಸವಾಲು, ಬರಬೇಕಿದ್ದಂತ ಮೊತ್ತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಆರೀಸ್ ರವರ ದಾಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಲ್ಲಂತೂ ಆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 60 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹರಿತು ನಾಯಕ 4ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆತವನ್ನೆಸೆದಂತ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ. ಇದು ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ
20-22ರ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಣನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಸ್ಲೀಂ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗೂಟ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರತ್ತ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೈಚಲತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂವರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದಾಂಡುಗಾರ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಗೂಟ ಪಾಲಕನಂತೂ ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಗಲಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಂತೂ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯಾಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ 4ರ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ. ತಸ್ಲೀಂ ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಗಾರ. ಇದು ತನ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್. ತಸ್ಲೀಂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. 2ನೇ ದಾಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗೂಟ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಧರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀನಿಕೇತ್. ಖಂಡಿತ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವುದು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ತೀರ್ಪಾದರೆ ಇದು ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಪಂದ್ಯಾಗೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೂಪ, ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು ಎನ್ನುವಂತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತಗಾರನ ಎಸೆತವಂತೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರನ ಕಾಲುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇ ನೋಡುವಾಗ ಆ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ತಾವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅನುಭವದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿ ಹಾದು ಓದುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ
ಒಂದು ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಶಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಗಾತಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. ತಸ್ಲೀಂ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಸ್ಲೀಂ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ. 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಗೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ದಾಳಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. YFC ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರಂಭದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1-2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶರವೇಗವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಲ್ಲಭ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೂಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡದಂತ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಇದು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ತನ್ಕುಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಸ್ಲೀಂ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ತಸ್ಲೀಂ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4-5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ತಸ್ಲೀಂ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 31. ಕಾದರೋಡನ ಆರಂಭದ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ಮೇಲೆ. ತಸ್ಲೀಂ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ 12 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಕರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಂತೂ 55-60ರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಓಟಗಳು ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡವದು. ಅಲ್ಲಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಹಸನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ, ಎರಡರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 33 ಕ್ಷಮಿಸಿ 33ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಚೆಂಡು 1+1 2 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 35ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹಸನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಹಸನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 36. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಹಸನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಹಸನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೌಶಾದ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಅದು 1 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸಾಫ್ ನೌಶಾದ್ ರವರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 more ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆರಂಭದ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವುಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಟೀಲ್. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಿಗಿದ್ರು, ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು 3ನೇ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಉದ್ದರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ, 3ನೇ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ YFC ಬಚಾಲ್. ಓವರಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 37 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ YFC ಬಜಾಲ್. ಇದು 3 ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಶ್ವಿತ್ ರವರ ಆಗಮನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4.4 ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 28 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 37 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು ಎಡಗೈ. ಖಂಡಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಕಾರಣ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮೂಲವಾಗುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅನುಭವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 38 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಹಸನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಂತ YFC ಬಜಾಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಹಸನ್, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯತ್ತ ಸೇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೌಂಡರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಆಟಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 42 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ
ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡುವಾಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 20-22 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡುತ್ತಾ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೈವ್ ಕವರೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ಓವರಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನತ್ತ ಚಲಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದರ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ, ಇದು ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 44ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 5 more in left. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಿತ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+ ಅವಳಿಯ ನಿಶಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶರವೇಗವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 46. ಅರ್ಧ ಶತಕದ ದಾಪುಗಾಲಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಛಲದಲ್ಲಿ YFC ಬಜಾಲ್ ಎದುರಾಳಿಯಾದಂತ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ತರಾತುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಕೀರ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಊಟಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ, ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ನೋಡಿ. 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 3ರ ನಿಶಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ವಲ್ಲಭ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟ ನೋಡಿ. ಅದು ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅದು ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬೇಡಿ, ಅದು ಗೂಟಪಾಲಕನಂತೂ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 48 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕದ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 48 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ, ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಚಾನೆಲ್. ಖಂಡಿತ ಇದು 6ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಕೀರ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಇದು ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟ. 5 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 1+ ಬೌಂಡರಿ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 4. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 53 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ YFC ಬಜಾಲ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಕೀರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 53. ಶಾಕೀರ್ ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಶಾಕೀರ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾಫ್
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 54 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ 55 ಓಟವನ್ನಾದ್ರೂ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು. ಖಂಡಿತ ಇದು ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more in left. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಾಕೀರ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 55 ಓಟ. 56ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕದರೋಡನ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಲಾಢ್ಯ ತಂಡವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 56ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದೇ, ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 165 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅದೆಷ್ಟೋ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುಟಾಣಿ ಯುವಕರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ 2 ಪದಗಳು, ಒಂದು ಗೋಪಿ, ಒಂದು ಸತೀಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಹಾದು ಹೋದುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಗೋಪಿ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ. धन्यवाद जनाब इरशाद काऊर। निस्संदेह आपने जिस तरीके का, हम शुक्रगुजार हैं, हम दोनों आपके काफ़ी आभारी हैं कि आपने इतना बड़ा नाम हमें, इतना बड़ा सम्मान हमें दिया। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका भविष्य यहाँ पर उज्जवल हो, आप भी एक बेहतरीन आंखों देखा सुनाने वाले कमेंटेटर्स में से एक बने। तो हम निश्चित रूप से आपके आभारी हैं। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर लक्ष्य का, तो 56 रन यहाँ पर बनाने, 56 रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। So 56 the target for them, and their innings are now going to get. एक बार फिर से जनाब इरशाद काऊर को हम अभिवादन न करते हुए फास्टेक वॉरियर्स की पारी में बढ़ते, तो 56 रन यहाँ पर बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। और जहाँ तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, 9.25 रन प्रति ओवर उन्हें रन्स बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, और आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त फास्टेक का वॉरियर्स की ओर से इस वक्त मौजूद क्रीज पर So the first ball of their innings now coming up. गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे। रन्स इस वक्त उन्हें बनाने हैं 56 रन 36 गेंदों पर। और फास्टेक वॉरियर्स की पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद इस वक्त फेंकी थी, और अंतिम क्षण में इस गेंद पर रन बनाने में असफल। ये गेंद इस बार this could be gone all the way, just we have to wait and see, and it cleared the fence, I think so. It might be, it fell short of a fence. गेंद सीमा रेखा के अंदर लगभग 1 या 2 इंच अंदर टिप्पा खा चुकी है। और यहाँ पर चौका सिर्फ प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, देखिए किस तरीके से उछाला था इस वक्त। हैव अ लुक एट दिस। और गेंद इट फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ अ फेंस। और 4 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं
तो जहां तक तो सवाल है चौका, और वहां पर जो फास्टेक वॉरियर्स के डगआउट है वहां पर खुद उनके खिलाड़ियों ने बताया कि ये चौका है। ये गेंद लेग स्टंप पर, इस बार इट्स कुड बी क्लियर डिफेंस, यस इट डज, दिस टाइम ही गॉट दैट वन फॉर अ बिग ए बाउंड्री एंड अ 6 एंड अ फायरिंग स्टार्ट फॉर फास्टेक वॉरियर्स। असगर इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद थी, गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, देखिए किस तरीके से बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा जवाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ 12 रनों पर 10 रनों पर स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंच चुका है 2 गेंदों में, 10 रन एट द बोर्ड एंड दिस इज द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो असगर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और निस्संदेह अपने पहले ओवर में ही अपने इरादों को बुलंद कर चुके हैं। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप विकेट पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन ओवर डिफेंस फॉर अ बाउंड्री। तो रनों की बौछार इस ओवर में लगाते हुए असगर और पहले ही ओवर में घातक बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो देते हुए, तो स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 4, 6 कपल और 4। तो यहां पर पावर प्ले का फायदा पूरी तरह उठाते हुए और दबाव में इस वक्त गेंदबाज कीर्तन, और पिछले गेंद को इनटू द गैप इस वक्त निकाला था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच, और गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस ओवर में अंतिम बार कीर्तन गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी परिवर्तन के दौर पर, धीमी गेंद लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ बढ़कर अब स्कोर पहुंच चुका है 17 रनों पर। सो 56 और ये गेंद चिप किया एंडफील्ड पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका, और आखिरकार यहां पर असगर की क्विक फायरिंग नॉक पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। 6 गेंदें उन्होंने सामना किए, 16 रन उन्होंने बनाया, और ऐसा कहना पड़ेगा 280 स्ट्राइक रेट की मदद से, और अपना किरदार यहां पर बेहतर तरीके से अदा करने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 16 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है, 17 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। असगर की पारी समाप्त 16 रनों पर, 16 of just 60 overs he scored, and after being playing a short but good knock, he is back into pavilion. First wicket gone and it's 17 for 1 after first over. तो तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ, इस मैच के बाद फ्रेंड्स कुत्ता का मुकाबला होगा कुलडलता या क्रिकेटर्स कटील इनके बीच। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। और यहां पर जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज एरिस नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए सफान का आगमन यहां पर हो चुका है, और एरिस ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सफान के लिए। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को छोड़ दिया, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर बनाने हैं उन्हें 56 रन, और ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया, और गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर स्कोर है यहां पर, और 19 रन माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए इस वक्त गेंद को उछालना चाहता चूके, और सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर
रुक चुका है 19 रनों पर। निस्संदेह इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश पूरी तरह करते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज। वो जानते हैं जितने ज्यादा रन पावर प्ले ओवर्स में बनाएंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा आने वाले ओवर्स में। तो अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, यह गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और स्कोर इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, कहना पड़ेगा। स्कोर रुक चुका है 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज आ रही है, गेंद इस बार टॉप एज, गेंद हमें में उछली है, मिड ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आखिरकार सफलतम इस कैच को लपकते हुए इरफान की पारी समाप्त। गेंद को स्कूप करना चाहा था लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई, हमें में उछली और आखिरकार लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को लपका इनफील्ड के अंदर। और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। So 10 balls just gone in their innings, 19 runs at the board, losing 2 wicket, chasing the victory target of 56 in 6 overs. Except they lost their 2 wickets, their run rate is now pretty good. 19 runs on the board in the over number, just a second in progress in their innings. Next match, Friends Kotalwil takes over Kolletaya cricketers Katil, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So this is the second over in progress, और गेंदबाज एरिस इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद चिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई एक रन मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर, बेहतर रिटर्न, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। कुल मिलाकर 25 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और 36 रन और चाहिए विजय के लिए। 36 more runs now they have to score for victory in remaining 25 deliveries, और एरिस गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट फ्लाइट चिप किया, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त स्कूप जरूर किया था हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, हैव अ लुक एट दिस, जगह बनाते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था लेकिन प्लेसमेंट गलत था और सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को लपक लिया। 2 overs completed, 20 for the loss of 3 wicket, and just 3 runs scored in this over, and this is turning out to be a fine over completed in YFC Bajal's innings, and well bowled in this over by Aris, conceded just 3 runs and captured a couple of wickets, and इस ओवर की बदौलत तब ऐसा कहना पड़ेगा पहले ओवर में जो डैमेज असगर ने किया था उस पर काफी हद तक पैच वर्क यहां पर कर चुके इस दूसरे ओवर में गेंदबाज एरिस। अब 36 रन चाहिए, 24 गेंदें बाकी। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ एग्जैक्टली 9 रन्स पर ओवर, और अब गेंदबाजी पर उतरते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अंसाफ गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार, और स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए रिजवान, और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, जो 36 रन बचे हुए 24 गेंदों पर बनाने, 12 का फासला इस वक्त बचे हुए गेंदे और बनाने हुए रन्स के बीच इस वक्त है, और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है सबसे पहले इस 12 के फासले को उन्हें मिटाना होगा अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है। तो देखते हैं क्या होता है। रिजवान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और अंसाफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर फील्डिंग में जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए पहली गेंद अंसाफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद तक पहुंचना चाहा, चूके विकेट कीपर भी चूके, गेंद पहुंची गली क्षेत्र पर, वाइड का इशारा, 2 रनों का इजाफा, 1 + 1 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard is now moving up to 22 for the loss of 3 wicket at the start of the 3rd over in fact। तो अंसाफ दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आती है, बेहतर गेंद थी, गेंद को जगह बनाते हुए खेला इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और जब तक लॉन्ग ऑफ फील्डर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 23 नाउ
for the loss of 3 wicket. 23 for the loss of 3 wicket. और यहाँ तक का सवाल है गेंदबाजी का। इंसाफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया था, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चुके ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, विकेटों के पीछे एक रन मिला। 1+1 2 रन्स इनफैक्ट एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और ये गेंद और फिर से एक बार गेंद तक आते हुए, गेंद को जगह बनाते हुए इस वक्त खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इंसाफ। और हालांकि 2 वाइड जरूर उन्होंने इस ओवर में फेंके हैं, लेकिन उसके बाद बचे हुए 3 गेंदों में उन्होंने बेहतर गेंदबाजी यहां पर की है। इस बार तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इस बार स्पेक्ट्रा वाइड, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होते हुए, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और कुल मिलाकर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर इंसाफ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, इस बार निशाना अगर स्टंप्सों पर टकरा था तो निस्संदेह नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन निशाना चूका, स्टंप्सों से कुछ दूरी पर इस वक्त गेंद निकलते हुए, और इस बीच बल्लेबाज के पास रन था कि तेजी के साथ 1 रन चुरा सके। वाइड का भी इशारा इस वक्त हो चुका है अंपायर द्वारा, और 1+1 2 रन्स, 2 रन्स उनके खाते में इस वक्त जुड़ेंगे। 29 रन इस वक्त चाहिए फास्ट ट्रैक वॉरियर्स को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। 27 रन और इस वक्त बनाने हैं, और कुल मिलाकर 22 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, तो लक्ष्य धीरे धीरे आसान होता हुआ फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के लिए। इंसाफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, लेग स्पिन परिवर्तन के तौर पर बेहतर गेंद थी, लेग स्पिन गेंद थी, जमीन के सहारे गेंद को इस वक्त उछालना चाहता और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि बल्लेबाज ने भी पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि ये गेंदबाज लेग स्पिन करेंगे, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 21 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स एंड 26 इनफैक्ट 27 more runs now they have to score for victory। ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, और इस बीच ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलते हुए, और अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद लाइन पर जरूर टिप्पा खाई है, लेकिन ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकल रही है, और इस बीच रन्स इस बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 2 बेहतर गेंदें लेग स्पिन के जरिए इस वक्त गेंदबाज इंसाफ फेंक चुके हैं, धीरे धीरे अपने रिदम लय को वो प्राप्त करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बल्ले का बेहतर किनारा, 3 लगातार डॉट गेंदें, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग। जब तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहे थे तब सही लेंथ और लाइन को तराश रहे थे, अब यहाँ पर लेग स्पिन के जरिए एक बेहतर लेंथ और लाइन को वो इस वक्त पकड़ चुके हैं, और एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार चुके 4 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स इन अ रो एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड ओवर। तो 4 गेंदें, पहले 2 गेंदों में 9 रन यहां पर प्रदान कर चुके थे गेंदबाज एक्स्ट्रास अतिरिक्त मिलाकर, लेकिन उसके बाद 4 लगातार डॉट गेंदें लेग स्पिन के जरिए उन्होंने फेंके, और यहां पर 4 गेंदों में उन्होंने बल्लेबाज को चित यहां पर कर दिया। तो 3 ओवर की समाप्ति, 29 for 3 after 3 overs, half the way mark, still half have to go, 27 to get now। Remaining 18 deliveries, exactly 9 runs per over, have to score for victory। देखते हैं इस बारी में अब क्या होता है। तो यहाँ पर 27 रन बनाने हैं, और निश्चित है कि मॉनिटर पर देखिए किस तरीके से तस्वीर इस वक्त दिखाई जा रही है। निश्चित है कनाडा जिनके इतिहास में बेहतरीन दिक्कत कलाकारों में से एक हो जाने जाते हैं। 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा विजेता को, और युवरत्न ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा, जबकि रनर्स को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और युवरत्न ट्रॉफी यहां पर प्रदान किया जाएगा, और वैयक्तिक विभागों में कई इनाम यहां पर प्रदान किए जाएंगे। फाइनल मैच के पश्चात यहां पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। तो देखते हैं क्या होता है। 27 टिकट फ्रॉम 18 डिलीवरीज, और आखेगा आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So
29 for the loss of 3 wicket and the target 56, and they got some explosive start in the first two overs, but good comeback after that by the bowler. Now the equation stands very interesting, and another 27 record. Oh, what a shot! Look at that one! Absolutely the instrumental sound. Just we can hear the bat having a contact with the ball. What a great struck there from the batter. Absolutely terrific shot there from Rizwan. Look at that one. I want to see in the replay. And the way he got that line and line. Look at that one. Right across the line after that. Just look at the swing of the bat. Look at the flow of the bat. And he got that one right from the middle of the bat. And ball travels very quickly down to deep mid-wicket boundary for a youth 6. 35 for the loss of 3 wicket. He wanted to continue. And that's the one problem. And earlier also mentioned in the previous match, whenever the bat is getting 1-6, immediately he wanted to get one more. That's the problem for the batters. They need to pick the right delivery to get the big 6. This time going for the drive. Good comeback by the bowler. Harris, good thinking, saying that the batsman is an aggressive frame of mind. He's just bowling a slower one along the carpet, not really giving width for the batters to go for the big shot. After getting 6 through 2 dotted deliveries, ball die by the bowler. As ball that time again, the line is not good. Down the leg stamp, ball running down to deep fine leg region. Before the fielder forward, square leg region, deep square leg region, run across to right to fields the ball. Ample time for the batters to complete a single. So scoreboard moves on to 36 for the loss of 3 wicket in over number 4 in progress. So what a fantastic game of cricket is going on here. YUVARATNA Trophy 2022. One more wide, one more extra delivery has to ball. That's a big problem here for YFC, because Fast Tech Warriors looks like they wanted to get this target, and with the help of some extras and beautifully ball. Wicket keeper behind the stump, fantastic. In a fraction, collects the ball and removes the bails, asking for the umpire, but no damage done. And much required dotted delivery there from Harris. 37 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. The last delivery is left in this over. That means after this 12 balls remaining, the 13 balls total remaining, and they have to get another 19 runs to win this match from the far end. Right arm over the wicket. This time again went for the big shot. One more dotted delivery, and he's just sacrificing his wicket. More than sacrifice, it's a suicider from the batter. Just going for the shot towards offside region, just using his feet, coming down the track, missed it ball completely. Wicketkeeper behind the stump in second inning completes the job. The wicket number 4 is back into pavilion. 37 for the loss of 4 wicket. Little bit sad news in international cricket. Rod Marsh, Australian cricket great, dies at age of 74. The Sport Australia Hall of Fame on Friday confirmed that Marsh, who played 96 test matches for Australia from 1970s to 1984, had died in Adelaide Hospital. It's a fantastic performer in the 70s and 80s. Rod Marsh, Australian great wicketkeeper batsman, and is suffering a heart attack during a fundraising event in Queensland state. He was 74. The bad news, sad news, and may his soul rest in peace. Marsh held a test record of 355 dismissals by a wicketkeeper, including 95 of bowling of great Dennis Lilly. He also played 92 one-day international for Australia before retiring from top flight cricket in February 1984. He left-handed batsman. He was the first Australian wicketkeeper to score a century in Test cricket and finished his career with 3. And it's outstanding cricket career for Rod Marsh. He later led the national cricket academies in Australia and England, and was the inaugural head of International Cricket Council's World Coaching Academy in Dubai. In 2014, he was appointed as Australia chairman of selectors and held the position for 2 years. So it's a sad news, and for the international cricket, Rod Marsh passed away. This time he's off it down to wideish long on, but fielder takes a very good catch. He has to jump a little bit, but there's no ball called by umpire. Chance of a run out, and is gone. Look at that. Sometime even the luck is favoring you, but one time immediately unluck following you. This is what happened to that batter.
lofted, didn't got the distance. Long on fielder takes the catch. At the same time, umpire called no ball because suspicious bowling action. What bowler is did, and that's why umpire called it's a no ball. But look at the fielder there. Just returns the ball, and that time the striker wanted a second run. He left the crease, and bowler completes the job in the form of run out. So altogether, it's a little bit comedy of error in this particular the ball, particular delivery of the over number 5. But unfortunately, when Rizwan is looking pretty good in the middle, hits 1-6, is back into pavilion. 37 for the loss of 4 wicket. Fast-tech Warriors not still there, out of the worries. 19 more runs required for the victory in 12 balls, because the previous delivery is a no ball. That means it's going to be a free hit delivery. So YFC Bajal, all the players surrounding the umpire Roland Pinto, maybe they are clarifying about the suspicious bowling action of their players. Javed. So whenever they're coming to the Urva cricket ground, USAG cricket ground, you need to see that the rules and regulation is very important. Not just coming and bowling is not easy, but it has to be seen that the bowling action need to be very correct. So here is left arm bowler bowls. This time again outside the line of off stamp. Umpire now Roland Pinto just walking towards the square leg umpire, because he knows that more than umpire in non-Saiga's end and square leg umpire. Square leg umpire well definitely will going to see the bowling action quite rightly in that square leg region. So one more dotted delivery. 37 for the loss of 4 wicket. So Gopi, and certainly it was a bad news, isn't it? The great player and the Australian wicketkeeper, and 355 victims is definitely going to be outstanding record what he's got, isn't it? Rod Marsh. बिल्कुल सतीश, रॉडनी मार्श एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियाई भूतपूर्व विकेट कीपर जाने जाते थे. हालांकि मिड 70s और अर्ली 80s में उन्होंने डोमिनेट किया था. उस टाइम में उनके समकालीन विकेट कीपर थे. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. इस बार नो बॉल का इशारा एक बार फिर से, और निस्संदेह सतीश यहाँ पर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 40 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 41 इनफैक्ट. और कुल मिलाकर सिर्फ एक गेंद इस ओवर में फेंकी जा चुकी है. गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाजी से हटा दिया गया है. अब चाहिए 16 रन, जबकि 11 गेंदें बाकी. 16 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स. और मिड 70s और अर्ली 80s में रॉडनी मार्श का चक्राधिपत्य था. तब उनके समकालीन विकेट कीपर अलन नॉट इंग्लैंड के, जबकि पाकिस्तान के वसीम बारी और वेस्ट इंडीज के डेरिक मर्रे जो कि बेहतरीन विकेट कीपरों में से जाने जाते थे, तब उनके बीच में स्पर्धा थी. और ये चारों विकेट कीपर मैं समझता हूँ विश्व में प्रख्यात विकेट कीपर रहे. उसके बाद अगर भारत का जिक्र आता है तो सैयद किरमानी, उससे पहले फारूक इंजीनियर जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर्सों में से एक जाने जाते. तो रॉडनी मार्श ने ज़्यादातर शिकार डेनिस लिली की गेंद पर उन्होंने ज़्यादातर कैचेस लिए थे. और वो टाइम में ऑस्ट्रेलियन का पेस अटैक उतना घातक था. जेफ थॉमसन, डेनिस लिली जैसे गेंदबाज थे, तो उनके खिलाफ विकेट कीपिंग करना, उनके गेंदों पर विकेट कीपिंग करना उतना आसान नहीं हुआ करता था. तब उन्होंने 355 कैचेस और स्टंपिंग कुल मिलाकर 355 डिस्मिसल्स लिए. तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बेहतरीन विकेट कीपर वो थे. और उनका अकालिक निधन निस्संदेह क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा एक झटका है कहना पड़ेगा. और मैं समझता हूँ उनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे. ये हम सर्व संगठक और क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हम यहाँ पर उनके लिए विषाद व्यक्त करते हैं, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. Exactly, Gopi. Thank you very much for all that information. Along with Rodney Marsh, you are coming into the wicket keepers during that era, and you are right, Gopi. Farooq Engineering is absolutely one of the fantastic wicket keeper batsmen. Even Shayad Girmani, it's my favorite. He's always my favorite. He's a wicket keeper batsman. And again, here we are coming back to this match as 43 for the loss of 5 wicket. Lovely improvisation down to deep back for entry and long chase here for the fieldsman before he run back to field that one, and might be a little bit
misjudgment by the fielders in the deep backward point region allows the batsman to come back for the third as well. Maybe they're looking for some commitment from that fielder. He wanted to give the ball to his partner, but ball is a little bit wide for that fielder to collect that one. So that we look at that one in replay, and exactly as he was missed the ball completely, so that they got opportunity to come back for the third. This is turning out to be a really good over for Fast Tech Warriors. They got some runs in the form of extras, no balls as well, and now scoreboard is 46 for the loss of 5 wickets. This time I can ball him, clean him up. Javed has got a very important breakthrough. Did collection. Kirtan got a very important breakthrough in this very important time when his YFC Bajal required some breakthrough here. He's just coming round the wicket here. Look at that one, and the line is so impressive in that occasion. The batter looking for the big shot, but without coming into the line, and he just missed it completely from his bat. The vital breakthrough here for Bajal, YFC Bajal. So what a fantastic game of cricket is going on here. Both the teams are really fighting hard for the victory. The big tournament, certainly the level of competition is going to be very high. The big cash prize of ₹1 lakh will going to be the cash prize for the winners, and 50,000 for the runners up as well, and even some attractive individual prizes for this wonderful YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore. So new batters, Asan came into middle, coming back to the equation 46. That means another 10 runs required for the victory in remaining 8 deliveries. 8 deliveries, 10 runs required for the victory. Here is next one. And this time lovely shot. Good to look at the placement down to deep extra cover division, but before the fielder from deep cover point to run across little bit towards his right. The ample time for the batter Asan to pick the single. With that single, scoreboard moves on to 47 for the loss of 6 wicket. Kirtan, final time in this over, bowling away from us, pass umpire. This time lovely shot, no need to run for that. What a shot there from Mubir. Outstanding switch it. Look at how quickly he takes his position, just like in the left-handed batter. Look at that one, absolutely fantastic stroke there from Mubir. Lovely shot, just one bounce over the row for 4 runs. Beautifully driven, and that boundary takes Fast Tech Warriors back and strongly back into this game, Gopi. And what a shot, look at that one replay, and look at the position he took, just like a left-hand batter, looking a slog sweep shot. Beautifully driven, and almost the pressure is off because of that stroke, because now 5 runs required in the last 6 deliveries. Been outstanding, the batting performance there from Mubir. Now job is not yet over, still they have to get another 5 runs in this match, and for Bajal, YFC Bajal, they needed 1 good over, and they need to believe that they can win the match. YFC Bajal, they have to choose 1 good bowler to bowl that last over. They can stick the position from the 5 runs in the last over, but so far it looks like Fast Tech Warriors is almost out of the worries. Some batters really played like a Warriors, and especially the Mubir, one of the warrior of Fast Tech Warriors, played outstanding reverse stroke to get the boundary, which is released the pressure from the last over. Now 5 to get from 6 deliveries. Ashwit is brought into attack. Wait and see the strategy from Ashwit to restrict 5 runs in the last over. Wait and see how Asan and Mubir will going to get some game plan here to get the 5 runs. No need to panic at all. Just 5 to get from 6 ball. Here is the first ball. Right over the wicket, edging it down to short third manager, running hard between the wicket. The completed single. The first run comes off out of 5 for the last over. Now 4 required from 5 deliveries. Needed 1 dot. Needed 1 wicket badly for YFC Bajal. They wanted to back into this game. Mubir back on strike. Manur played an exquisite switch it in the previous over. He now is on strike now. Get ready to face the next delivery from the bowler Ashwet. This time again, sensible batting. Absolutely sensible batting there from Mubir. You know exactly, no need to panic at all. He got a lot of the gap between bowler and his short extra cover. So he's sending that one with the gap in that gap for a single. 3 required, 4 balls remaining.
Ashwit so far ball 2 deliveries considered 2 runs, and this is a big wide, and it's enough. Spectra wide, 1 plus boundary the 5 runs, and that's it. And the fast track Warriors they won the match in the final over, and 4 deliveries to spare. This is a big wide there from Keith, look at that one, absolutely disappointment. So 55 for the loss of 6 wicket, and they won the match comprehensively in the at last. And now it's time for the announcement of the man of the match. Meanwhile, we'll take a 30 minutes of lunch break, and we'll back exactly at 1:30 p.m. in the afternoon. 1:30 p.m. and that was the match between Friends Kuttar versus Kondiltaya cricketers Katil. Thank you very much to Irshad, our friend and Kannada commentator, having sharing mic with us. So now it's I think we're going to announce the man of the match winner, but I request the man of the match winner, please collect your man of the match after lunch break exactly at 1:30. So Asghar of Fast Track Warriors won the Man of the Match award for his quick-fired 16 runs. He is the one who just opened the gate for Fast Track Warriors by playing some explosive cricketing strokes. So Asghar is the Man of the Match winner. The Man of the Match award, which is donated by Tribal Tattoos. So my request, chief guest. I request Santosh, the Vice President of Team Fortune Mangalore, will go into present. So here you go, the man of the match winner, Asghar of Fast Track Warriors, who played an excellent explosive knock of 24 runs. He is the one, is definitely opened the gate for his team and scored a valuable runs. Congratulations, Asghar, for your entertainment innings, and better luck for the next match as well. Thank you very much to Santosh, Sai Santosh of Team Fortune Mangalore. Thank you. We'll take a lunch break of 30 minutes, and we'll back right in front of you, live and exclusively, exactly at 1:30 p.m. in the afternoon. Till then, goodbye. Thank you.
I request the captains of Friends Kuttar and Kondeltaya cricketers Katil to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಲ್ತಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಂದಿ ಚಿಮುಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. So Friends Kuttar, after won the toss, they elected to field first against Kundaltaya cricketers Katil. And the match starts now with Jashut While, and a request to the both teams players to please start the match immediately because of shortage of time. I request all the players to please start the match immediately. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ 11 ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುತ್ತಾರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. तो इस तरह से मैच की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और फ्रेंड्स कुत्तार ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और 30 मिनट्स विल बी गिवन फॉर ईच टीम टू कंप्लीट देयर 6 ओवर्स कोटा. प्लेयर्स प्लीज नोट 30 minutes time will given to the both teams players to complete their 6 overs quota. Both teams captains and players please note. और यहाँ पर मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. विश्वास के साथ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए
और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। आज के मैच नंबर 4 की पहली गेंद दाहिने हाथ ऊपर विकेट चिप किया। इस वक्त गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते, अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में असफल। मिड ऑफ के फील्डर दौड़े थे लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर भी दौड़ कर आए और अंतिम क्षण में कोल्यूशन होने से दोनों फील्डर बचे। और इस बीच ये कैच छूट चुका है पहली गेंद पर, तो यहां पर 1 रन मिल चुका है। कटील कुंडलता या क्रिकेटर्स कटील को, और इस बीच गेंदबाज तैयार। नवाज 1 रन के साथ अपना खाता खोल चुके हैं। सतीश इस वक्त और लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त अंतिम क्षण में हाफ माइंडेडली छोड़ दिया था और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 1 रन 90 से नुकसान के। चौथा मैच आज का यहाँ पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज विश्वास एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, दैट इज एन टेरिफिक, दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक। गेंद कुछ हद तक लेग कटर गेंद थी, कुछ हद तक डिविएट होती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। अंतिम क्षण में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद करारा प्रहार करना चाहते थे इस गेंद पर, क्योंकि और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। विश्वास दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में और इस बीच रन्स एक बार फिर से नहीं मिलेंगे। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद पहुंचे थे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और विश्वास एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले यहाँ पर जारी और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर कुंडलता या क्रिकेटर्स कटील इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ और अगली गेंद लेकर गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, मच स्ट्रेट लाइन, beaten completely by that pace and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज विश्वास इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड, सिंगल रन एडेड टू देयर टोटल 3 नाउ विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और 2 वाइड इस ओवर में अब तक फेंक चुके हैं गेंदबाज विश्वास और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन वहां पर मैं समझता हूं फील्डर मौजूद है। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 without loss out of first over for Kundelta cricketers Katil after being losing the toss and put it to bed by Friends Kuttar in the match number 4 of the day 2 of YUVARATNA Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune Mangalore in loving memory of power star late Puneet Rajkumar। जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो मैच नंबर 4 यहाँ पर शुरू हो चुका है और गेंदबाजी पर टीम फॉर्चून एंड की ओर से सोहेल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फ्रेंड्स कुत्तार की ओर से और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। तो सोहेल का जहाँ तक सवाल है इस वक्त वो नया ओवर प्रारंभ करते हुए बेहतर गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं फ्रेंड्स कुत्तार की ओर से और अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सतीश इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई। लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर था ना दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और पहली गेंद, ये गेंद स्वीप किया रिवर्स शॉट की दिशा में, गले की दिशा में गेंद पहुंची लेकिन थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर
बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह यहाँ पर एक साझेदारी पार्टनरशिप की जरूरत है कुंडलता या क्रिकेटर स्कटील के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और सोहेल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर कर वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत कुंडलता या क्रिकेटर स्कटील को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सोहेल दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार ढीली गेंद थी जरूर, लेकिन गेंद का फायदा उठाने में असफल। ऐसा कहना पड़ेगा परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी और अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और सोहेल एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिलेगा। लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तो सोहेल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा था सतीश ने अंतिम क्षण में, लेकिन परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक गेंद धीमी आती हुई और बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई, बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फ्री करे, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल। इस बीच गेंदबाज अगर थ्रो को ठीक तरह से रिसीव कर लेते तो निश्चित रूप से वहां पर खतरा हो सकता था नॉन स्ट्राइकर हेड पर, लेकिन थ्रो रिसीव ना करने की वजह से बल्लेबाज 2 रन सुरक्षित आखिरकार पूर्ण कर चुके हैं। 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। कुंडलता या क्रिकेटर्स के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर जमने की, क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी बिल्कुल जमीन के सहारे लॉन्ग द कार्पेट, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed is 9 without loss. Slower start for Kondalta cricketers Katil after being losing the toss and put it to bat by friends Kotar in the match number 4 of the day 2 of YUVARATNA Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune Mangalore. और जहां तक सवाल है 2 ओवर के खेल का, तो मैं समझता हूं 2 ओवर बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ फ्रेंड्स को अपने काबिलियत अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने यहां पर गेंदबाजी की है। फलस्वरूप इस वक्त पहले 2 ओवर में 2 पावर प्ले ओवर में वो बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 4 overs लेफ्ट स्टिल इन देयर इनिंग्स और देखते हैं इन 4 ओवर में कुंडलता या क्रिकेटर्स कटील के बल्लेबाज बंधनों को किस तरह यहां पर तोड़ते हैं। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए विश्वास, काफी विश्वास के साथ नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त विश्वास गेंदबाजी शुरू करते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस गॉट इनसाइड एज ऑन द शॉट, फाइन लेग फील्डर चूके और गेंद इस वक्त पहुंची शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों से चूकी थी और जब तक दोबारा गेंद को फील्ड करके वो थ्रो करे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बेहतर गेंद थी इस वक्त, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद निकली थी विकेट कीपर की बाईं ओर से, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका, 10 रन। यह गेंद अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेलना चाहा और विकेटों के पीछे इस गेंद को लपक लिया गया और इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा तो देखिए किस तरह से, मैं रिप्ले में देखना चाहूंगा, गेंद को पहले स्टीयर करना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लाइन को देखते हुए अपने गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग करना चाहा, लेकिन तब तक गेंद उनके बल्ले पर टकरा चुकी थी और हवा में उछल चुकी थी और आखिरकार यहाँ पर विकेट कीपर ने अपने पीछे की ओर 1 से 2 कदम जाते हुए इस कैच को लपका और इस
अजीब और गरीब ढंग से यहाँ पर विकेट गिर चुका है गेंदबाज का और बल्लेबाज का, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द थर्ड ओवर। स्टिल द बैट्समैन ऑफ कोंडलताया क्रिकेटर्स कटील सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। तो नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन हो चुका है और वो इस वक्त सामना करेंगे विश्वास की गेंदों का। विश्वास काफी आत्मविश्वास के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विश्वास की गेंदों का। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज विश्वास मनु, जो कि पिछले गेंद पर सिंगल लेने के बाद अपना खाता वहां पर खोल चुके हैं। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए नवाज विश्वास की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर आते हुए गेंद छोड़ दिया। अंतिम क्षण में शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर मैदान पर छा चुके हैं और यहाँ पर गेंदबाज ये गेंद इस बार उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा। और गेंद फेंकते ही अपना संतुलन खो बैठे गेंदबाज विश्वास, फिसल कर गिर पड़े, लेकिन सही गेंद उन्होंने इस गेंद पर फेंकी थी और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाज एक सही लेंथ और लाइन इस वक्त बरकरार रखते हुए, और एक बार फिर से विश्वास गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनु सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है इस वक्त, हवे का रुख कुछ हद तक तेज जरूर है, लेकिन भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर इस मैदान पर करते हुए। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मैं समझता हूँ थोड़ा सा सीधे मौजूद है, और जब तक वो गेंद को फील्ड करे चंद टिप्पों बाद गेंद को थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रेट पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, and after completion of 3 overs, still the batsmen of Kondeltaya cricketers Katil searching for the runs. They managed to score only 16 runs on the board after completion of 3 overs for losing just a single wicket. और जहां तक सवाल है बचे हुए 3 ओवर का, तो देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs फॉर कुंडलताया क्रिकेटर्स कटील, एंड स्टिल 3 overs रिमाइनिंग इन द रिंग्स। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में वो कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. Good afternoon, cricket lovers. So 16 for the loss of 1 wicket. Kondaltaya cricketers Katil and not having that much of a good run rate. Even they lost only 1 wicket, but because of some disciplined bowling performance by the bowlers of Friends Kutar, they are struggling to get some runs in the board. But 3 overs remaining, and wait and see how well they manage to get some score here. Again, looking for the big shot, not quite getting hold of that and properly. Timing is not really coming properly for the batters. Even though they're trying hard to get some big stroke, but very hard to combine the big stroke. So one more addition, 17 for the loss of 1 wicket. Sunil from the far end. Right arm over the wicket, he balls, swinging his bat again. The line of the delivery, which is a little bit down the leg stump. Batsman shuffled across the line of delivery, swinging his bat, but the bat is not really coming under their level of ground. That's why he missed the ball completely. Bat is in there, ball is just passing under his bat, and there is no chance of any run. Right arm over the wicket, balls again, swinging his bat, appeal for leg before wicket, and is gone.
So they're trying and trying. At last he not really getting the ball to his bat, and he's just finding himself right in front of middle stump. The wicket number 2 is back into pavilion. Kundal cricketers Katil, first time they're appearing in this UCG cricket ground for this particular cricket tournament. YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune and the memory of power star Punit Rajkumar. And new batters. Batter is now just walking towards the middle. And look at that one in a replay. How the batter is got out. This is not a leg before wicket replay. Just seeing that the batsman is different here. I don't think that was that was a previous one. Ball going down the leg stump again. First next delivery. New batsman managed to Version Devi Prasad is managed to get a single here. He's off the mark with a single. With that single, scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. So that brings Mano into strike now. Bowler's back drive driven firmly down to deep long off region, but the protection there in the deep long off, and Friends Kutar is not really bothered about that single. They know exactly how to restrict some big shots. 18 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. From the far end, Sanil. Wide of the crease ball, beautifully ball, absolutely perfect on in the dedication. Of course, a little bit deviation, but line is so good in it for the batters. They were looking for the off drive, missed it completely. One more good over is completed. Struggle time is continuous here for Konathaya cricketers Katil, and after completion of over number 4, it's 19 on the board for the loss of 2 wickets. Now 2 overs remaining, and wait and see how many runs Kundal cricketers Katil will going to get here. So next match is going to be a free quarter final. Sarvagni Urva takes on Rooftech Katipalla. So that I request both the teams captain and the players complete your signatures as soon as possible. Please get ready for the next match. Friends Kutar came into this tournament as one of the favorite, and in the previous tournament, which is played in UCG ground, BK Champions Trophy organized by Birvir Kudla Ashok Nagar Women's Wing. In that tournament, they only qualified to the semi-final. This time lofted and right in the gap. No, it's a catch taken. Lovely catch. Once it looks like the batsman really hoisting it over. Looks like he's going to get the distance right and placement right. But what a great effort that from the field and the deep extra cover. Absolutely a very good running catch taken by the fielder. He's almost standing in the deep cover point. He has to cover ground a lot to come across to that to take that catch. Look at that one in replay. Wide of the crease delivered, left arm. Just ball is coming into the batsman. He's just lofted that one, taken an aerial route, and ball is in there for a while. Look at the fielder where he was coming from. Absolutely perfect judgment. And that is a very good judgment catch taken there by the fielder in the deep extra cover. So one more wicket is back into pavilion. And 19 for the loss of 4 wickets, are back in 3 wickets in fact, back into pavilion of KCK. Kundal cricketers Katil. Pradeep has got a breakthrough in his first ball. Pradeep is a wicket-taking bowler for the side of Friends Kutar. Sandeep is a new batter, but here is a Devi. Will go into face the next delivery. The lovely delivery there from Pradeep. He's got ability of bringing the ball from a long way outside the line of off stump. This one might be that ball is just deviating, coming into the batter, and he's just missed it completely from his bat. Just 19 on the board for the loss of 3 wickets. Over number 5 in progress. Pradeep bowls. This time using his feet, missed it completely. Again beaten by the turn of the delivery. And one more wicket is back into pavilion, and it's maybe the reason that the batters are looking for acceleration of run rate here. By doing that, the wickets are tumbling in a very quickly. Look at that one, almost that deviation. Look at that, he's getting a turn a lot in that delivery. Beaten by the turn, and the Devi just using his feet to go for the big shot on the offside revision. Missed it completely from his bat. Wicket number 4 is back into pavilion. 19 for the loss of 4 wickets. The over number 5 in progress. So far, outstanding performance from
Bowlers of Friends Kutar, after winning the toss, elected to field first. Everything is going in their favor. The bowlers are really dominating in this first 5 overs. This new batter, just number 18, is came into middle. Sharif is on strike. Pradeep is on fire. This time ball is going to, of course, the impact of the line is outside the line of off stump because the batters tried to go for the reverse stroke, Sharif, and missed it completely. But leg by call by umpire. One more addition, 19 on the board. 20 on the board for the loss of 4 wicket. Pradeep bowls. Again, one more good delivery, shuffled across the line of delivery. Not a bad idea to play that kind of cricketing stroke, shuffled across so that it can reach the pitch of the delivery. But this time, too clever. Pradeep is just following the batsman, not really given any width for the batters to pick any kind of big shot. This is Sandeep chipped that one right in the gap towards the deep extra cover. Fieldsman there in the deep, and one of the fielder from deep long off, wideish long off to run across his left and fields the ball. One more over completed, completion of over number 5. It's a 22 for the loss of 4 wicket. Ali Daimadi. ಸರ್ವಾಗ್ನೇರು ಹಾಗೂ ರೋಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಟಿಪುಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 22 for the loss of 4 wicket. Now last over remaining in the innings of KCK. Gondeltai cricketers Katil have to throw their bat in the last over. Didn't got enough runs on the board. 22 is not a good score. Last opportunity for the batters to get some runs. Desperately required some runs. At least 10 to 15 runs. At least they managed to get some fighting total here. So from the commentary box, from the far end, from the donors board end for this cricket tournament, Sunil bowls and start with a dotted delivery in the negation. Each and every dot ball. The problem continues here for KCK. Now 5 deliveries remaining in their innings. Again, good change of line. Seeing that batters going for the reverse sweep is cleverly changing the line by call by umpire. Rightly so. Because if you wanted to play the switch it, if you change your position, the bowler can bowl down the leg stump. And he did a good job here, Sunil. Good clever thinking. 23 for the loss of 4 wicket. And this time lofted at one, down to deep mid-wicket region. One-handed pick up and throw from the field. That chance of run out there, and he's short of his crease. No need to get help from the third umpires because that ball is, that throw is coming from the deep is right over the bails. After one bounce collected very cleanly by the wicket ball, the bowler in fact. Look at the collection. Absolutely perfect technique. Getting the ball in his right hand, even though he's moving to his left, but he's got the ball from his right. And that's so easy for him to return the ball quickly when you collect the ball in your right hand and throws that one very quickly down to bowler, and bowler completes the job. 24 for the loss of 5 wicket. Last 3 deliveries remaining in their innings. Just number 8 slowly walking towards the middle. Just 3 balls remaining. Sandeep is back on strike now. Nitin is in on-striker's hand. Sandeep is in striker's hand. Went for the big shot. Again that dotted delivery. Last 2 deliveries remaining in the innings. So far it's just a 24. One of the lowest score in this tournament. 24. Now 2 deliveries remaining. I have to get some big shots. Going to be a wide, and the bowler is helping some this time to get some score here. Wide outside the line of leg stump. Wide signal by umpire. One more addition to total. 25, 26. Still 2 to go in this over. Sunil from the far end. Bowling with the short run up. This time drives that one powerfully down to deep backward square like this. Again, a lot of fielders in the deep, so that very difficult to get the placement right. But it got a couple of runs before the fielder from mid-wicket to run across towards his right hand, fields the ball, returns the ball,
Couple of runs for Nitin. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 28 for the loss of 5 wicket. Last delivery of the innings is coming up. Can he able to finish the innings with a big shot here? Went for the reverse shape. No need to run for that. Ball is travelling round to deep backward point division boundary for 4 runs. At last, he's just breaking a shackle in the last delivery of the innings by playing a switch hit. Exquisite timing and footwork here from the batsman. Look at that one. Absolutely terrific shot. And ball is travelling very quickly here in UCG ground. Down to deep backward point boundary. And just right off that Kedau board. So 32 for the loss of 5 wicket, and wait and see how well the Friends Kuttar will going to get this runs, and wait and see how well KCK will going to defend this total. We take a short break. After a short break, Gopi will going to take over the microphone in our national language in Hindi. I request Sandeep of Sai Electricals, please report here in the commentary box immediately. Sandeep ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ commentary box ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Dhanyavad Satish. So 33 the target for Friends Kuttar, set by Kundaltaya cricketers Katil, and their innings now going to start with just a while. But before that, I have to announce some donors' name. Team Fortune presents YUVARATNA Trophy 2022. Our some official donors are Mr. Krishnaraj Achar Kadri, Mr. Kritik Kavya Kunjat Bail, Raghu Bhatt Sneha Malemar, Nazir Red Wings Kunjat Bail, Umesh Kotian, President Young Friends, President Gori Young Boys Pandeshwar, I beg your pardon, Umesh Kotian, President Gori Young Boys Pandeshwar, SL Shade Jewelers Hampalgatta, Rafiq Kunjat Bail, Umesh Sri Durga Cricketers Konchadi, Rajit Kumar, Jayesh Packers and Movers Bijay, Prakash Traders Bandar, Kiran D'Souza, Pacharadi, Manoj Kumar Mugrodi, Gori Young Boys Pandeshwar, Sharat Kumar, Corporator Kunjat Bail, Team Sai Shlok, Tilak Guru, Young Friends Urva, Ashley Moms Cricketers Jail Road, Brothers 11 Yayadi, Ravi Kadri, 7 Guys Friends Mugrodi, 11 Star Kunjat Bail. So these are all the donors of this tournament. YUVARATNA Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune in the sweet memory of late power star Puneet Rajkumar, and in his loving memory we are now organizing this tournament wonderfully in this Lords of Cricket ground Urva, and the fourth match of the day 2 of this tournament is now going on here. Second session of this match is now going to begin. 33 the target for Friends Kuttar. 33 the target for them, and their innings now going to begin. First ball of their innings is now coming up. Ali Roof Tech ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. First ball. This time, just price that one down to a deep mid wicket for a single. एक रन पहली गेंद पर लेने में सफल बल्लेबाज. गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा था और एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. तो इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार को बनाने हैं कुल मिलाकर 33 रन निर्धारित 6 ओवर में, और
जहां तक सवार है। कोंडेलता या क्रिकेटर्स कटील ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए थे निर्धारित 6 ओवर में। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, क्रीज के कोने से ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था। वाइड का इशारा अंपायर का। रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेंगे एक, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद अंदर की ओर आते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाला। गेंद जाती हुई डीप विकेट सीमा रेखा की ओर, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर इस वक्त सीमा रेखा के अंदर, जब तक गेंद को वो रोके 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और अंतिम क्षण में 3रा रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए। हालांकि 3रे रन के लिए नॉन स्ट्राइक रन से बल्लेबाज थोड़ी देरी से दौड़े थे, लेकिन यशस्वी हम यहाँ पर 3रा रन पूर्ण करते हुए गेंद को ठीक तरह से थ्रो को रिसीव करने में सफल। और इस बीच 3 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और इन 3 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। निस्संदेह पहले ही ओवर से कोंडेलता या क्रिकेटर्स कटील को एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त सख्त जरूरत, अगर उन्हें फ्रेंड्स को तार के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव बनाना है तो। और इस बीच लेग स्टंप से बाहर, और इस तरीके की गेंदबाजी निश्चित रूप से बल्लेबाज सामने वाली टीम के बल्लेबाज का मनोबल बढ़ाती है। और यहाँ पर लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 6 रन बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और सतीश एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर आती हुई गेंद को उछालना चाहा और गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, सीधे पहुंची शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद जबकि स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान, और गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है, वहां पर प्रोटेक्शन रक्षणा मौजूद था और एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, 33 द टारगेट फॉर देम इन 6 ओवर सेट बाय कोंडेलता या क्रिकेटर्स कटील। और सतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर और इस बीच मिसफील्ड और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन पर जब तक बैकअप हो बल्लेबाज के लिए दूसरा रन लेने का प्रयास और दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और इसी के साथ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो तीसरे अंपायर को इस वक्त कॉल दिया गया है और देखना यह है कि तीसरे अंपायर यहां पर क्या निर्धार लेते हैं। He's gone. He's fell just short of out of his crease. और जब गेंदबाज के हाथ से लगकर स्टंप्सों पर टकराए, बेल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज से बाहर रहा था। तो यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में और बल्लेबाज इस बीच आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए निखिल और पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है फ्रेंड्स को तार का। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फर्स्ट ओवर। So Mahesh, the number 3 batsman, is now comes out to the middle after the departure of Nikhil. और वो इस वक्त
नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए प्रदीप और गेंदबाज इस वक्त तैयार सतीश। गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच एक रन का इजाफा लेग बाय का इशारा अंपायर का। किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस श्रृंखला का बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यहां पर किया जा रहा है। यूट्यूब के जरिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब के जरिए इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण देखने के लिए। और यहां पर जहां तक सवाल है, इस ओवर के अंतिम गेंद का सिर्फ एक रन अंतिम गेंद पर मिला, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, सर्वाग्नि उर्वा विल टेक्स ओवर Rooftech Katipalla in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart before the end of this match and also complete the toss procedure. तो टीम फॉर्च्यून इनकी ओर से नया ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ। डेंजिल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, स्ट्राइक इस वक्त महेश के पास। प्रदीप इस वक्त माफ कीजिए स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, महेश ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और दोनों अंपायर्स इस बीच कुछ बातचीत यहां पर करते हुए, और कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। मैच नंबर 4 इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता है और कुल मिलाकर मैच नंबर 4 इस दिन का कहना पड़ेगा यहां पर खेला जाता है, और मैच नंबर 11 इस श्रृंखला का इस मैदान पर प्रगति पर। कल 7 मैचेस खेले गए थे, आज चौथा मैच इस दूसरे दिन का यहां पर खेला जाता हुआ, और इस मैच के बाद 4 मैचेस और खेले जाने बाकी है पूल ए के, और कुल मिलाकर शाम को पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। कल जो टीम विजेता हुई थी 5 स्टार अड्डूर, और आज कौन सी टीम यहां पर सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी देखना पड़ेगा। 5 स्टार अड्डूर का सामना करने के लिए स्विंग किया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दैट इज एन एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट हिट, और गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ आई थी, गेंद में पेस था, लेकिन जस्ट लुक एट द फुटवर्क, किस तरीके से पोजीशन तेजी के साथ लेते हुए गेंद को उछाला। हैव अ लुक एट दिस, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, into the gap just wide of mid wicket fielder, one bounce and into the fence for a boundary। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है प्रदीप के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो चौका इस वक्त पहली गेंद पर डेंजिल यहां पर दे चुके हैं, और एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगा चुके हैं प्रदीप। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार डेंजिल की गेंदों का, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बॉल्ड आउट, एंड दिस इज अ गुड कमबैक। Much straighter line, gone for a mighty heave on the offside area, not succeeded. The ball gets some extra quicker at the last moment, passed below of his bat and flattered his midland leg stump. तो एक बेहतर कमबैक यहां पर कर चुके हैं डेंजिल। देखिए किस तरीके से यहां पर विकेट प्राप्त हुआ था, गेंद को उछालना चाहता लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में, और उनके बल्ले के दाईं ओर से निकली, बल्ले को वंचित करते हुए और सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराई। दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, और प्रदीप आउट होकर पेविलियन वापस 8 रन बनाकर, और 13 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 13 for 2। Santosh, the newcomer, is now comes out to the middle as a number 4 batsman for Friends Kuttar। वो इस वक्त सामना करेंगे डेंजिल की गेंदों का। डेंजिल दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, स्क्वायर लेग फील्डर गेंद का पीछा करते हुए काफी लंबा दौड़ यहां पर लगाते हुए और गेंद को रोकने में असफल, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
खूबसूरती के साथ मिड लेग स्टंप पर गेंद को स्वीप किया था फ्रंट फुट पर जाने के बाद देखिए किस तरीके से इस बार गेंद को स्वीप किया था। फाइन स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर तैनात नहीं और शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर दौड़े थे जरूर, लेकिन लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद आसानी के साथ इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री इनटू द अकाउंट ऑफ संतोष और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और गेंदबाज डेंजिल की ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त स्वीप करना चाहा था, कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिड विकेट और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सिर्फ 15 और रनों की जरूरत विजय के लिए और कुल मिलाकर 25 गेंदें और बाकी उनकी पारी में। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो डेंजिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, महेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद महेश के लिए, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, रन लेने के लिए एक कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में पहुंच रही है। अपने निर्धार को बदलते हुए अपने कदमों को खींच लिए क्रीज पर। सुरक्षित 2 ओवर के समाप्त एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ फ्रेंड्स को तार 18 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 overs completed, it's 18 for the loss of 2 wickets for French Kutar, chasing the victory target of 33 in 6 overs. 15 to get now, just a 15 to get now in remaining 24 deliveries, and at this situation the target seems to be a much easier now for them. और जहां तक सवाल है तीसरे ओवर का तो काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए और गेंदबाजी इस वक्त सौंपी जा रही है लिखित के हाथों में और देखना यह है कि लिखित किस तरीके की गेंदबाजी इस ओवर में करते हैं। इस वक्त कोलकाता या क्रिकेटर्स कटील को चाहिए चंद कसे हुए ओवर, चंद विकेट इस मैच में कम बैक करने के लिए और उनकी तलाश में इस वक्त निखिल एक नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए। संतोष इस बीच सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस बीच गेंदबाज तैयार, फील्डिंग में जमावट। मिड विकेट फील्डर को इस वक्त कहना पड़ेगा स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इस वक्त तैनात किया जा रहा है काफी पीछे और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा आगे इस वक्त बुला लिया गया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ऑफ स्टंप से स्टीयर किया, ऑफ कटर गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, थोड़ी सी मिस फील्ड के बाद द फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 19 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और महेश इस वक्त सामना करेंगे लिखित की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ द बैकवर्ड स्क्वायर ड्राइव इस वक्त खेला था कवर पॉइंट पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और लिखित की ओर की अगली गेंद संतोष के लिए, हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ द बैकफुट गेंद को पुश करना चाहा था, पुश तो जरूर किया लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से संतोष यहां पर सामना करने के लिए तैयार। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत रही है, हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक वो यहां पर पहुंच सकते हैं। और गेंदबाज लिखित की गेंद, हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, पहले स्वीप खेल दिया और गेंद जब तक पहुंचे शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं तो 20 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। इस बार महेश का स्ट्रोक लेकिन प्लेसमेंट नॉट सो गुड और गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट पर। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फ्लाइटेड गेंद थी और इस फ्लाइटेड गेंद पर उछाल ना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को खेला जमीन के सहारे मिड विकेट पर महेश ने। और एक बार फिर से लिखित की गेंद महेश के लिए, ये गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर। 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 22 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और 11 रन चाहिए अब विजय के लिए। 11 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 3 overs with the required run rate of exactly 3.66 runs per over.
ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती. और इस बार गेंद को ढकेला डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं. और चौथा ओवर इनफैक्ट यहाँ पर शुरू हो चुका. फोर्थ ओवर स्टार्ट्स 24 नाउ, 9 to get and 17 balls remaining in overall calculation in their innings. और गेंदबाज की गेंद फुल टॉस. गेंद को इस वक्त उछाला मिड विकेट पर इनटू द गैप, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड है. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े. 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. और गेंद को जमीन के सहारे उछाला था फुल टॉस. गेंद को महेश ने इस वक्त डीप मिड विकेट पर 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रन. धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ फ्रेंड्स को तार. और चमत्कारी गेंदबाजी इस वक्त जरूरत कुंडलता या क्रिकेटर्स कटील को इस मैच में वापस आने के लिए. शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंचे, खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा फील्ड कर दिया गया. 7 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 15 और लक्ष्य काफी आसान इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार के लिए. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया. मिड ऑफ क्षेत्र पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा हो चुका है. It's 27 for the loss of 2 wickets. Still couple of balls left in this over. मनु गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. संतोष बैक ऑन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ना चाहा, नॉट क्वाइट मिड, लेकिन इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट. 1 रन मिलेगा और 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं कि सिंगल्स ही इस वक्त उनके लिए काफी हैं अपने टीम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए. तो इसकी वजह से वो सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए. और महेश इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इनटू द गैप गेंद को निकाला, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका दूसरा रन यहां पर पूर्ण करने का. तो 2 रन यहां पर पूर्ण हो चुके हैं. एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 30 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट विद दैट couple of runs and just 3 to get now in remaining 2 overs, and the target seems to be much easier now, much in fact easier now for them at this situation. तो जहां तक सवाल है इस वक्त फ्रेंड्स को तार बुलंदियों पर नजर आता हुआ. सिर्फ 3 रन चाहिए 12 गेंदों में. और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुंडलता या कटील का जहां तक सवाल है इस वक्त उन्हें एक घातक गेंदबाजी इस मैच में वापस ला सकती है, ऐसा कहना पड़ेगा. और चमत्कारी गेंदबाजी कहना पड़ेगा इस मैच में वापस उन्हें ला सकती है. सिर्फ चमत्कारी गेंदबाजी इस मैच में उन्हें वापस ला सकती है. पहली गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट पर संतोष ने. रन नहीं मिलेगा, ऑफ कटर गेंद थी और रन नहीं मिला. लिखित गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए. ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और फाइन लेग फील्डर चुके और 1 रन के साथ. और इस बार महेश एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. तो वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन जरूर जुड़ेगा और देखना यह है कि दूसरा रन भी जुड़ पाएगा या नहीं उनके खाते में. जस्ट वी हैव टू लुक एट द स्ट्राइकर एंड.
Not out. The decision came from the third umpire. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So couple of runs now added to the total and the scoreboard is now moving up to 32 with that couple. And now the scores are leveled. Just a single run they have to score for victory. और इस वक्त बल्लेबाज के लिए सराउंडिंग फील्डिंग इस बार उछालना चाहा महेश ने, चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और लिखित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए महेश के लिए. ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा. स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची और कुल मिलाकर इस ओवर में 3 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है. 9 गेंदें बाकी, 1 रन चाहिए विजय के लिए. लिखित दाहिना हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर और इसी के साथ द मैच इज नाउ ओवर. Comprehensive victory by 8 wickets for Friends Kuttar with 8 balls to spare in their innings and with 9 balls to spare in fact in their innings, and with that victory against Kondeltaya Cricketers Katil, they are through to the next round of this tournament. So Friends Kuttar are through to the next round of this tournament, defeating Kondeltaya Cricketers Katil by 8 wickets with 9 balls to spare. And now the next match is now coming up between Sarvagni Urva versus Roof Tech Katipal, and that match starts within just a while. Till then we are taking a short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. And now it's time for break. Thank you. धन्यवाद. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request Pradeep of Friends Kuttar to please report to the stage immediately to receive the man of the match award. He is adjudged man of the match because of his all-rounding performance in this match in batting and bowling. I request once again Mr. Pradeep of Friends Kuttar to please come on to the dais and receive the man of the match award from our organizers. And also request the captain of Kondeltaya Cricketers Katil to please to please report to the stage immediately to receive a memento from our organizer. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Right, it's the man of the match, Pradeep receiving a man of the match award along with the colorful jersey from a former cricketer of UFCA and one of the best wicket keepers of UNDERARM cricket, Mr. Jaya of UFCA, distributing the award to Pradeep of Friends Kuttar. So thank you very much and congratulations and best of luck for the rest of the tournament for Pradeep. And straight away we're moving on to our next match. One more good match is now coming up. Sarvagni Urva will take over Roof Tech Katipalla, and that match starts within just a short while. And so news is here from the center that the skipper of Sarvagni Urva, after won the toss, he elected to field first. And I request all the players to please start the match as soon as possible. We'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
I request extra member from Roof Tech Kadipala, please report here in commentary box immediately to identify the names of their players. So welcome back once again, and very bright sunny afternoon out here in this most beautiful UCG cricket ground. We are into the very important match. Sarvagni Urva takes on Roof Tech Kadipala in the free quarter final of prestigious YUVARATNA Trophy 2022. And proudly organized by Team Fortune in this most historical cricket ground in a memory of late power star Punit Rajkumar. Yesterday, the day number one, it successfully organized, completed, and in that Group A, the team which is qualified for the semi-final is Bondel Warriors. Their little correction, 5-star Adur. They qualified for the semi-final, and in this pool, wait and see, we're going to qualify for the semi-final. And the first semi-final will be played between the winner of this qualifier of this Group B and against 5-star Adur. Nakis, as always, the captain leading from the front. He came to bat as opener, along with him in non-strike Gazan. Azhar is a very good striker of the ball. So signal straight away coming from umpire Shiniket, and our scorer Satya Swarup receives the signal, and everything is get ready here for the free quarter final. It's going to be a very good match because the same teams which is played in BK Champions Trophy. Yes, it's a very interesting match because both the teams really played a super over in the previous BK Champions Trophy in the semi-final to qualify for the finals. And the same team, they are once again in a free quarter final in this tournament. Again, first ball, and Naki is quite nicely driven that one down to deep extra coverage and right in the gap. And before the fielder from wide-ish long off region to run across to his left to field the ball, ample time for Nakis to complete the couple of runs. Good start, positive start there from Nakis. He got a couple of runs because Sustan bowled far outside the line of off stamp. 5 men in the offside, 4 men in the on. Right arm over the wicket balls. This time good line. This time chance of run out as well. But Ajay in the negation missed it completely from his hand. What could be a certain chance of run out? A little bit misfield by Ajay at short mid wicket as he missed the ball completely from his hand. And Nakis got opportunity to come back for the second as well. 4 without loss of any wicket in the over number first in progress. Sustan with the jersey number 25 bowling right arm over the wicket. Bowls to Nakis. Nakis again good driven firmly down to deep long on region. Dhanraj the fieldsman there in the deep fumble, and look at Azhar here. Outstanding running between the wicket. Very good judgment of the run because seeing that Dhanraj little bit slow to react. Actually is a very good fielder in the deep long on. Maybe he's a little bit taking lightly. Little bit slow moment, so Azhar quickly realizing there is a couple of runs, and couple of runs in 3 deliveries for Nakis. Outstanding. Say 7 on the board, 6 on the board, little correction, and again driven that one down to deep long, and again the Dhanraj is in the picture. This time he's not really making a mistake, learning from the mistake quickly, and seeing that both the batsmen are looking for the second, so he's quickly moving towards the direction of the ball, fields the ball very quickly, returns the ball quickly. And there is no possibility of any extra run. Only singles, so 7 without loss of any wicket in the over number first in progress. What a fantastic match that was in a BK Champions between these two. The match is ended in a tie. Then in the super over, Sarvagni cricketers able to qualify. Will it going to be a chance here for both the teams? Will it going to Roof Tech can able to defeat Sarvagni? Right arm. Bowls some chip that run over the head of that mid wicket. They're running hard, looking for the second as well. But this time with a good throw coming from the fielder in the deep. So only 1 run. So with that single scoreboard was on to 8 on the board. Please note the fielding team and both the teams, you have to complete your 6 overs quota within 26 minutes. This time again drives that one down to mid wicket region, running hard, looking for the second. Definitely they will going to get because the long chase here for Dhanraj from deep long off to deep mid wicket, deep long on to deep mid wicket region. So excellent over here for Roof Tech Kadipala. They got a double figure in the first over itself. Sustan not looks like that much of
economical in the first over. He considered 10 runs in the board, 10 runs after completion of 1 hour, and wait and see how many runs they will go into score in remaining of 5 overs. So we're coming back to that, the 6 overs, 4 minutes for each over. That means 24 minutes plus 2 minutes of grace time will give unto you, will be allowed to you to complete within 26 minutes. Please cooperate with organizers and have to complete today 8 matches. So your cooperation is much required. And from the far end, Ajay brought into attack, the man who got a man of the series in the previous BK Champions Trophy held in UCG ground, which is organized by Birvirkudla Ashok Nagar Women's Wing. Very good tournament, successful cricket tournament organized in this UCG cricket ground. The first ball, it's away from the body. Azhar tried to play where he was standing, just to try to reach the ball by trying to reach the pitch of the delivery, but he's just standing away from the line of the delivery, so that that going to be a dot delivery. This time again went for the reverse save. Wicket keeper behind the stump. Jayant fails to collect the ball, so that by call by umpire. Trying for the reverse sweep in that occasion, Azhar, but ball missed the bat completely. The wicket keeper behind the stump, he also missed it completely, and scoreboard now moves on to 11 on the board without loss of any wicket. This time beautifully bowled. Again frustration for the bowler. What could be a certain chance of caught behind, because that ball is got outside edge of the bat. Wicket keeper behind the stump misses the opportunity to take the catch. That was a big deflection coming from the bat, and that's why that ball went very quickly and to the wicket keeper. This time drives Vedwan Azhar down to deep long on region. Again a fumble from the fielder. Oh, Dhanraj not really up to the mark today in this particular match. Little bit fumble again from him down at deep mid wicket, but this is just a single 13 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Ajay balls trying for the quicker one. Jayant fails to collect the ball. Chance of run. Oh, direct hit! And he's gone. Nakis. Now umpire Roland Pinto asking, referring for the third umpire. First he's raised his finger, but seeing that Nakis is just surprised by seeing umpire raising his finger, so that umpire is asking for the third umpire. Will it going to be out or not? So now third umpire Sriraj will go into see whether it's out or not out. But a fantastic throw coming from Jayant behind the wicket. Wide call by umpire. Wide call by umpire, so that already 1 run which is in the form of extra. If this run is completed, then it's going to be 1+1. A good throw coming from the field. Wicket keeper behind the stump, quickly moving towards his right and returns the ball. At that time, now they're in a different angle. They're providing the cameramans, the technicians, in the mixing department as well. It's a very good, talented young staff of King Sports Mangalore Rizwan in the mixing department, because that is a very important job. Whenever there's a live telecast, the mixing is definitely going to be very important to get some result, and they are having a different angle to get a result. And I want to see that if when the ball is hits the stump, whether the batsman's bat is in the air or not. That's what umpire out to see. If it is in the air, I think the batsman is out, and his bat is in the air, is out. So out is a call from third umpire Sriraj. So Roland Pinto knows, as already is given in a naked eye, seeing that, because so experienced, isn't it? Having a 37 years of experience, without, of course, this technique is came almost in 3 to 4 years back, not early than that. Before that, these all umpires giving the decision in a naked eye only, so they don't know exactly it's going to be out, but still they wanted to take the advantage of this technology.
only because of to satisfy the batsmen's. Sometimes batsmen doesn't know whether they are in or not, but they wanted to clarify because they are only looking towards save their wicket, to complete the run. So they're not really looking about whether it's a direct hit, whether it's a bat is in the air or not. That's why they wanted to get some help from a technicians. Again, lovely shot, beautifully driven down to deep, wideish long on region for a easy single. With that single, scoreboard now moves on to 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. So far it's a good over from Ajay, and runs are coming in the form of singles in this particular over. Now this man is definitely going to be a key player for Roof Tech. Izaz just came into middle number 3 batsman as a number 3 batsman and fails to contribute from the bat in the previous match, but he is a kind of a batter. Once he get in, he's definitely going to be a very dangerous batter for any opposition, so that he wanted to get a little bit time to settle down. Such a fantastic performer. I still remember his innings, some innings in the 3-4 years back. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So coming back to this, is dominated. That was a MPL, and which is really changed his career, and he become a accomplished batsman, especially in that particular tournament. Again, almost ball is little bit going down the leg stump, try to turn that on the onside region, deflected from the leg by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket. Very good over there from Ajay. Just 6 runs came from that over, and at the same time 1 run out taken place. Altogether after completion of 2 overs, it's a 16. Roof Tech Khadipala 16 for the loss of 1 wicket. Welcome back for the over number 3. So we're talking about Izaz. He's on strike now. He started his career by playing for Deadly Kankanadi, and in the present days they are not taking part in the cricket, but I think through 3 years, 4 years back, one of the top performer in the South Kent district, and those days Izaz really one of the top player along with Atif. He's also started his career for playing for Deadly Kankanadi. And by coming back to Deadly Kankanadi, the Deadly Boys Kankanadi will go into present DPL Season 1. Deadly Premier League 2022 will go into commence in coming March 28th and 29th. That's Monday and Tuesday. And went for the reverse sweep in this month, March. And 28th and 29th, the same venue, UCG Cricket Ground. Deadly Premier League 2022. So Sagar is brought into attack from the commentary box, and right arm over the wicket, ball Izaz again went for the reverse stroke. Ball is in there. Chance of run out in the non-strikers end, and easily done. I think it's a got out in the form of catch out. Yes, he does. It's a good decision. And bowler actually doesn't know anything about that because he was trying for the run out in non-strikers end. But I don't think Izaz is not really he's played any good cricket here, because he's trying and trying. First attempt is fails to make fails to hit a stroke by playing the reverse stroke. Second attempt also he fails. Still he is not really learning from his mistake. Third time he's attempting for that, and he got out. Coming back to that Deadly Boys Kankanadi, they are going to present cricket for fees, cricket for harmony.
DPL Season 1, Deadly Premier League 2022 Underarm Cricket Tournament. 6 owner icon team will going to participate in this league match. And that match will going to commence on March 28th and 29th. This time, lovely shot. Down long off, fielder man in the deep long off. Takes a comfortable catch. That's the one more wicket is back into pavilion of Roof Tech Katipalla. The back-to-back wickets are falling here. 16 for the loss of 3 wickets. Sarvagni cricketers are once again the back strongly in this game. Look at that one. The bowler bowled wide of the crease. Almost that ball is now little bit going down the leg stump, making a little bit room to play the shot. Lofted that one. Placement is not right. Straight to the hands of deep long off. Taken a comfortable catch. That ball is came in a comfortable height to take the comfortable catch by the fielder in the deep long off. The wicket number 3 is back into pavilion of Roof Tech Katipalla. Zunaid is the hero of the previous match. Is back into pavilion quite unfortunately. Is out for a duck. Is becomes a man of the match in the previous match, when Roof Tech defeated Foodland Osangadi in their first match. Now Sagar has got a very important breakthrough here in his 4th delivery. 5th delivery in fact. Now Azhar is on strike now. Ball is almost in the playing area of left-hander batsman. Just having an eye on to the umpire. He's just waiting umpire to give the wide, but umpire Shiniget is satisfied enough that to call this a fair delivery. This time big wide, absolutely big wide. Not only the wide, they're going for the run. Chance of a run out in a non-strikers, and direct hit certainly is going to be a close call for umpire Shiniget. And they've gone for extra run as well. 2 extras, and definitely it's going to be a bonus here for Roof Tech Katipalla. And with that couple of runs, they got 18 now for the loss of 3 wicket. From the commentary box, and Sagar with a short run up right above the wicket. This time chip that one. Going to be one more chance here for the fielder. Long off fielder is a busy customer. He takes one more catch here. Ganesh at long off, making no mistake at all. Look at that one. Unfortunately, it's the top edge. Try to whip that one onto onside region. He got a top edge, and look at that ball. He's going straight to the hands of deep long off. Ganesh making no mistake at all. The wickets are tumbling in a hurry of Roof Tech. 4 wickets back into pavilion. Look at Sagar here. He picked up all 3 wickets. Unless that one wide plus a single, it's going to be outstanding over. I think they got only 2 runs came from that over. That is in the form of extra. Otherwise, it was a fantastic over there from Sagar. 3 wickets in that over. And putting Roof Tech into a back foot now. So 3 overs completed. It's 18 for the loss of 4 wicket. And wait and see how well Roof Tech Katipalla will go into bounce back here. But so far, Sarvagni cricketers are dominating here. The runners of last the BK Champions Trophy, they're in the big gun in this free quarter final. And Gopi a little bit shackling, not shackling start, especially the last over. They lost 3 wickets. A fantastic over from Sagar. And now if the Roof Tech wanted to get some good score, they have to play a very good cricket in the remaining 3 overs, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा पिछले ओवर में जो 3 विकेट गिर चुके हैं, इस वजह से रूफ टेक के लिए ड्रॉबैक जरूर इस वक्त हुआ है, लेकिन मौका जरूर है बचे हुए 3 ओवर में उन्हें इस 3 आघातों से संभल कर आगे बढ़ने का। तो यहां पर देखते हैं 3 ओवर में उनके बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए कौन सी रणनीति यहां पर अपनाते हैं। ये गेंद धीमी लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पर छिड़तानी अंतिम क्षण में करना चाहा था चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त अजय, गेंद को इस बार तेज लेग कटर गेंद फेंकी थी और काफी वैविध्यमय गेंदबाजी यहां पर करते हुए अजय, और काफी चतुर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी गेंद को अंदर की ओर लाते हैं तो कभी कभी बाहर की ओर निकालते हैं, और कुल मिलाकर ऑफ कटर और लेग कटर गेंदबाजी करने में काफी माहिर हैं। और एक बार वो अपना लय अगर प्राप्त कर लेते हैं तो निस्संदेह बल्लेबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता वो रखते हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे अपने लय को, रिदम को वो यहाँ पर प्राप्त करते हुए 2 बेहतर गेंदें यहाँ पर भेज चुके हैं। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी कहना पड़ेगा
यहाँ पर रूफटेक काटीपल्ला अपनी सही राह को तराशता हुआ और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और इस बीच अजय अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ओवर राउंड द विकेट इस वक्त यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा। इस बीच दिशाहीन गेंद उन्होंने फेंकी थी और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह यहां पर रन्स चाहिए रूफटेक काटीपल्ला को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त खेल दिया, स्कूप कर दिया। इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची जब तक 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। तो यहां पर मैच इस वक्त प्रगति पर सर्वाग्नि उर्वा और रूफटेक का काटीपल्ला के बीच में और अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद अंदर की ओर आती हुई और अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त खेल दिया ऑफ साइड पर गली पर और ऐसा कहना पड़ेगा पैर से लगकर गेंद निकली थी। इस वक्त लेग बाय का इशारा अंपायर का और लेग बाय की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सर्वाग्नि उर्वा के और अजय इस वक्त गेंदबाजी करते चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एंड ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट। ऑफ द बैकफुट गेंद को पंच किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच जो काफी लंबा अंतर है उस अंतर से गेंद को इस वक्त स्कूप किया खूबसूरती के साथ बल्लेबाज अजहर ने और इस चौके की बदौलत देखिए किस तरीके से गेंद को स्कूप किया था। इस वक्त एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। अजहर दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स scored by the batsmen of Rooftech Katipala, still searching for the right track. Agla match, the next match will be played between Fastech Warriors versus Friends Kuttar, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Fastech Warriors ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ तो 27 for the loss of 4 wicket. 4 overs have been bowled. 2 overs left in their innings और गेंदबाज इस वक्त विजय गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और अजहर जो कि आरंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, उनके सामने 4 विकेटें गिरे, वो 4 विकेटों के पतन के गवाह हैं और यहाँ पर उन्हें एक पारी खेलनी है जो उनके टीम को सही मंजिल तक पहुंचा सके और उस बेहतर पारी की तलाश में वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी, अजहर दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा और इस बीच ये विकेट यहां पर गिर चुका है। अजहर की पारी समाप्त, 5वां विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, भुगतान उन्हें करना पड़ा और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और बढ़ चुकी है रूफटेक काटीपल्ला के लिए। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। तो 5 विकेटें 27 रनों पर गिर चुके हैं और निस्संदेह इस वक्त टेस्टिंग टाइम कहना पड़ेगा कंटिन्यूइंग हियर for the batsmen of Rooftech Katipalla. तो निस्संदेह ये श्रृंखला का आयोजन किया गया है दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार जो कि एक बेहतरीन अभिनेता रहे कन्नड़ा सिनेमा के और कन्नड़ा सिनेमा इतिहास के, जो बेहतरीन फिल्मों में वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने परिपूर्ण अभिनय दिया था। और खासकर कल मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था कि बिट्टा द हू विच वाज रिलीज्ड इन 1976 ही गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, चाइल्ड एक्टर अवार्ड फ्रॉम द रोल ऑफ रामू। और जहां तक सवाल है उसके बाद उनकी कई फिल्में चाइल्डहुड में आई थी जैसे कि वसंत गीता विच वाज रिलीज इन 1979 और खुद मैंने उस मूवी को देखा था प्लैटिनम थिएटर में यहाँ पर। और उसमें एक गाना आता है हाय आता ये संजय आनंदा तुम भी रलो, वो गाना
उस दौर में काफ़ी मशहूर रहा था। और उसके बाद ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು और कई फिल्में उनकी आई थी। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया डीप कवर पॉइंट पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, तो 1 रन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स उस सस्पेंस थ्रिलर मूवी को कौन भूल सकता है, यार इवानो, विच फीचर्ड बाय श्रीनाथ एंड सरोजा देवी। इसमें मास्टर लोहित के नाम पर पुनीत ने अभिनय किया था और वो फिल्म सस्पेंस थ्रिलर मूवी रही थी जो कि 1984-85 में मेरे ख्याल से रिलीज हुई थी। और कई बेहतर फिल्में उनकी आई थी जैसे कि चलिसुवा मोडगळु और 2 नक्षत्रಗಳು, ये सब फिल्में मैंने देखी थी यहीं पर मंगलोर में थिएटर्स में। और इस बार गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 पर। तो यहाँ पर जैसा कि वो भी एक गाना उनका बहुत ही मशहूर रहा था, काणदंते मायवाद नम्म शिव कैलास ಸೇರಿಕೊಂಡನು। It was from चलिसुवा मोडगळु which was released in 1983 when I saw that film in the Platinum Theatre। और शायद मेरे दोस्त सतीश कह रहे हैं कि बेस्ट सिंगिंग एक्टर का अवार्ड उन्होंने बेस्ट इनाम जीता था उन्होंने स्कूल में उस गाने के लिए। काणदंते मायवाद बेहतरीन गाना था और सतीश को हम यहाँ पर बधाई देते हैं कई सालों बाद उसके लिए। और यहाँ पर ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रहा, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक का सवाल है ओवर नंबर 5 उनकी पारी का यहाँ पर फेंका जाता हुआ। विजय इस वक्त अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए और इस ओवर में काफ़ी वाइड्स वो यहाँ पर फेंक चुके हैं और इस बीच अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया है, इस बार मिड विकेट पर गेंद पहुंचते हुए और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह इस वक्त रूफटेक काटीपल्ला को रन चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो विजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इकबाल सामना करने के लिए तैयार रहा और दर्शकों की तादाद में कुछ हद तक बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आती हुई। मैदान के चारों ओर अब दर्शक नजर आते हुए खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और विजय इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर की समाप्ति विजय की, 5 ओवर की समाप्ति 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स फॉर रूफटेक वॉरियर्स। तो एक बार फिर से लौटते हैं पावर स्टार पुनीत राजकुमार के जिंदगी में। तो वहां पर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया परशुरामा। इट वाज रिलीज्ड इन 1988-89 जिसमें उन्होंने करीबन 15-16 साल की उम्र में डॉक्टर राजकुमार के साथ उन्होंने काम किया था और उस मैच में उस फिल्म में एक बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाया था। और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया राइट आफ्टर 14 इयर्स अपू। इट वाज रिलीज्ड इन 2001-2002 आई थिंक सो। तो निस्संदेह कन्नड़ फिल्म रंग के इतिहास में उनका नाम फक्र के साथ यहाँ पर लिया जाएगा, पुनीत राजकुमार। और हम सब सर्व क्रीड़ा प्रेमी और सब लोगों की ओर से उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करते हैं और उनके इस मधुर याद में इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून ने युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम पर। और यहाँ पर यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई, हालांकि बचपन में मास्टर लोहित के नाम से वो उन्होंने फिल्मों में काम किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। भूमि के बंदा भगवंता and that was an absolute outstanding movie which featured by लोकेश, जिसमें उन्होंने कृष्ण का किरदार अदा किया था। और यहाँ पर गेंद को खेल दिया था 1 रन और उसमें एक गाना आता है भूमि के बंदा देव के कंदा ना केलेनो ना कापाड़ेनो। वो गाना एक्चुअली इतना सेंटिमेंटल गाना था। वो एक राजा जो रहता है लोकेश, उसका मन परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद वो श्री कृष्ण का भक्त हो जाता है वहां पर। तो इस बार गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड दैट सिंगल इंक्रीजिंग द टोटल टू एंड ऑफ कोर्स 1984 भक्त प्रहलादा। आई सॉ दैट मूवी इन सुचित्रा मूवी इन मैंगलोर और उसमें भी एक बेहतरीन किरदार उन्होंने अदा किया था।
और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, 1 रन का इजाफा। तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ದೇವಕಿ ಕಂದ, ನಾ ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सॉन्ग। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और रन्स नहीं मिलेंगे इस बीच और स्कोर रुक चुका है 36 रन। अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और कुल मिलाकर गेंदें इस वक्त बाकी हैं सिर्फ 2 और देखते हैं इन बचे 2 गेंदों में उनके बल्लेबाज यहां पर क्या करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन नहीं, वहां पर लपक लिया गया है फील्डर द्वारा। गेंद को इस वक्त क्लियर करना चाहता लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद को खेला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं और स्ट्रोक में उतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। हवा में डोलती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑफ पर और लॉन्ग ऑफ पर गेंद यहां पर लपक ली गई है और इस बार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड नाउ जस्ट अ बॉल टू स्पेयर इन देयर इनिंग्स। सिर्फ एक गेंद बाकी अब उनकी पारी में और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, खादर हैज नंबर 8 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर रूफटेक काटीपल्ला और यहां पर सामना करने के लिए तैयार टीम फॉर्च्यूनेट की ओर से सुस्तान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज इस बार chip karna chaha, not quite mid wicket, he gets in a single for that and with that single the innings is up, their stipulated overs are completed and Ruftek Katipalla finished with 37 for the loss of 6 wickets after completion of 6 overs and now the target for Savagni Urwa is 38. They have to score for victory and as far as the required run rate is concerned, exactly 6.33 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets and let's see can they reach the target or not। 38 रनों की जरूरत निर्धारित 6 ओवर में इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए 10 विकेटों की मदद से उन्हें बनाना है 38 रन। 38 द टारगेट फॉर देम एंड द इनिंग स्टार्ट्स नाउ विद इन ए जस्ट शॉर्ट वाइल। तो यहाँ पर उनकी पारी की शुरुआत होगी, तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम यहाँ पर वापसी करेंगे जब इस मैच का द्वितीय सत्र यहाँ पर शुरू होगा मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में सतीश के साथ। और अब वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi, and welcome back for the chasing. So Roof Tech have to depend, not a big total in this match. They have to depend 37 and not to get 38. And target is 38 for the opposition, and they have to depend this total in stipulated 6 overs. And we'll see how Sarvagni cricketers Urva will going to get this 37. So not a big total, a moderate total to get to qualify for the quarter final. But you cannot underestimate the bowling department of Roof Tech. And so far they came into this level because of they got some fantastic young bowlers in the side. They definitely the fighters. They can bounce back. They can fight back in this match. The first ball, right arm over the wicket. Safwan this time a little bit going down the leg stump again. A chance of run out. The throw is not up to the mark from the fielder, so that they cross off for a single. It's the inside edge of the bat of Shawan. The captain is up the mark with a single, and with that single they started their journey. And wait and see how difficult this journey is going to be for Sarvagni, and wait and see how Roof Tech will going to take this journey for the opposition. It is going to be easy or tough, but they definitely wanted to make it tough by bowling some good overs. They can make it tough. And from the commentary box, and Salman, little bit change in first over. The Salman is on an attack. Oh, what a delivery that one! That's a start what they wanted here. Jayant, I don't think it's I don't think it's a good thinking. It's definitely going to be a bad thinking from Jayant, because you're playing your first delivery and trying for the such a unorthodox and difficult strokes against the face of Salman. You have to pay the penalty for that without seeing his single deliveries. He's just looking for the reverse. Look at that one. That ball is really came in such a phase that Jayant has got no answer. Might be a little bit, he's got extra bounce when he was going for the reverse stroke, and beaten by that ball. Hits the stump. It's the first wicket is back on the pavilion of Roof Tech. Little bit correction of Sarvagni cricketers Urva, and that's a wicket. That's the kind of start what Roof Tech wanted to get in this big match. New batsman Dhanraj, the busy customer, and I think is a perfect the player, especially in this condition when it's a rotation of strike is required for Sarvagni cricketers. Wait to see how Dhanraj will go into get the partnership along with his captain. Dhanraj, famously known as the Black Tiger of Urva, it's a very popular name. The first ball, again, just like what Jayantis did, he wanted to continue that mistake here, but luckily that ball is going down the leg stump. And but he's a kind of batter who can play such kind of cricketing stroke regularly. Very strong in the square of the wicket, behind the wicket. And so far, Salman is just enjoying his bowling with the extra phase in his bowling. Maybe the direction of the wind is helping him to get some phase. That's a good thing by the captain, asking him to bowl it from this end. Again, a little bit down the leg stump, but it's well within the reach of the batsman now. So far, it's a quiet over. Excellent start from the bowling from Roof Tech Katipala. I just mentioned earlier, if it is a taking this lightly, this total, the Roof Tech definitely they will going to make this more tougher for the opposition with their bowling effort. Salman, right arm over the wicket, change of phase. This time he got that one just over the infield. Wrong chase here for the fielder. Giant ball just before the ball will go into cross the boundary. The good work they have done by the fielder. And look at the running between the wicket here from Dhanraj and his captain. They completed 3 valuable runs. It's a very good chase. Look at that one. Commitment for the fielder. Just inside the boundary line, they're able to pull the ball inside the boundary line. And one fielder, this is nice to see that the 3 fielders behind the ball. When it's a 3 fielders behind the ball, it's so easy. Whenever the one fielder is pulling the ball inside the boundary line, then one fielder will go in to pick that one. And good commitment. So 3 runs for Dhanraj, valuable 3 runs, and 4 on the board for the loss of 1 wicket. Salman changing his angle, coming around the wicket. Last and final time it's over. Drives that one straight to the hands of mid-on. It's, oh my goodness, oh my word. Oh, what could be a certain chance here? The Iqbal fields the ball, returns the ball, but Salman couldn't manage to gather the ball. Might be a little bit wide throw, but I think in this level you have to take the throw.
And Salman just missed the throw, and the batsman just survived from that run out. And once again, special thanks to Mr. Gopi for his all explanation about late Paul star Punit Rajkumar. It's been outstanding memory power, Gopi. Hats up to you. It's an excellent one. For the next match, I request Fast Tech Warriors as well as Friends Kutar, please get ready and sign the official chart as soon as possible. And after that explanation, Gopi, you just missed one, that which is I think the Punit is got state highest civilian award, Karnataka Ratna for Punit, but it's a first mostly. That means it's after that the state government is announced that Karnataka Ratna Award Maranatara Prasasti in Kannada, and a perfect word for that, and he got Karnataka Ratna Award as well after his death, and that was happened in November 2021. So outstanding career. Maybe it was a short career, but it's a short and sweet career, one must say, of Punit Rajkumar. More than he's a good actor, he's a very good human being. That's why he is a lot of popular. Each and everyone loves him, Punit Rajkumar. It's very difficult to forget him. So that's why I think it's a right strategy from Team Fortune Mangalore to organize a cricket tournament in the name of Punit Rajkumar. So leg by call by umpire, the start of the over number second, and this time the captain tried to swing that one down to mid-wicket region, missed it completely, but he got a single for that, and with a single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. So current run rate is a 5.14 runs per over. The required run rate is now slowly creeping up. That's what Rooftech wanted to do. They have to increase the required run rate in each and every over so that they can put some pressure on to the batters of Sarwag Nirwa. From the far end, right arm over the wicket, soften balls. There's some top edge ball is in there. Iqbal is underneath it. Dhanraj is back into pavilion. Try to go over the top. He's got a leading edge in the negation, and Iqbal just a couple of steps here wanted to go back to take that catch. Look at that one. He's just try to hit that one on over the mid wicket, but unfortunately that ball is landed into the hands of Iqbal down at short mid on. The wicket number 2 is back into pavilion of Sarwag Nirwa. And suddenly this tournament is played in the name of YUVARATNA trophy. And I think YUVARATNA is the last movie of Punit Rajkumar. Before his death, the 1 year back, that movie is released in the same, that I think in the Suchitra Theatre. And that was a box office hit movie from YUVARATNA, Punit Rajkumar, late Punit Rajkumar. And he got a lot of hit movies. Even though 29 movies he played a major role, but all are top movies by late Punit Rajkumar. From the far end, right arm over the wicket balls. This time again, try to break the shackle again. Jayan did a correction. The captain wanted to get some big stroke here, Shravan, but not really getting that one right from the middle of the bat, because the bowler's not really allowing the batsman to get for the big, to settle for the big shots. So far is a good in this particular over. 2 young bowlers are doing a job here for Rooftech. In the first 2 overs, it's definitely going to be very, very tough for the bowlers to stop the batsman from the big runs. I request the fielding team, please make it fast. We are already running out of time. Please cooperate with the organizers. 7 for the loss of 2 wicket. Now, maybe that thinking about the kind of field set is required for Ajay. Is a danger batsman. Can hit some big shot. He can be very dangerous. If he stay for at least 3 to 4 hours, he can change the complexion of the match. And he's just exposed his batting ability in the previous tournament, BK Champions Trophy. He's totally exposed his strength. What can he able to do from his bat?
Now he is facing Safwan. Safwan from the far end. Right arm over the kitty bounce. This time lofted. That's what I'm talking about. He's a so dangerous batsman. The ball is hitting that one into deep extra cover for a huge six. That ball almost hitting the floodlight stand. Look at that one. That was really a glorious shot. One of the difficult stroke to play in the books. Absolutely terrific striker of the ball. In the previous BK Champions Trophy also, he played some similar cricketing stroke. Look at that one. Width is offered. You can't ball that line for him. You can't give him a width. He will definitely going after that ball. What a tremendous striker of the ball. Ajay score jumped into 13 for the loss of 2 wickets. First time Safwan doing a mistake here in this over. 3 balls, he bowled well. 1 bad deliveries. The punishment straight away from the batsman. Safwan from the far end. Bowling with a short run up. Right arm over the wicket. Again going down the leg stump. Going to be by straight away frustration. That kind of scenario you can see every time whenever the batter's going for the picking of a 6 in the previous delivery. The next delivery, the bowler's little bit of frustration and pressure, feeling the pressure. He bowled a wide down the leg stump. 14 for the loss of 2 wicket. In the over number 2nd in progress. 24 required, 26 balls remaining. This time again Ajay looking for the one more expansive off drive, but this time he didn't got that much of timing behind the stroke. A little bit frustrated because he can play that shot quite beautifully. One of his favorite inside out. 14 for the loss of 2 wickets. Safwan, good comeback. 24 required. The last time in this over, Safwan from the far end. Right above the wicket. This time going to be a good try. Absolutely good attempt by the fielder. And they're coming back for the second as well. If he able to take the catch, I think it's going to be one of the best catch. And even Roof Tech has got the opportunity to bounce back to this match. Look at that one in a replay. Right arm over the wicket to slashes that one. And ball is traveling in the same area, but not that much of good enough height in that occasion. But look at the effort from the fielder. Just extending his left hand to take the catch. Because he's tried to take that in the left hand, that's why he couldn't manage to hold the catch. But he able to stop the boundary. But umpire want to see whether it's a boundary or not from a third umpire. Score like little correction. Yes, it is. Umpire Roland Pinto asking for third umpire to refer to third umpire to see whether it's a boundary or not. But it's a naked eye. It looks like a safe, but we can't say anything in because sometimes it's very difficult to tell. So that they wanted to get some help from the technicians of King Sports. So far they're outstanding, especially in the department of the run out decision, stamp out decision, even sometime deciding whether it was a boundary or not. They've done a great job so far. That was looks like it's a one time it looks like it's a very good save from the fielder there. But after he is pulling the ball, we have to see that whether the ball is landed inside the boundary line or not. That's what umpire have to see. Of course, there is a spectators because some spectators their feet is inside the boundary line. That's sometimes it's a problem. That's why every time he's asking here, umpires please sit outside. It's a save. So umpire Sriraj, after examining that one, and they got the enough evidence that ball is not really touched the boundary line. Good save by the fielder. So 22 required now.
30 is the target. Salman to continue from the commentary box end. And Captain Shravan is on strike now. Ball is almost going down the leg stem, swinging his bat, missed that completely. It's going to be a one more leg by. With the addition of that leg by, scoreboard moves on to 17 for the loss of 2 wicket. And 23 balls remaining. 21 more runs required for the victory. So far, it's going to be a very good cricket here going on. Both the teams has got opportunity to win the match, but it looks like in the naked eye, Sarvagni there in upper hand. Ajay back on strike now. Going down the leg stamp, going to be a wide here, and with that wide, one more run added to total. 18 for the loss of 2 wicket. Now 20 required for the victory, and 23 balls remaining. Salman, hero of the previous match. Right arm over wicket balls. That was a beautiful delivery indeed. Again, Ajay looking for the expansive drive. Need to be very careful whenever the ball. So Salman sometimes is ball with some good face. It generates some good face in the bowling. So that going for the big shot against his face suddenly is not that much of easy. And here is Salman bowling. Right arm over wicket balls. This time he chipped that one onto the stand. Oh, Iqbal not quite able to field the ball properly. Misfielded that one. And so that Ajay complete the single. Then with that single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 2 wicket. Ajay started his career by playing for his home team, Mukhya Prana Cricketers. Again, they're going for a big shot batsman. One more single in the form of leg by. Coming back to Ajay, he is the player of MPC Bajilikeri. Then he is matured after representing Hanuman Cricketers, especially in the 30 overs format of the games. Then he represented Hadi Maheshwar Cricketers as well. And so far, when he was represented this team, Sarvagni Cricketers, he showcased everything, the ability which is really coming out, especially in the department of batting. And he is matured as one of the best all-rounder now for Sarvagni. 21 for the loss of 2 wicket. 18 runs required for the victory. And they got another 20 balls to... This time drives that on Shawan down to deep backward square leg region, but not more than a single. Good field placement by Salman, straight on the spot. And one more over completed. Completion of over number 3, chasing 38 to win this match. Sarvagni Cricketers Urva are 22 for the loss of 2 wicket. Now they have to get another 16 runs in remaining 18 deliveries. And unless any good over go pitch, looks like Sarvagni Cricketers, they're cruising towards a victory. And looks like the body language, the level of confidence is going to be very high, because they are the runners of BK Champions Trophy as well. So having that much of a level of confidence, especially the Ajay is the one who got a man of the series in that particular cricket tournament. He's the one is responsible for that success of Sarvagni Cricketers. But having in the middle, I think Rooftech captain not really not having any what you can out of the trouble. He knows that his wicket is going to be very, very important if they wanted to back into this game. But so far, I think Sarvagni Cricketers are driver's seat to win this match. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, जब तक अजय क्रीज पर मौजूद रहेंगे, परेशानियां बरकरार रहेंगी रूफटेक के कप्तान के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले उनके गेंदबाजों के सामने ये मुद्दा ठहरता है कि यहां पर अजय का विकेट वो उखाड़े। तो इस वक्त स्कोर है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 रन चाहिए 18 गेंदों में, और मैं समझता हूं बाउंस बैक करने के लिए यहां पर उन्हें इस वक्त कसे हुए ओवर्स और चंद विकेट यहां पर उखाड़ने होंगे रूफटेक के गेंदबाजों को। लेकिन मौका जरूर है बाउंस बैक करने का, और देखते हैं आने वाले ओवर्स में उनके गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर अजय दौड़ पड़े, निशाना टकराया, लेकिन दोबारा उसी गेंद से उसी फील्डर से बैकअप होता हुआ यहां पर, और इस बीच सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद निकली थी इस वक्त इनसाइड एज होने के बाद, और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं सफान। 4था ओवर शुरू हो चुका सर्वाग्नि उर्वा की पारी में। तो यहां पर जयंत और धनराज पेविलियन वापस लौट चुके हैं। श्रवण और अजय क्रीज पर मौजूद, और
श्रवण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज सफान की ओर की अगली गेंद का दाहिना हाथ ओवर द विकेट। इस वक्त सफान यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्रवण के लिए गेंद को उछाला। इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद जाते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले के गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 24 now for the loss of 2 wickets। तो यहाँ पर 24 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज एक बार फिर से सफान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 7 से 8 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि पूरी तरह अपील जरूर लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फास्ट ट्रैक वारियर्स ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಲಿದೆ। ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। So 25 for the loss of 2 wicket। तो इस वक्त 13 रन चाहिए विजय के लिए। 13 to get now and this is the 4th over in progress in their innings। गेंदबाज सफान एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद उछालना चाहा गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची। बेहतरीन गेंदबाजी और इसी तरीके की गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने के लिए इस वक्त गेंदबाज को। और इस ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दिया है सफान ने और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और इस बीच कहते हुए अपने टीम के दूसरे कुछ खिलाड़ी से कहना पड़ेगा सलाह मशवरा इस वक्त करते हुए और तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अजय और सफान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 14 गेंदें बाकी हैं। 13 रन और चाहिए विजय के लिए। गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार चिपकी है लोगों पर लेकिन फील्डर वहां पर कैच को लपकने में सफल नहीं हुए या नहीं देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नहीं हुए। he collected that by after one bounce। He collected that one after one bounce और निश्चित रूप से जैसे ही गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया आफ्टर फर्स्ट बाउंस उन्होंने गेंद को थ्रो कर दिया था नॉन स्ट्राइक रेट पर और यहाँ पर देखिए जस्ट कलेक्टेड दैट वन। Yes, collected that one after one bounce। क्लीन कलेक्शन यहाँ पर हुआ था और जहाँ तक सवाल है उन्होंने खुद कहा कि जी नहीं ये यहाँ पर कैच नहीं लिया गया है। आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को कलेक्ट किया गया है। बेहतरीन क्रिकेट स्पिरिट इस वक्त दिखाते हुए और स्कोर बढ़कर यहाँ पर पहुंच चुका 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। इन फैक्ट सफान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज श्रवण इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं। 12 रन चाहिए 13 गेंदें बाकी और सफान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल करना चाहा चूंकि पूरी तरह गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी और इस ओवर की बदौलत यहाँ पर सफान का इस ओवर की बदौलत अब मैं कहता हूँ मैच लगभग बराबरी पर आकर रुक चुका है। 12 गेंदें बाकी हैं और 12 रन चाहिए विजय के लिए। 16 रन बनाने थे 18 गेंदों में और इस ओवर में सफान ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की। सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा द मैच नाउ स्टैंड्स इन अ बैलेंस। और जहां तक अगले मैच का सवाल है फास्ट ट्रैक वॉरियर्स और फ्रेंड्स कुत्तार के बीच में अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ एक बार फिर से कि कृपया दोनों टीमों के खिलाड़ी अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और जहां तक इस मैच का सवाल है तो संघर्ष यहां पर जारी है और दर्शकों की तादाद इस मैदान पर बढ़ते हुए अब मैदान के चारों ओर नजर फिराया जाए। अगर जहां पर छांव दिखाई दे रहे हैं घने वृक्षों के छांव उस छांव तले यहां पर दर्शक इस वक्त बैठे हुए मैच का खामोशी के साथ मुआयना करते हुए। तो निस्संदेह बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2022 जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति यहां पर कर चुके हैं टीम फॉर्च्यून और दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार इनकी मधुर याद में। और कुछ देर पहले हमने पुनीत राजकुमार के फिल्मों के बारे में जिक्र किया था। तो निस्संदेह भारतीय फिल्मी इतिहास में जो कन्नड़ फिल्म इतिहास जो महत्व रखता है वो अद्वितीय है और यहाँ पर कन्नड़ फिल्म इतिहास में निस्संदेह पुनीत राजकुमार का नाम फक्र से लिया जाएगा। और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए खादर दाहिने हाथ ओवर द विकेट बाएं हाथ राउंड द विकेट। ओवर की पहली गेंद ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा अजय ने रन के लिए दौड़ पड़े शॉर्ट मिड विकेट पर क्लीन कलेक्शन थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का।
जोखिम भरा रन, लेकिन यशस्विता इस बीच बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रन। नेक टू नेक फाइट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त जारी है, और इस बीच बल्लेबाज अजय और शरण कुछ बातचीत करते हुए कि बल्लेबाजी की रणनीति के बारे में कि अगले गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें अपनानी चाहिए। और इस बीच खादर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो श्रवण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार खादर की गेंदों का। बाएं हाथ राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग, मच स्ट्रेट लाइन, ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता चूंकि, और गेंद को विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे दूसरे प्रयत्न में फील्ड कर लिया, तो स्कोर यहां पर रुक चुका है। और अब रन से चाहिए 11, गेंदें बाकी हैं 10, और अब स्ट्रेट अवे कहना पड़ेगा, कुछ हद तक दबाव बल्लेबाज के ऊपर, और देखना है कि अगले गेंद पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। लेकिन यहां पर एक करारा स्ट्रोक निस्संदेह पूरी तरह सर्वाग्नि उर्वा को इस मैच में वापस ला सकता है। और जहां तक रूफ टेक का सवाल है, इस वक्त डॉट गेंदों की उन्हें सख्त दरकार, यहां पर चंद डॉट गेंदें निश्चित रूप से बल्लेबाज के ऊपर दबाव को इस वक्त बढ़ा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले गेंदों में। गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज श्रवण इस वक्त गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद बाउंड ऑफ हिज लेग्स, और इस बार गेंद उनके पैरों के बीच से निकली थी, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद अलोंग द कार्पेट गेंद थी, और सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, और यहां पर ये विकेट गिर चुका। सतीश में समझता 2 लगातार डॉट गेंदें और सीधा इस वक्त दबाव बल्लेबाज के ऊपर। देखिए किस तरीके से इस बार गेंद गई थी, कुछ हद तक ज्यादा हद तक गेंद लगभग जमीन के सहारे आई थी, और गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, अपने दोनों पैरों के बीच में अंतर छोड़ा, और दोनों पैरों के बीच से गेंद निकलकर सीधे जा टकराए मिड और लेग स्टंप पर, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है श्रवण का। तो अब 9 गेंदें 11 रन, और मैं समझता हूं कुछ और डॉट गेंदें निस्संदेह सर्वाग्नि क्रिकेटर्स को और मुश्किल में इस वक्त ढकेल सकते हैं। Exactly, Hope. The struggled innings of captain is comes in hand. He really struggled, and from the first over itself, he's not really getting the ball from his bat. He got only 6 runs, I think. For that 6, he played so many deliveries. That's why what could be a very easy victory for Sarvagni cricketers, because of the captain is not really playing his captain knock, and especially in the last this over, Gopi, after playing 2 dot balls, then throwing your wicket means putting some pressure for the incoming batsman, isn't it? When it's going to be a 12 to 12, and I don't think it's going to be that much of a tough one. When it's a ball less and required run is more, then straight away the pressure for the incoming batsman, because 1 or 2 dot ball here onwards putting them into great pressure. And that's what the bowler I have to do here. And so far, I think Kadar in the previous match also is bowled very well. And he's the one definitely can change the complexion of the match if he bowl another 2 deliveries with a good line and length. बिल्कुल सतीश, जैसा कि मैंने और आपने कहा, अगले चंद और डॉट गेंदें निस्संदेह सर्वाग्नि उर्वा को और मुश्किल में डाल सकते हैं, और इस वक्त हर गेंद पर रन बटोरना जरूरी बन चुका है सर्वाग्नि उर्वा के लिए। नए बल्लेबाज प्रदीप का आगमन यहाँ पर हो चुका है, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद नहीं, और अगली गेंद लेकर तैयार खादर, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फाइन ओवर इन रूफ टेक पॉइंट ऑफ व्यू. Just a single run conceded in the first 4 deliveries, and now the pressure is now on the batsman. 8 गेंदें अब बाकी हैं, रन से चाहिए 11. 10 for tie, 11 for win. और यहां पर कुछ बातचीत एक बार फिर से जारी है, गेंदबाज खादर और खिलाड़ियों के बीच में. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 8 balls and 11 runs. तो बाएं हाथ के गेंदबाज खादर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और प्रदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और देखना यह है कि इस गेंद पर प्रदीप किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हियर ही बॉल्स
दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, गेंद को निकाला है, एक रन मिलेगा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, दूसरा रन नहीं मिलेगा, काफी वाइड थ्रो और बल्लेबाज दूसरे के लिए दौड़ पड़े और अजय आसान सा रन आउट यहां पर गवा चुके हैं। दैट वाज अ सर्टेन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड अजय ऐसा कहना पड़ेगा अपने उम्मीदों को छोड़ चुके थे यहां पर। और देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, काफी वाइड थ्रो, विकेट कीपर पहुंचे, गेंद को थ्रो किया गेंदबाज के हाथों में, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटता हुआ और यहां पर 2 रन मिल चुके हैं। अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 9 टू गेट नाउ, 8 बॉल्स रिमाइनिंग और इन 2 रनों के साथ 7 बॉल्स इन फैक्ट रिमाइनिंग एंड 9 runs they have to score for victory, 7 balls remaining and 9 runs they have to score for victory। और इन 2 रनों के साथ लक्ष्य कुछ हद तक आसान बन चुका है, लेकिन यहां पर रनों की अभी भी दरकार सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाजों को। और इस ओवर में अंतिम बार खादर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ, विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। खादर प्रदीप के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद इस बार स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, गेंद को उछाला है और गेंद को वहां पर लपक लिया गया है। स्ट्रोक में दम था लेकिन प्लेसमेंट गलत था और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया और यहां पर प्रदीप का विकेट गिर चुका है। अब अंतिम ओवर बाकी, 9 रन चाहिए और एक बेहतरीन तरीके से गेंद को यहां पर लपक लिया गया था। देखिए किस तरीके से गेंद को लपका था और 9 रन चाहिए 6 गेंदों पर। अब मैं समझता हूं सतीश लक्ष्य कुछ हद तक कठिन बन चुका है सर्वाग्नि उर्वा के लिए। Of course, Gopi, it seems to be a little bit difficult because look at that. In the last dismissal, Ajay crossed over. Ajay is crossed over because the ball went towards a deep long off region. When Ajay is crossed over means next over is out of the strike. The new batsman will going to take the strike. It's going to be a major difference in this last over because Ajay is out of the strike means opportunity for Ruptek to bowl some good deliveries for the new batters. And that's what they want to see, that if the new batsman able to get a single and gives a strike to Ajay, then I think it's a chance, opportunity still there for Sarvagni cricketer Surva. But so far I think outstanding comeback by the bowlers, and especially the last over bowled by Kadar, and just missed the opportunity of run out, but still he bowled very well, and just 3 runs he conceded. Even the previous over also, it's a very good over the bowled, so that it's going to be very interesting to see that 9 runs required from 6 balls. I request the fielding team, please make it fast because you have already taken a lot of time to complete your 7 overs quota. Please continue. So now just coming back, the wickets in hand, Gopi, and fall of wickets. If the match is going to be tied, then fall of wickets comes into play. And 29 for the loss of 4 wickets, Sarvagnirva, and they lost 6 wickets. That means even they are able to get 8 wickets without losing a wicket. Sarvagni definitely going to be a winner. बिल्कुल सतीश, यहां पर देखते हैं अंतिम ओवर में क्या होता है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद को वाइड और यहां पर विकेट कीपर गेंद को छोड़ चुके हैं। सो द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और विकेट कीपर बिहाइंड द विकेट गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिला। अब 31 रन पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 7 रन चाहिए 6 गेंदों पर, 7 टू गेट फ्रॉम 60 डिलीवरीज। और नई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अजय स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ये गेंद अजय के लिए एंड दिस टाइम ही हिट दैट वन फॉर अ 6। सो ही फिनिश्ड द मैच इन अ स्टाइल। In fact, just a single run, they have to score for victory, and he finished the match, not finished the match, but the scores are leveled now. And just a single run, they have to score for victory. And look at the stroke, absolutely fantastic. और जैसा कि सतीश ने फरमाया था, अजय ऑफ द स्ट्राइक अंतिम ओवर में हो चुके हैं। अब अजय, इसकी अहमियत अब मालूम पड़ती है अजय स्ट्राइक पर आने के बाद जो उन्होंने छक्का लगाया है। तो 1 रन सिर्फ चाहिए बचे हुए 5 गेंदों पर और यहाँ पर अजय के लिए। एंड दिस टाइम ही फिनिश द मैच इन स्टाइल विद अनदर 6। तो consecutive success and Sarvagni Urva won the match by 6 wickets with 4 balls to spare in a thrilling match against Rooftech Katipalla, and with that victory they are through to the next round of this competition. So good match ended, and now the next match is now coming up between Fast Tech
Warriors versus Friends Kotar, and that match starts within just a short while. We'll be back right after the short break with Satish in English, when the next match will going to commence within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyabad. So the man of the match of this match award goes to, undoubtedly, the man who hit a consecutive sixes in the last over, and he scored 25 unbeaten runs, including 3 massive sixes. Ajay of Sarvagni Urva. And I request Ajay to please come on to the stage and receive the man of the match award from our organizer. What a fantastic batting performance. 25 रन अविजित उन्होंने बनाए 3 छक्कों की मदद से, और आखिरकार वो मैन ऑफ द मैच का खिताब इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि कृपया अजय स्टेज पर आए और अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब यहां पर स्वीकार करें। So in the next match, Fast Tech Warriors, after won the toss, they elected to field first, and that match starts within a just of all. Ali ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಅಜಯ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು welcome back for the next match. Meanwhile, here is a presentation of man of the match. Now, undoubtedly, what a fantastic batting performance from Ajay. He's played some explosive cricketing stroke, and he got a man of the match award. And tribal tattoos donated this man of the match award, and this one Umesh of Team Fortune Mangalore, they given award for Ajay for his wonderful performance, wonderful performance in the from the bat and from the ball as well. It's well deserved. At the same time, I request Roof Tech Katipala captain, please report here. Roof Tech Katipala captain, please report here to collect your memento for the representation of this YUVARATNA Trophy 2022. And on behalf of organizer, we'd like to give special thanks to Roof Tech for coming here and participating in this our cricket tournament. So here we have a friendly atmosphere in our commentary box. My friend Mr. Gopi is enjoying his own way, and my left we have our scorer, a very specialist scorer, Mr. Satya Sarup, and we can see in behind us we have Kishore, and the organizer, one of the pillar of this cricket tournament. And all we can see, the organizer done a great job here. We have Santosh, one more pillar of this cricket tournament, a vice president of Team Fortune Mangalore as well. So once again, thanks each and everyone and for this wonderful cricket tournament in the name of
YUVARATNA trophy in the memory of late Punit Rajkumar, power star Punit Rajkumar. Already my friend Gopi is totally explained everything about the journey of Punit Rajkumar during his childhood, how many films he's acted, and even some songs of Punit Rajkumar as well. It's been outstanding memory power from my friend Mr. Gopi. Thank you very much. Altogether, this is going to be a fantastic cricket tournament, and 2 days of the wonderful cricket tournament we had, and tomorrow might be the rest day, and the day after tomorrow, the Sunday, is going to be a final day of cricket tournament where we can witness some very good exciting cricket matches, especially in the top teams. 8 top teams of South Kenda district will go into play in that final day of cricket. Meanwhile, Sarvagri cricketers are true to the quarter final of this cricket tournament. Now, winners of this match, Fast Tech Warriors versus Prince Kuttar, they will go into qualify for the quarter final. So, opening batters came into bat here as for Friends Kuttar after winning the toss. Captain of Roof Tech, they elected to field first. It's a very good toss to win, and Friends Kuttar, the 2 opening batters, came into middle. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ರೂಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮುನೀರ್, ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಟು ಪ್ರದೀಪ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. Tyagaraja, little bit correction. Tyagaraja is a opening batter. It's a very good striker of the ball, the left and right combination, and very, very successful opening pair. The left and right combination. Tyagaraja, everybody knows his ability. Is a very good striker of the ball, and especially in the last 2 seasons, is a wonderful season for him from the bat. And he is now becoming one of the danger opener batsmen in UNDERARM cricket. Now even Nikhil is a very stylish left-hand batters, can dominate the bowler, especially the power play over. He's been a very, very effective with this technique, and I want to see the fielder for him on a deeper mid-wicket and one fielder at deeper long on, the 2 fielders outside the circle saving the boundaries. Munir, right arm over the wicket, this time swinging his bat. It's not a line to ball to the batter like Nikhil. Those are very strong on the leg. I cannot bowl that around the leg of Nikhil. Just survived Munir. Maybe that ball is a little bit quicker one, so that Nikhil completely missed out that one. Again, outside the line of off time. Good change of line here from Munir. Clever thinking. He is a good one who got a lot of experience in UNDERARM cricket, especially in the bowling in the power play overs. And once again, I would like to remind that time sense is very important here for the fielding team. They have to complete your 6 overs within 26 minutes. Outside the line of off stump. Again, the one more dotted delivery. So far, it's outstanding over here from Mubir. He's been outstanding in the line and length. The consecutive 3 dotted deliveries for Nikhil. Mubir again bowling away from us. Right arm over the wicket to Nikhil. Nikhil, oh damn, cleaned him up. This is a result of the frustration. When you are not having any contact with the bat in the 3 times in a row, then certainly the batter will going for the big shot, try to break the shackle, and a good bowler like Mubir certainly will go and thinking about that delivery, seeing that now batter will definitely try for the big shot, and that time we want to bowl one good delivery to pick the wicket of the left-hand batsman. The danger batsman Nikhil is out for duck after facing 3 consecutive deliveries. Then the 4th one, which is a beautiful one for Mubir to pick the wickets. 1 for 1, all inside on Friends Kuttar. They got a really slow and shackling start. Santosh is a new batter, came into middle. Very experienced campaigner as far as in the playing 11 of Friends Kuttar is concerned. He is a very experienced campaigner, a very useful number 3 batter as well.
And he is facing Mubir. Right arm over the wicket. Went for the reverse. The ball is in there. Chance of run out. And oh, that will go into a sensible. Absolutely a sensible work there from wicketkeeper behind the stump. What a work done by the wicketkeeper. Just like if you see in the international cricket, that kind of dismissal, the Mahendra Singh Dhoni is a specialist of doing that back and throw. Look at that one without seeing the wicket. Without seeing the wicket, I want to see in the replay. He went for the reverse hip, got a top edge. Look at the fielder, returns the ball. Look at the wicketkeeper. Oh, that was a back and throw again from the wicketkeeper. That time Santosh is out of the crease. Excellent work, and look at that one. I want to see in the replay the good camera work as well, and that was a good presence of mind from a wicketkeeper, because if he collects the ball, try to remove the bails, it takes almost 1 to 2 seconds, and if you all in sudden after collecting the ball, releasing the ball in a back and throw, look at that wide throw is out little bit away from the stumps, then he hits the stump with a back and throw without seeing the stumps, just like Mahendra Singh Dhoni always did in his international career. So many times he got a result by doing that behind the stumps. So 1 for the loss of 2 wicket. What a fantastic start given by Mubir. Just a single run and 2 wickets back into people in that over. Friends Kutar, they really got a shackling start. Taslim, one more experienced campaigner, is brought into attack from the far end. Now wait and see what Tyagraj will go to do here. Tyagraj facing first delivery of Taslim, going for the off drive, expansive off drive. One of his favorite. He is very strong down at X cover and cover point, one of his strongest zone. And this time he missed that one completely from the bat. Might be got a little bit outside edge of the bat, and there is no chance of any run at all. Again from the far end, Taslim, second time in this over. Right arm over the wicket, pass umpire. This time tries that on, just like I'm mentioning about again. He's not really timed that one properly, and at the same time, not a good effort from the fielder in the cover point region. They are not really able to collect the ball neatly. Fumble from the fielder, so couple of runs here for Tyagraj. We are talking about wicketkeeper. Everybody knows that wicketkeeper behind the stump is Rajesh Ubar. One more very popular name in UNDERARM cricket. He's very athletic, very intelligent, very gymnastic as well. As far as sometime if you see his career, he taken a lot of spectacular catches in the outfield as well. And now he is behind the wicket. Taslim to Tyagraj, appeal for leg before wicket. Umpire not satisfied, and they got a single in the form of a leg by. Ball is little bit pitched outside the line of leg stump. And even its ball just going down the leg stump as well. Only the bowler is appealing for the leg before wicket. Wicketkeeper knows that that ball is missing the stumps. So 5 for the loss of 2 wicket. Taslim from the far end. From the far end, Tyagraj is out of the strike. Pradeep is on strike. Oh, what a delivery that one. My goodness, look at the batsman there. He's got a smile in his face because almost that ball is going to hit the stump. Instead of he spread it defensively, I must say that he just blocked that one ball from his batter. Last moment, he just blocked that one not to hit the stump. Very good stuff there from Taslim. Quicker one, surprised the batsman. Taslim from the far end. Right arm over the wickety balls. Just to try to drag that one outside the line of off stump. So far it's a good going, and outside the line of off stump is too far. And rightly so, umpire signals a wide ball. One more addition to total in this occasion. I think it's a right call because Sriraj took his own time to see that whether the ball is almost out of the reach of the batsman or not. After taking his own time, and he signals it's a wide. One more wide. Scoreboard now moves on to 5 for the loss of 2 wicket. Taslim back to his bowling mark. Each and every delivery is the fielders really charging to the bowler, and it definitely not a good sign to see. And from the far end, Taslim right arm over the wicket balls again. One more good delivery.
Just jagging back into the batsman. And this time Pradeep managed to push the ball down to short mid-off region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 4 for the loss of 2 wicket. 6 lead correction, 6 for the loss of 2 wicket. I am just observing the monitor in front of me. It takes a little bit time, understandable. And now it's a 6 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. Again, from the far end, Taslim so far is doing a great job. Oh, again the good one. Instead of hitting the wicket, wicket keeper Rajesh hitting umpire here. And anyhow, the single is conceded here for Prince Kutar. They got a single, so over number 2 completed. One more good over. And Taslim's bowled one more good over here. And so far, Fast Track Warriors winning the toss, selected to field first. They're doing a great job conceding, containing the batsmen of Prince Kutar. They're struggling in the middle. 7 for the loss of 2 wicket. I request the fielding teams, please make it fast. Some international news. The first test match playing between Sri Lanka versus India at Mohali. India 270 for 5. And the expectation from each and every cricket lovers that Virat Kohli playing his 100th test match. Expecting some century from him. In the last 2.5 years, we have not witnessed any century from Virat Kohli, but once again disappointed here as well. They scored 45 runs, but at present at the crease, Ravindra Jadeja is batting on 20 and Rishabh Pant is batting on 49 and he is cruising towards half century. 270 for 5 and the last report came in from Mohali. So here in UCG Cricket Ground, as the competition is going on for the place of quarter final, and the Fast Track Warriors so far they're fantastic. Oh, lovely delivery, flighted one, extra bounce as well. Beautifully bowled there by Sahil in the negation. But warning straight away coming from umpire Roland Pinto for this young bowler Sahil, that is coming in right front of umpire, that protected zone. And after his follow through, he have to come to his left, not to go to his right. Need to avoid to cross the umpire. Need to take a left side. After his follow through, Sahil bowling away from us. Right arm over the wicket bows again. The ball which is beautifully bowled outside the line of off time, well within the reach of the batsman. Tyagaraja little bit surprised seeing that umpire. Why umpire not calling that wide? But that was a playable one. That was in an area where batter can drive the ball towards the extra coverage and well within the reach of his bat. And one more dotted delivery. So far the bowlers doing a fantastic job here for Fast Track Warriors. Sahil again away from us. Right arm over the wicket. He tries that one, but the protection there in the deep cover point region, so that Tyagaraja have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 2 wicket. In the over number 3rd in progress. Run rate is not good enough, not a healthy run rate we have in the scoreboard. Just 3 and 2.3 runs, 3 overs completed. The run rate just under the 4 runs per over. Sahil, right arm over the wicket. This time tries that one down to mid wicket. Protection has been given in the mid wicket. And it's a very good field set there by the Fast Track Warriors. And bowlers really bowling as for their field. It is so important for the bowlers. The captain setting a field, and you have to bowl as for the field which is set for you. The line and length is so important for the bowlers. And so far the bowlers are really doing a great job here in this particular match. Again the leg cutter, absolutely perfect leg cutter. The second time the same line and length, when the batter is going for the big shot, that got extra bounce and extra turn as well. He's got some little extra face and extra bounce. Sahil, quite surprisingly, he's not a tall bowler. It's a little master, but still he's getting some phase in his bowling, and he won turn as well. Sahil bowling away from us.
Right arm over the wicket. This time lofted that one right in the gap. Down to deep extra cover boundary for 4. And I think wait for the umpire signal. We cannot having a picture, good picture in the commentary box. But we have to see now umpire. Yes, it's a 6. What a shot there from Tyagaraj. Look at that one. Slashes that one. Going after that one. Ball is going and going. And that ball clearing the boundary line quite easily in the end. Beautifully driven there by Tyagaraj. That was a kind of the stroke which is required in this situation. And ball is almost hitting the player's connection. The gallery. You can see that that was gone on and hitting the wall. And definitely it's a 6. Absolutely magnificent blow from Tyagaraj. And 15 for the loss of 2 wickets. 3 overs completed. And wait and see how Friends Qatar will go into bounce back here in the remaining 3 overs. Of course, they started to bounce back in the last delivery of the over number 3. And wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. And welcome, Gopi. It's 2 very good teams are in the pre-quarter final. The battle is on between bat and ball. And so far, I think 3 overs which is going in favor of fast tech Warriors. But the Warriors is not completed because Tyagaraj just started to open up. And especially in the last delivery of the over, he got one big 6. The much required 6 for, I think, Friends Qatar. बिल्कुल सतीश, पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो छक्का लगा था निस्संदेह बेहतरीन छक्का और जरूरतमंद छक्का त्यागराज के बल्ले से। और पहले 3 ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की है रूफटेक वॉरियर्स ने, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है बचे हुए 3 ओवर में बल्लेबाजों को फ्रेंड्स कुत्तार के। देखते हैं क्या होता है। और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर ये गेंद अंदर की ओर आती हुई रक्षात्मक तरीके से गेंद को ठकेला, मिडॉ पर निशाना इस वक्त टकरा चुका है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। निशाना जब शम्सों पर टकराया था तब बल्लेबाज का बल्ला हवा में था, द बैट वॉज इन द एयर, और सही निर्णय अंपायर सीरज ने इस गेंद पर दिया। देखिए किस तरीके से हुआ। हैव अ लुक एट दिस वन। गेंद सीधे पहुंची थी एक्स्ट्रा कवर पर और सीधा निशाना क्रॉस एंगल से दागा था। एब्सोल्युटली दैट इज एन आउट और रन आउट के रूप में यहां पर विकेट गिर चुका है। जोखिम पर रन चुराने का प्रयास भुगतान उन्हें करना पड़ा। 15 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 3.1 ओवर का खेल यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और 15 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और अब जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। त्यागराज इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, जबकि नए बल्लेबाज महेश इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। और गेंदबाज तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। काफी दमदार स्ट्रोक्स था इस वक्त त्यागराज का, लेकिन 1 रन सिर्फ मिलेगा उन्हें और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ इस वक्त बिल्कुल सीधे तैनात है, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वायर जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए महेश इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और इस वक्त वो सामना करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज तस्लीम की गेंदों का। और टीम फॉर्चून एंड की ओर से तस्लीम अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। रनों की सख्त दरकार इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार को। 3 आरंभिक आघातों से उन्हें इस वक्त संभलना है। एक साझेदार यहां पर निभानी है क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाजों को। इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पिटो लेग स्टंप पर गेंद थी, अंतिम क्षण में सफल होते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहता। बाई का इशारा, बल्ले शरीर का कोई अंग यहां पर नहीं टकराया था। और इस बीच 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। तस्लीम फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और जहां तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो त्यागराज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तस्लीम की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चिप किया, लेकिन फॉलो थ्रू में तस्लीम गेंद तक पहुंचते हुए लेकिन गेंद को लपक नहीं पाएंगे। दूसरे फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद उन्होंने विकेटों पर थ्रो किया था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो थ्रो सीधे निशाने पर रख नहीं पाए और
यहाँ पर एक रन का इजाफा हो चुका है, तो एक रन उनके खाते में जुड़ेंगे। हर रन के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है और निस्संदेह जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो मैं समझता हूँ कम से कम 45 से 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा अगर फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों को यहाँ पर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो। और तस्लीम गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद महेश इस वक्त सामना करते हुए तस्लीम की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन ना, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट और फॉलो थ्रू में गेंद को इस वक्त फील्ड कर दिया स्वयं गेंदबाज ने। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज तस्लीम गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए महेश के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी, रिवर शॉट शॉट पर त्यागराज के लिए मौका, इस वक्त विकेट गिर चुका है। अंडर आर्म थ्रो को रिसीव करने के बाद अपने टांगों के बीच से झुकते हुए गेंद को इस वक्त थ्रो किया, बैकहैंड थ्रो, और यहाँ पर निस्संदेह इस बेहतरीन थ्रो के वो बदौलत यहाँ पर विकेट गिर चुका है त्यागराज का। और सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए विकेट कीपर राजेश, जैसे ही थ्रो को उन्होंने रिसीव किया घूमकर अपने दोनों पैरों के बीच से गेंद को झुकते हुए थ्रो किया, बैकहैंड थ्रो, और इस बेहतरीन थ्रो की बदौलत वहां पर गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और त्यागराज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। परेशानियां और बढ़ चुकी है। 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के पैर पर टकराई और गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन। रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए फ्रेंड्स को उतार के, और ऐसा कहना पड़ेगा एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज फर्स्ट टेक वॉरियर्स के। और यहाँ पर गेंदबाज रमीज, माफ कीजिए मुबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज विश्वास, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड, सिंगल रन वंस अगेन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर यहां पर प्रगति पर है। विकेट टू विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे कि वो खुलकर यहां पर स्ट्रोक खेल सके। हालांकि पिछले गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर जरूर फेंकी थी लेकिन बल्लेबाज के पहुंच से बाहर। और इस बीच मुबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। करारे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश इस वक्त जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। महेश इस वक्त सामना करते हुए मुबीर की गेंदों का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंद को इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद महेश के लिए इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट, इन कम्स द थ्रो इनटू, और इस बार दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए, स्ट्राइक कर रन पर खतरा लेकिन थ्रो काफी धीमा। ओवर थ्रो वहां पर हुआ था कुछ हद तक और इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण किया। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और थोड़ी देर से दौड़े जरूर बल्लेबाज विश्वास लेकिन सफलतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, और इस बार गेंद स्टंप्सों को टकरा कर निकल चुकी है, बोल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। इस गेंद में इतना पेस था कि बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद लगभग बिजली की रफ्तार में उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे स्टंप्सों को, लेग स्टंप को छूकर निकल गए, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है और 5वां विकेट गिर चुका है। देखिए किस तरीके से हुआ था, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन यहां पर विकेट गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में। इट्स 23 for 5। तो महेश का विकेट यहां पर पतन हो चुका है और नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस मुबीर, जो कि एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप फाइन लेग इस वक्त मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी स्क्वायरली तैनात, और मुबीर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द विकेट गैप, पीछा करते हुए फील्डर, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड करते हैं। फील्डर पीछे की ओर दौड़ते हुए 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर। और इस बार अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज मुबीर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, ऑन साइड पर वाइड स्विंग करना चाहता, चूंकि 1 रन का इजाफा, इसको बैट ऑन दैट आई थिंक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 26 for the loss of 5 wicket after completion of 5 overs. ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಕಾರ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Thank you very much for participating in this tournament and best of luck for the rest of the next tournaments. और यहाँ पर 5 overs completed. It's 26 for the loss of 5 wickets. Last over now remaining in their innings. अंतिम ओवर बाकी और हमसे दूर वाले छोर से अंतिम ओवर इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज हसन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. सनील और विश्वास इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए बैटिंग रणतंत्र के बारे में कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस अंतिम ओवर में उन्हें अपनानी चाहिए. और हसन ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील सामना करने के लिए तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर एक्स्ट्रा क्विकर, गेंद को छोड़ दिया. गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड किया सिर्फ बाय. सही इशारा अंपायर द्वारा. 1 रन का इजाफा. 27 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 5 बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. 5 गेंदें सिर्फ बाकी उनके पारी में और बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. विश्वास कुछ करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त अंतिम ओवर में सख्त जरूरत उनकी टीम की गति को, रन की गति को इस वक्त एक्सेलरेट करने के लिए फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों को. फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी है. गेंदबाज रूफटेक की गेंदबाज और हसन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर. मैं समझता हूं गेंद उनके हाथों से फिसल चुकी थी. अंतिम क्षण में वाइड का इशारा, स्पेक्ट्रा वाइड, और 2 रन इस वक्त मिलेंगे उनके टीम को और 2 रन मिल चुके हैं. 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त और आखिरकार 2 रन फ्रेंड्स कुत्तार के पारी में जुड़ते हुए. 29 in fact for the loss of 5 wickets. और हसन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर निशाना चूका और इस बीच 1 रन मिला. वाइड 1+1 2 runs now added to their total.
He's got a problem on his right length line at the situation. और जहां तक सवाल है, 2 लगातार वाइड ओ फेंक चुके हैं इस ओवर में और 4 अतिरिक्त रन फ्रेंड्स कुत्तार सामने वाली टीम को वो प्रदान इस वक्त कर चुके हैं। 31 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। 31 for the loss of 5 wicket in the over number 6 and the last in progress in their innings। फ्रेंड्स कुत्तार को कम से कम इन बचे हुए 4 गेंदों में 12 से 15 रन इस वक्त बटोरने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। देखते हैं उतना रन बटोरने के लिए बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति यहाँ पर अपनाते हुए इन बचे हुए 4 गेंदों में। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में बढ़ते हुए 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट करने बाद सफल विकेट कीपर और चौथे रन के लिए दौड़ पड़े और चौथा रन यहाँ पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे, रन आउट हो चुका है। तो 3 रन तो उन्हें जरूर मिले यहाँ पर और यहाँ पर विकेट कीपर चूके थे। देखिए किस तरीके से हुआ था, जैसे ही विकेट कीपर चूके बल्लेबाज ने चौथा रन चुराने की हड़बड़ाहट दिखाई और धीमा थ्रो जरूर पहुंचा था लेकिन इससे पहले कि बल्लेबाज चौथा रन पूर्ण करे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट झटका दिया। 3 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। इट्स 34 नाउ, 34 for the loss of 6 wicket and now 4 balls remaining in their innings। 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। तो विश्वास से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर और गेंदबाज हसन दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज विश्वास जो कि काफी विश्वास के साथ इस वक्त गेंदबाज हसन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त तैनात। लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है और काफी लंबा गैप डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और वाइड लॉन्ग ऑफ के बीच इस वक्त उस साइड पर। और इस बीच अगली गेंद बेहतर गेंद थी लॉन्ग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे। विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। राजेश विकेट कीपर थे स्वयं अपने आप से नाखुश और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 3 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में। जस्ट 3 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। 36 for the loss of 6 wickets and now just a couple of balls left in their innings। सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। बेहतर लेंथ लाइन के साथ अब गेंदबाजी करते हुए। हालांकि इस ओवर की शुरुआत में 2 लगातार वाइड्स उन्होंने जरूर फेंके थे लेकिन उसके बाद बाकी के 3 गेंदों में वे अपने रिदम लय को यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। विकेट टू विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हसन अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज विश्वास के लिए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर है गेंद को छोड़ दिया उन्होंने। बाई का इशारा सिर्फ और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 नाउ द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद उनकी पारी का हसन के हाथों से इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज निशान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और निशान के लिए इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन को आगे इस वक्त बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर जबकि कवर पॉइंट फील्डर को पीछे भेज दिया गया डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के पास। ठीक और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार हसन निशान के लिए। पारी की अंतिम गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद उछाल लेती हुई पहुंची है इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा और इस बार राजेश ने डाइविंग लगाते हुए इस वक्त थ्रो किया, विकेटों पर शाइन किया और इस बीच अंपायर ने मांग की है तीसरे अंपायर की। Now we are straight away going to the third umpire। लेकिन बेहतरीन प्रयत्न यहाँ पर राजेश ने किया था। जैसे ही उन्होंने भापा गेंद को कलेक्ट करने के बाद कि वो विकेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने हवे में उछलते हुए उन्होंने विकेटों पर शाइन किया और निस्संदेह देखिए किस तरह से हैव अ लुक एट दिस बेहतरीन विकेट कीपिंग इस वक्त और स्टम्प्सों को बिखेरने में सफल थ्रो के जरिए। और यहाँ पर देखना यह है कि जब स्टम्प्सों को बिखेरा गया विकेट कीपर द्वारा तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। और इस वक्त तृतीय अंपायर देखते हुए और इस बार इज गॉन, ही फेल जस्ट शॉट ऑफ आउट ऑफ हिज क्रीज और
क्रीज से बाहर रहे थे और आउट इस वक्त घोषित है थर्ड अंपायर द्वारा। और इस अंतिम गेंद पर एक रन सिर्फ जोड़े जाएंगे एंड द इनिंग्स इज अप एंड दे फिनिश्ड विद 38 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट फॉर out is the call and the innings is up. The stipulated overs completed. 38 runs scored by Fast Warriors at batted first after being losing the toss and put it to bat by Friends Kuttar and now set up a target of 39 now in 6 overs for Friends Kuttar. Exactly 6.5 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट जस्ट लुक एट दिस गेंद को किस तरीके से उन्होंने विकेटों पर इस वक्त निशाना दागा था संपूर्ण शरीर द कंप्लीटली बॉडी वाज इन द एयर और निस्संदेह यहाँ पर बेहतरीन रनआउट राजेश ने इस गेंद पर किया तो so 39 the target exactly 6.5 runs per over they have to score for victory in their stipulated 6 overs with the help of 10 wickets they have to score and let's see can they reach the target or not और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे अजीज दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब फ्रेंड्स कुत्तार माफ कीजिए जब फास्ट वॉरियर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। फ्रेंड्स कुत्तार इस वक्त पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 रन जोड़ चुका है 39 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है और जहाँ तक सवाल है टॉस फास्ट वॉरियर्स ने जीता था माफ कीजिए फास्ट वॉरियर्स ने टॉस जीता था और पहले फ्रेंड्स कुत्तार को कहा था कि पहले बल्लेबाजी वो करें और पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स कुत्तार ने 38 रन जोड़े 39 रनों का लक्ष्य 39 द टारगेट इन 6 ओवर्स फॉर फास्ट वॉरियर्स एंड लेट्स सी कैन दे रीच द टारगेट और नॉट। और हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And look at in the screen board, we are having the flex of Kedau. The movie will going to release very soon. And Gopi, it's very good to see that one of our cricket player from UNDERARM cricket just getting the names and fames in this the field of film industries as well. Karna is growing as one of the matured actor as well, and he got opportunity to act in this movie which is called as a Kedau, which is really coming soon in the theaters, and he's in a leading role in that particular movie. And good to see the Gopi. That movie is in will going to release in 2 languages, the state languages as well as Hindi. I think it's going to be a big honor for like Karna. He's been Karna of Gory Young Boys. He is in a leading role in this particular film. But even when upcoming on Tulu film movies will going to release soon, in that film also he is playing a leading role as a hero. बिल्कुल सतीश, करना जो कि हमारे यहाँ के मैंगलोर के क्रिकेटर है जो कि इस तुलु सिनेमा में वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम सब के लिए खुशी की बात है। यहाँ पर केडाऊ जो कि एक हम तुलु मूवी है केडाऊ जिसमें करना और कई साथी कलाकार काम कर रहे हैं और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि ये फिल्म जो कि काफ़ी यश ये फिल्म को प्राप्त हो और करना आने वाले दिनों में कई और फिल्मों में काम करे। तो जहाँ तक सवाल है एक्टिंग का, तो कई अंतर्राष्ट्रीय इतिहास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे सतीश। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत हो चुकी है और पहली गेंद यहाँ पर फेंकी जा चुकी है। Absolutely, Gopi. It's coming back. Of course, there was a close relation between Bollywood industries versus an international cricketer as well, and we are coming back to that after we are getting some break in the middle, and now it's a 39 is going to be a target for Fast Warriors, and they got a single run in the first delivery of the over number 1. Suhail is introduced from the commentary box and now Asghar will going to face a first delivery. Asghar is become the man of the match in the previous match for his wonderful batting display, and now he is facing Suhail. Right, they get lofted that one. Just we are talking about. He is now drop the catch. Can you believe this?
Once it looks like Asgar is lofted at one, looks like that ball is going to get the distance right, but where you can see there's a fielder situated in the right position. Long of fielder, what is really doing there? He's in such a good position to take the catch. Ball just slipping out of his hand. Second attempt also, he can't take the catch, but he's just removed the eye on the ball so that he couldn't manage to take the catch and ended in a disappointment drop catch. So Suhail missed that opportunity to take the big wicket of Fast Tech Warriors. Now Rajesh is on strike now. Rajesh, one of the best entertainer as far as underarm cricket is concerned, not only in the form of bat and ball and even in the fielding department as well. Outside the line of off stump, going to be a wide, nothing much to do with the delivery. Rajesh left that one into the hands of wicketkeeper and wide call by umpire. So 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Lot of hard work required from the bowlers of the opposition team, that they're not really depending a big total. Friends Kutta, they're depending a small total. Lovely shot there from Rajesh. Is off the mark with the single. They're looking for the second as well, but good throw coming from the fielder at deep wide-ish long off. So Rajesh is interested, but rightly Asgar quickly seeing that the fielder is very quick to react to return the ball, so that is going against that one. Rightly so. 4 without loss of any wicket. Suhail asking one fielder from deep long on to come little bit squarer, almost towards the middle of mid wicket and deep long on, and long off is situated in a straighter version, and that's why he was asking that long on fielder to come little bit across towards the mid wicket region. And here is the next one, right over wicket, top edge, ball high up in there. 3 fielder under it and 1 fielder is coming from the mid on region. Once it looks like it's going to be a mix up between 3 fielders, but at last the jersey number 11 able to take the catch. I think Pradeep is there in the mid-on. He is just running across towards mid-off region, and he takes a comfortable. Look at that one replay, and that was a top edge, and ball is ballooning high up in there. Look at that one. 3 fielders, 1 from the deep long on, 1 from the mid-off, and now it looks like Mahesh is saying that it's fine, man, it's fine, it's your catch. I'm not coming middle of you, but certainly it's opportunity. And look at the celebration here from the fielders. So 4 for the loss of 1 wicket. And Gopi, coming back to that movie Kedao, we are talking about, it's a Kannada and Hindi movie. And one more thing to good thing to see that along with Karna, one more cricketer, Atif of NM Cricketers Mangalore, is also acting in this particular movie as well. So that means a lot of the players, underarm cricket players, a little bit attracted towards acting as well. And we are coming back to that matter afterwards. Now it's the wicket number 1 is back into pavilion. Rizwan came into middle, is in non-strikers, and strikes are rotated. So Rajesh, the left-hand batter, will go in to take the strike of the bowling of Suhail. Right arm around the wicket, he bowls outside the line of off stump. And one more addition to total. He is pitching the ball several times, and even umpire Roland Pinto is just waiting when he was going to deliver the ball. He's waiting and waiting, little bit comedy of error and Gopi. Because when umpire is Roland Peters turning back, then bowler delivers the ball, Suhail. And sometimes it might be one of the strategy, Gopi, of the bowler, because just testing the temperament, the patience of the batters by taking a lot of time to deliver the ball. And this time a wide call by umpire, so that the stumping here, and third umpire will go into examine here for the decision here, whether it's out or not out. Here umpire, third umpire, Shiniket, will go into examine. So lot of dignitaries out here in this committee box as well. We have Jamal Panchame, one more fantastic follower of cricketer, very good supporter of cricketer as well, and big follower of KFC Kodigal. And
is along with us. We have a Shakir as well of KFC Kodikal here in commentary box. And that will go into a fantastic day for cricket, Gobi, especially in the Sunday. The top 8 teams will go into clash in this big day. And so far, it's outstanding cricket tournament, Gopi. The 2 days we are witnessing some fantastic performance from the ball, from the bat, and even from the field as well. Now, we have to wait for the third umpire decision. Will it go into out or not out? And wicketkeeper behind the stump collects the ball. And little bit fumble. That time the batsman thought that it might be a chance of run there, but ball is not really going away from the wicketkeeper. Now, we have to see that when the bails are off, whether the foot of the batter is in the air or not. But I think his right time is just put his back foot into inside the line. I want a little bit be little bit clear picture here. Is a not out is coming from umpire decision. It's a not out because I think it's a close call. It's a very close call indeed. And I think might be in a fraction of second as Rajesh just putting his back foot into the line. So he survived. 4 for the loss of 1 wicket. Again bowler. So far he's been outstanding, Suhail, in this over. 5 deliveries and considered 5 runs. And here is Suhail, right arm over the wicket, ball to Rajesh. Rajesh this time defensively played. Maybe he's looking for the single to get the placement down to mid-on region. But this time Suhail quickly running across to his left to stop the ball and denying the single from Rajesh. 5 for the loss of 1 wicket. Target is a 39. Rajesh knows that the very important for him to play some responsible innings for his team. For Fast Tech Warriors, even Franz Kuttar knows that this is going to be very important to pick the wicket of Rajesh. This time deliberate, absolutely. Rajesh did be surprised, just tried to get away from the line of the delivery in dedication. And first over completed after completion of first over, chasing 39 to win this match. And they got a slow start here, quite understandable. They lost the wicket quickly, the first wicket, so that they got 5 runs in the first over. So 34 required from 30 deliveries. And looks like Gopi's match looks to be very interesting, evenly poised. बिल्कुल सतीश, हालांकि 38 रन जरूर बनाए थे फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों ने, लेकिन उस टोटल का उस रनों का समर्थन करते हुए पहले ओवर में गेंदबाजी की है इस वक्त गेंदबाज ने। और जो गेंदबाज थे सुहेल, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और यहां पर सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किया। और आने वाले गेंदबाजों के ऊपर इस वक्त वो जिम्मेदारी है कि एक कसी हुई गेंदबाजी करें। अगर अगले चंद ओवर में इसी तरीके की गेंदबाज करते हैं जो इस वक्त सुहेल ने की है पहले ओवर में, तो निस्संदेह दबाव फास्टेक वॉरियर्स के बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है। और मैं समझता हूं जहां तक फास्टेक वॉरियर्स का सवाल है, इस वक्त उन्हें एक साझेदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। और यहाँ क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है, एक साझेदारी निभाने की। अगर एक बेहतर साझेदारी वो निभाते, अगले चंद ओवर तक अपने विकेट बचाए रखते, क्रीज पर जमते हैं, तो निस्संदेह फास्टेक वॉरियर्स अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। Exactly, Gopi. So that the start of the first over number 2nd, and first ball itself, it's Sunil bowls a very good delivery in the occasion, and Rizwan looking for the big shot. You know exactly, Rizwan, that they didn't got enough runs in the first over, so that he wanted to get some runs in the second over of the power play. And Rizwan is a very good striker of the ball. I got one deep long on, it is a wideish long on, and one fielder which is stationed at deep backward square, like little bit deep extra cover ball. That was a good one, absolutely fantastic delivery again. Rizwan completely missed out that delivery, which is a little bit outside the line of off stump, and there is no chance of any damage here. So warm welcome to our close friend, one of the fantastic human being, as Prabhakar is a very experienced scorer as well. He's a qualified scorer of KSCA. So warm welcome, sir, for this wonderful cricket tournament. Not only scorer, but he is a very good coach as well. He is just doing his job as a coach in Karawali Cricket Academy. It's a very experienced
coach as well, training the small childrens and making futures for the cricket. And Ivan is a very good umpire as well. This time again, lovely delivery indeed, beautifully bowled. Just the batsman Rizwan is not really understand the kind of deliveries which is bowled there by the bowler Sanil. He's just testing the temperament of the batsman with this excellent line and length so far. Sanil, right arm over the wicket, went for the reverse sweep. Again, that ball is not really coming from middle of the bat, but he's able to rotate the strike with that single score. It was 6 for the loss of 1 wicket. So 6 for the loss of 1 wicket. A lot of dignitaries out here in commentary box witnessing this prestigious tournament. YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore under the great leadership of Kishore, the president of Team Fortune Mangalore, and Vice President Santosh. Definitely the two pillars are responsible for the success of this cricket tournament. From the far ends, again Sanil bowls, went for the reverse sweep. Again that ball is missed the bat. It's a by call by umpire that missed everything. A wicketkeeper behind the stump, Santosh, fails to collect the ball, and so far it's really the struggle time continues here for the batters against the disciplined bowling performance by the bowlers of Friends Kuttar. 7 on the board for the loss of 1 wicket. Sanil, right arm over the wicket, looking for the big shot. One more dotted delivery, outstanding over there from Sanil. It's been a really great over indeed. So 2 overs completed, chasing 39 to win this match. And Fast Tech Warriors are really, Gopi, not in that much of fast. They looks like a slow Tech Warriors because the 2 overs, the worries is continuous here for Fast Tech Warriors, but run is not really coming very fast. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया। जो 2 गेंदबाज इस वक्त इस्तेमाल किए गए फ्रेंड्स कुत्तार की ओर से, सोहेल और सनिल, जिन्होंने सिर्फ 7 रन आपस में उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। और मैं समझता हूँ बचे हुए 4 ओवर में अब straight away coming back to the equation, 39 minus 7, that means 32 runs more they have to score for victory, and the asking run rate is now gone up to exactly 8 runs per over. Still they got 9 wickets kept intact, और मैं समझता हूँ एक 2 कसे हुए ओवर्स और फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाज यहाँ पर फेंकते हैं तो निस्संदेह दबाव और फास्ट टेक वॉरियर्स के ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ तक फास्ट टेक वॉरियर्स का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी। हालांकि इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, 2 या 3 रन इस ओवर में बने, लेकिन मैं समझता हूं ये दोनों बल्लेबाज अगले 2 ओवर में विकेटें बचाए रखते हैं, कुछ करारे स्ट्रोक्स खेलते हैं तो निस्संदेह यहां पर फास्ट टेक वॉरियर्स इस मैच में वापस आ सकता है। Exactly, Gopi, Fast Tech Warriors have to get some run very quickly, just like what the name has got fast. They have to get the fast runs as well in remaining overs. And at the same time, I request Friends Kuttar, please continue this match. Please, we are having a shortage of time. Please continue. And yes, Gopi, you are just talking about some the runs, good overs required here for Fast Tech Warriors. They wanted to get they wanted to get that target of 39 runs to win this match. 32 required, and remaining deliveries as 24. Asking run rate 8 runs per over from the commentary box. And Vishwas bowling away from us, right arm. This time looks like he couldn't manage to grip the ball properly. And that's why he is not ready to deliver the ball. At the last moment when he was trying to deliver the ball, he just stops it. Bowling right arm over the wicket to Rajesh. Rajesh, so far so cool, drives that one powerfully down to deep long on region. So they're just a single there. With that single, scoreboard now moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. The battle required 1 good over, big over for the Fast Tech Warriors if they wanted to back into this game. So far, I think the Friends Kuttar are really dominating in the first 2 overs now. Now Rizwan back on strike now. Rizwan, he's got one field and a deep backward point region. They're setting the field for each and every ball. That takes a lot of time, and really it's not good to see. Organizer a little bit worried about the
fact that they have to complete another 2 matches. So please cooperate with the organizer. Right arm over the wicket balls. This time down the leg stump, going for the big swing of the bat in the negation. Rizwan missed it completely, and its ball is not really have a contact with the bat, but contact with his leg. So leg by called by umpire Roland Pinto. With that leg by scoreboard Mozanto 9 on the board. So far it's a really slow cricket is going on here. The Fast Tech Warriors are not really getting the ball to their bat because the disciplined line and length ball by the bowlers. Again, Vishwas bowling away from us. Right arm over the wicket, went for the safe shot. The ball is in the air. They're celebrating, but umpire Roland Pinto. But interesting to see that, Gopi. When ball is ballooning up in the air, and Rajesh is just hitting his hand into his tie, saying that I missed the ball by hitting my tie, just like the pro kabaddi is going on in the middle. So hitting his tie, saying that umpire, I am missed the ball, I hit my leg rather than the bat. But umpire Roland Pinto having some conversation with the scholar umpire. Now umpire says it's fine, it's a leg by, and 10 for the loss of 1 wicket. So 10 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. A little bit correction. Leg by is given, yes. Leg by. So far Vishwas is so good in this over, just like what their partners did in the last 2 overs. Right arm over the lofted, that one is on. Looks like he will going to break the shackle. Yes, he does. Oh my goodness, he got that one right from the middle of the bat. Little bit short pitch delivery. Look at that when how we got that much of enough timing in that stroke, enough power in that stroke. Maybe the Gopi is just transferring his weight into the back foot, and once you transfer your weight into the back foot, you will get a lot of power behind the strokes, and that was a fantastic stroke. Look at that one replay. Right arm over the wicket. Look at that one, back foot. Absolutely, he's just putting hard the back foot and getting that strength towards his arm, transferring his weight into the back foot. Got that one right from the middle of the bat. 16 now for the loss of 1 wicket. Here is again bowler balls, beautifully bowled. Appeal for leg before wicket, and is given him. That ball certainly will going to hit the off stamp. He's gone. Rizwan might be not happy with the umpire decision, but Roland Pinto just saying that I am here as an umpire to give the decision. Please don't argue with me. And that was a very good delivery. Good comeback by the bowler Rizwan in that occasion. A little bit correction. Bowler Vishwas picked up very dangerous batsman Rizwan back into pavilion. It's a good comeback as a bowler's point of view, saying that that ball almost a little bit deviation he's got. Ball is pitching in the line and slight leg cutter and finding his back foot right in front of off stump. And is just disappointed because only because the previous delivery, Gopi, he hit 1-6, so that maybe that was a frustration and disappointment. That is what we can see the body language of Rizwan, quite understandable, because always it's a frustration when you are in a good rhythm. You got a 1-6 in the previous overs, he wanted to continue that one, and all is in sudden when his decision going in against his favor, that kind of reaction coming usually in cricket. बिल्कुल सतीश, छक्का लगाने के बाद काफी जोश में थे. अगले गेंद पर उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास किया था रिजवान ने, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा किकर कुछ हद तक डिवेट होकर अंदर की ओर आए. लाइन पर टिप्पा खाई, लगभग मिड स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कराते हुए, और यहां पर अंपायर ने जैसे ही उन्हें आउट दिया, रिजवान ने कहा कि गेंद शायद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है, लेकिन अंपायर रोलैंड पिंटो, जिन्हें 37 सालों का तजुर्बा, इस गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 37 ईयर्स, और उन्होंने कहा कि कुछ हद तक गुस्से से कहा कि आप सीधे पेविलियन पर जाइए और देखिए बाद में रिप्ले क्या हुआ है बोलकर. तो यहां पर उनका विकेट गिर चुका है और सतीश यहां पर दबाव एक बार फिर से उनके ऊपर डेलिकेटली. इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेल दिया, थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा और यहां पर स्कोर बन चुके हैं इस वक्त कुल मिलाकर 17 रन. अभी भी 22 रन दूर 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और सतीश निस्संदेह यहां पर अब फास्टेक वॉरियर्स को कुछ करारे स्ट्रोक्स खेलने ही होंगे. Exactly, Gopi. It's a 17 and I think 17 is the score which is scored by Fastech Warriors, but I think the first better over, and in fact for Fastech Warriors and because of 1-6 which came from the bat of Rizwan, they looks like he is just to open the gate here for Fastech Warriors. Now straight away coming back to the equation,
Another 22 more runs required for the victory, and they got 18 deliveries to spare. And Gopi, only 4 difference between run and ball. I don't think it's going to be a big difference in present cricket. It's manageable, but seeing the nature of the ball, it's very hard in the nature. Ball is nicely coming to the bat as well. But you cannot underestimate the bowling department of the opposition team. Friends Kutar, they got good bowling department, and I think they will definitely go into fight with this 22 runs. It's going to be a very interesting 3 overs, Gopi. तो बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, लेकिन फ्रेंड्स कुत्तार के बाद जैसा कि आपने कहा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग डिपार्टमेंट है और उसका असर इस वक्त नजर आ रहा है यहाँ पर। किस तरीके से देखिए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मौका जरूर है, 18 गेंदें 22 रन, और यहाँ पर बाउंस बैक करने के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। लॉन्ग स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन काफी वाइड थ्रो, और इस बीच वाइड का इशारा, तो 2 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 20 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब इक्वेशन स्टैंड्स ऑन द सेम, 19 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा मैच अब बराबरी पर रुक चुका है। तो गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, और स्ट्राइक इस वक्त राजेश के पास, जबकि नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज नवाज। तो रन्स इस वक्त हर गेंद पर चाहिए रूफ टेक को, यहाँ पर फास्ट टेक वॉरियर्स को, जबकि रन्स रोकने होंगे हर गेंद पर फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाजों को। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। राजेश इस वक्त हालांकि वो इस वक्त कुछ हद तक खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को अंतिम क्षण में छोड़ दिया, और वाइड का इशारा एक बार फिर से। एंड नाउ 18 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। तो जहां तक सवाल है 19 to get, in fact 19 to get now from 18 deliveries, और इस बीच 3 रन ये जो बने काफी महंगे पड़ सकते हैं फ्रेंड्स कुत्तार के लिए पारी के अंतिम ओवर्स में। तो यहाँ पर धनुष अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। राजेश इस वक्त सामना करते हुए धनुष की गेंदों का ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना, 4 रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ विकेट कीपर, जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने के। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, and now 18 to get from 17, but the equal battle is now continuing here। निस्संदेह बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है इस श्रृंखला में विजय दर्ज करने के लिए। और स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज नवाज इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, और इस बीच ये गेंद फुल टॉस हल्के से 100 स्ट्रोक अपने एक हाथ से अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद सीली मिड ऑफ पर पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, और गेंदबाज धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, जस्ट लिंक फॉर दैट एट द लास्ट पॉइंट। ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, मिसफील्ड, रन के लिए दौड़ पड़े निशाना, और इस बार एंड जस्ट वी आउट वेट एंड सी सेकंड अटेम्प्ट। तो यहाँ पर 2 बार निशाना लग चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक सो, फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले प्रयत्न के लिए इस वक्त थर्ड अंपायर के लिए कॉल दिया गया है अंपायर रोलैंड पिंटो द्वारा, और देखते हैं यहां पर बल्लेबाज इस गेंद पर बचते हैं या नहीं। तो यहां पर थर्ड अंपायर द्वारा परामर्श किया जा रहा है, और निशाना दागा था बिल्कुल, एब्सोल्युटली डायरेक्ट हिट टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, एंड द थ्रो इज नाउ अराइविंग, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। बल्लेबाज क्रीज से इस वक्त दूर है, एंड नाउ it's going to be tight.
not out, says third umpire, and everything seems to be perfect for the batsman. तो runs यहाँ पर 2 रन जोड़े जाएंगे, तो 2 गिफ्टेड रन्स, और जहां तक सवाल है स्कोर इन 2 रनों के साथ अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। हालांकि स्टंप्सों पर गेंद टकरा चुकी थी, लेकिन बेल्स थोड़े से देर से ऑफ हुए थे। बेल्स डिस्टर्ब्ड लिटिल बिट लेट, दैट्स व्हाई थर्ड अंपायर कॉल्ड इट नॉट आउट। तो यहां पर 24 रन बन चुके हैं, 2 रन यहां पर जुड़ चुके हैं, और 15 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए। और गेंदे 15 गेंदे बाकी। तो अब एक बार फिर से खिलाड़ियों ने मांग की है फ्रेंड्स कुत्तार की कि दूसरे रन को जब बल्लेबाज दौड़े थे तब स्टंप्सों पर गेंद लगी थी, तो तब क्या बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे या नहीं। तो इस गेंद पर दूसरे प्रयत्न में जो रनआउट करने की कोशिश की थी उस पर इस वक्त देखा जा रहा है तृतीय अंपायर द्वारा कि रनआउट है कि नहीं। तो यहाँ पर खेल आगे बढ़ता हुआ, ये गेंद हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया, इस बैट ऑन दैट जस्ट इनसाइड एज, और इस वक्त शॉट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा, इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड दिस इज द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 39 द टारगेट, स्टिल 14 more runs now they have to score for victory, and 14 balls to go in the rings. What a fantastic match is now going on here. The equal battle is now continuing here. और गेंदबाज इस वक्त धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नवाज, और अगली गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहा क्योंकि इस वक्त रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, लेकिन विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, संतोष थे विकेट कीपर, और जब तक संतोष गेंद को अब यहाँ पर फील्ड उन्होंने नहीं किया, सीधे गेंद पहुंची गेंदबाज के हाथों में, और आखिरकार अच्छा गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, जस्ट लिटिल बट स्लोअर एट द लास्ट मोमेंट, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। तो यहाँ पर एक बेहतर ओवर सतीश समाप्त हुआ, 14 रन। हालांकि पहले 2 गेंदें उन्होंने वाइड जरूर फेंकी थी, 3 रन प्रदान किए थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए इस ओवर को वो समाप्त कर चुके। 7 रन इस ओवर में बने, 14 to get from 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 14 to get from 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. अब कुछ हद तक लक्ष्य कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कम बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त बल्लेबाजों के लिए.
Exactly, Gopi. Having Rajesh in the middle for Fast Tech Warriors, nothing much to worry about that 14 runs in 12 balls. But so far, I think the French Kutar bowlers not really given up this match. The way they're really fighting back, they're fighting back very well with their bowling, excellent bowling performance. But they always Gopi, the match is evenly poised. So both the teams has got opportunity to win the match, and this over is certainly going to be decided over for both the teams. As far as winning perspective of French Kutar is concerned, they wanted one more good over. At the same time, the Fast Tech Warriors, if they wanted to win this match, this over going to be very important for them. At least they have to get at least 8 to 10 runs. Then I think it's going to be so easy when they're going for the last over. And 6 runs or 7 runs in the last over, it's manageable. And it's going to be very interesting, Gopi. We're going to bowl that the very important over. And one bowler, the new bowler has to be introduced, because fifth bowler has to be introduced. And Pradeep brought into attack. And wait to see how Pradeep will go. बिल्कुल पहली गेंद को इस वक्त उछाला है लोगों पर राजेश ने, और यहाँ पर इस कैच को लपक लिया गया। तो यहाँ पर जश्न मनाते हुए प्रदीप अपने मुट्ठी को जोड़ते हुए अपने पांचों उंगलियों को उन्होंने जोड़ लिया और हवा में लहराया कि वो इस वक्त राजेश का विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। जस्ट वी हैव टू सी द रिप्ले। इस वक्त देखिए किस तरीके से गेंद थी, गेंद को इस वक्त फेंका गया होता, मिडल ऑफ स्टंप पर उछाला था, नॉट क्वाइट मिड लेगी और गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, और लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया खूबसूरती के साथ। और राजेश का विकेट का पतन मैं समझता हूं in these critical circumstances it's going to be so costly now for Fast Tech Warriors. Exactly, Gopi. And I just mentioned about having Rajesh in the middle in the last 2 overs. Nothing much worried about for the Fast Tech Warriors. But now the worries. Now definitely going to big worries now for Fast Tech Warriors, because they lost Rajesh wicket. He's definitely the one of the best finisher as far as the UNDERARM cricket is concerned. He's a very good finisher of the match. But this time he's not really coming very close to the pitch of the delivery, isn't it? He tried to try to lob that one. That was the result of frustration, Gopi. The previous over, his partner is playing back-to-back 2-3 dotted deliveries. That's why he's a little bit frustrated. He wanted to break the shackle, and that was the result. The Rajesh is back into pavilion. Exactly, Satish. There is no doubt about that. And let's try coming back to the next delivery. और जहां तक का सवाल है, इस वक्त प्रदीप गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, स्ट्राइक इस वक्त नए बल्लेबाज इरफान के पास, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ। मिड ऑन फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है, लॉन्ग ऑन पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट पर मेरे ख्याल से कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं, और यहां पर मिड विकेट फील्डर को आगे बुला लिया जा रहा है। ऑफसाइड की ओर अगर नजर फिराएं तो कोई फील्डर इस वक्त सीमा रेखा के पास दिखाई नहीं देता हुआ, कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन नहीं, शायद लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर होगा। और जिस तरीके से मिड ऑफ को रोका गया है, तो इस वजह मिड ऑफ के फील्डर को जिस तरीके से 20 गज के दायरे के अंदर लगाया गया, तो इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉन्ग ऑफ पर अगर फील्डर होंगे तो थोड़े से स्क्वायर होंगे। ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त समझो पर टकराई नहीं, पैरों पर टकराई, अपील जोरदार रहा, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। मैं समझता हूं सतीश गेंद लाइन के बाहर टिपका गया, इट पिच्ड आउटसाइड द लाइन एंड निप बैक a lot at the last moment. Exactly, there is no doubt about that. The ball pitched outside the line. Doing too much, Gopi. It's turning a lot. That ball going to be the leg stump. Exactly, Satish. और लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी, जैसा कि आपने फरमाया, और सही निर्णय अंपायर रोलैंड पिंटो का इस गेंद पर उन्होंने दिया। स्कोर रुक चुका है 25 रन। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज प्रदीप, और कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं 10, रन चाहिए 14, और इस बीच प्रदीप की ओर की अगली गेंद फुल टॉस इस बार रन आउट हो चुका है। और सतीश यहां पर जाना चाहिए था गेंद, लेकिन गया बल्ला इस वक्त, और यहां पर विकेट गिर चुका है। मैं समझता हूं जस्ट चेंज ऑफ पेस है द लास्ट मोमेंट। धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी। देखिए हैव अ लुक एट दिस, इस बार सही बात है, गेंद इस वक्त धीमी फेंकी थी, और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली, बिकॉज ऑफ दैट नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल, एंड द बैट वाज स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, इट वेंट एट शॉर्ट मिड विकेट। और इस बार रन के लिए दौड़े जरूर, लेकिन इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे रन आउट करते हुए विकेट कीपर। तो विकेट यहां पर गिर चुका है सतीश। 3 बेहतर गेंदें प्रदीप इस ओवर में फेंक चुके हैं, और इन 3 बेहतर गेंदों की बदौलत अब मैं समझता हूं फ्रेंड्स कुत्तार अपने शिकंजे को इस मैच में लगभग कस चुका है। Exactly, Gopet. A fantastic bowling display there from Pradeep. It's very difficult to pick his line and length because he's bowling left-arm bowler. He's bowling wide of the crease. At the same, he's not really coming to the bat. But seeing this bowling action, batters look imagining that ball is coming very quickly to them. But ball is not really coming to the bat, and he's getting extra turn as well. That's why the batters really not struggling to get the timing behind the stroke. And so far, Pradeep, I think, is able to put some pressure onto the batsmen of the Fast Tech Warriors. But
but still the opportunity is there, Gopi. One big hit can change the complexion of the match. That's what fast takeover is required in this particular over. बिल्कुल सतीश, मौका जरूर है इस वक्त कमबैक करने का। एक बिग हिट, एक करारा स्ट्रोक फर्स्ट टेक वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को डिफ्लेक्ट करना चाहता, लेकिन गेंद पैरों पर टकराने के बाद निकली। इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दबाव ना सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर बल्कि दर्शकों के, समर्थक, सपोर्टर्स के ऊपर भी इस वक्त बढ़ता हुआ, दोनों टीमों के सपोर्टर्स के ऊपर। और निस्संदेह मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर यहां पर रुक चुका है। 13 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 8 और गेंदबाज इस वक्त तैयार। प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, इरफान ना इस वक्त, माफ कीजिए, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। बल्लेबाज नवाज गेंद को उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉट फाइन लेग पर। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए मिडल और लेग स्टंप पर इस वक्त गेंद फेंकी थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद पैरों पर टकराने के बाद सीधे शॉट फाइन लेग पर फील्ड होती हुई। 1 रन मिल चुका है, 12 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी। 12 टू गेट नाउ फ्रॉम 7 डिलीवरी लास्ट टाइम इन दिस ओवर। प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए, क्लीन कलेक्शन, इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड द बैट्समैन आर फाइनली सेटल्ड विद अ सिंगल एंड fifth over has been came to an end. 28 for the loss of 4 wicket, 11 to get। और यहाँ पर अंडर दिस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस मैं कहूंगा सतीश, प्रदीप ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की है। सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और अब अंतिम ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा फास्ट टेक वॉरियर्स को, चौके या छक्के ही उनके नैया को पार लगा सकते हैं। Exactly, Gopi. Under pressure, it's a really great over there from Pradeep. And the last 2-3 overs, I think the Friends Kutta bowlers managed to handle the pressure, and they put some pressure into the opposite team by bowling some excellent deliveries. And the last over, I think it's one of the best over as far as this particular match is concerned, because in this slog overs, when the batsmen of opposition looking for some runs, I think Pradeep has managed to bowl very good line and length. Now, Gopi, 11 to required from 6 balls. I want to say we'll go into ball that last over. Will it going to be the bowler Suhail? I think one who bowled the first over, right? One who bowled first over, the power play over, he will go into ball the last over of the innings. And wait and see, Suhail is very good actually in the first over. He bowled very well, considered 5 runs. Now he's depending 11 runs. He's depended 5 runs and the power play overs. Now in this over, Gopi, he is having a lot of protection. 5 protection outside the circle. So I think Suhail, if he bowls like what he bowled in the first over, definitely it's going to be difficult for fast track warriors. But it's a different ball game, Gopi. Bowling in the first over and bowling in the last over, it's a different ball game. And you need to handle the pressure when you're going to the last over, because batsmen desperately looking for some big shots. बिल्कुल सतीश, दबाव को जो झेलेगा वही इस मैच में, इस अंतिम ओवर में विजय दर्ज कर पाएगा। और यहाँ पर दबाव इस वक्त ना सिर्फ बल्लेबाज के ऊपर, ना सिर्फ गेंदबाज के ऊपर, ना सिर्फ फील्डर के ऊपर, बल्कि दर्शकों के ऊपर भी इस वक्त दबाव बढ़ता दिखाई देता हुआ। 11 रन चाहिए अंतिम ओवर में और सोहेल जो कि अपना पहला ओवर बेहतर फेंक चुके हैं, अंडर पावर प्ले, आउट ऑफ पावर प्ले, इस वक्त मैच का अंतिम ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद, इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, चूंकि फॉलो थ्रू में रन आउट का खतरा, और यहां पर नहीं कहा अंपायर सीरज ने सही तरीके से, और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड गेंद को ड्राइव किया था बैक टू द बॉलर की दिशा में, और देखिए किस तरीके से हैव अ लुक एट दिस, गेंद को खेला था, गेंद उनके पैरों के बीच से निकली थी इस वक्त मिड ऑन क्षेत्र पर, और जब तक मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, विकेट चटकाए गेंदबाज, थ्रो को रिसीव करने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 10 रन 5 गेंदे, 1 छक्का या चौका फास्ट टेक वॉरियर्स की भटकी हुई गाड़ी को बैक ऑन ट्रैक, सही ट्रैक पर इस वक्त ला सकता है। और उस छक्के और चौके की, उस छक्के या चौके की तलाश में इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार नवाज। एक्सक्विजिट यहां पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 10 रन चाहिए 5 गेंदों पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रदीप, ये गेंद इस बार दैट इज एन फाइन, दैट इज एन एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट shuffling across a lot at the last moment and just played that one with a sweep shot, fine, and is got that one with a perfect placement. और under pressure सतीश, ये एक बेहतर स्ट्रोक कहा जाएगा। Intelligent cricket, clever cricket, Gopi, delicately played that, just using the face of the bowler. You know exactly that hitting the big shots is very difficult when the ball is coming along the carpet, and just using the face of the ball, or just closing the face of his bat and just giving the direction towards a fine leg inside the ring, Gopi. Square leg, little bit square, very difficult for them to run across.
and that was a delicately played. Clever cricket, absolutely clever cricket. बिल्कुल सतीश, और 6 रन चाहिए 4 गेंदों पर। और यहाँ पर ये जो स्ट्रोक खेला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमें याद दिलाता है माइकल क्रिस्टोफर बेवन, जो कि अंतिम क्षण में ऐसे स्ट्रोक से इंटेलिजेंट स्ट्रोक सेंसिबल क्रिकेट खेला करते थे और अपनी टीम को सही तक पहुंचा चुके हैं वो कई मैच में। और यहाँ पर देखते क्या होता है। 6 विकेट फ्रॉम 4 डिलीवर्स। हियर वी गो, दाहिना ओवर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से, इस बार गेंद निकल चुकी है और बैकवर्ड स्कोर पर बेहतरीन फील्डिंग, एक हाथ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, और निस्संदेह बेहतरीन फील्डिंग कहा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस जजमेंट होता तो गेंद उनके हाथों से टकराकर सीमा रेखा को पार कर सकते थे और गेंद टिप्पा खाने के बाद टर्न लेकर थोड़ी सी डिविएट हुई, लेकिन इस टर्न को समझते हुए सही तरीके से गेंद को ग्रैब करने में सफल अंतिम क्षण में। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 5 रन चाहिए, 5 टू गेट नाउ, 3 बॉल्स रिमेनिंग। और अगर मैच टाई होता है तो विकेटों का कंपैरिजन देखा जाएगा। अगर विकेटों का कंपैरिजन देखा जाए तो फ्रेंड्स कुत्तार ने खोए थे 7 विकेट, जबकि 7 विकेट, और जबकि फास्टेक वॉरियर्स ने खोए हैं 4 विकेट। तो यहां पर फास्टेक वॉरियर्स अगर मैच को टाई भी करता है बिना किसी विकेट खोए तो इस मैच में विजय वो दर्जा कहलाएगा। देखते हैं क्या होता है। दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बीच सोहेल दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को ढकेला ऑफ द टोज, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा। 35 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 टू गेट नाउ, एंड नाउ द बॉल इज रिमेनिंग 2 balls, 4 runs, 3 for tie, 4 for win. What a fantastic match is now progressing here. और निस्संदेह हर गेंद के साथ दबाव इस वक्त खिलाड़ियों के ऊपर बढ़ता हुआ विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। और मैं समझता हूँ इस मैच के वक्त के बारे में अगर कहा जाए तो it's almost 78th minute is now progressing in this match, and that shows the cruciality of this match. और जहां तक सवाल है अभी भी इस मैच में हालांकि सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गए, लेकिन अभी भी यह तय करना मुश्किल है कि मैच किसकी ओर पलट सकता है। तो देखते हैं, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। एंड फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी सोहेल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस वक्त सामना करते हुए बल्लेबाज नवाज, और विकेट को छोड़कर इस वक्त खड़े हुए गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास। देखना है कि गेंदबाज इस गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। 3 of 2 डिलीवरीज, और इस बीच गेंदबाज सोहेल तैयार। Here we go, दाहिना ओवर द विकेट, गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, नो स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन विकेट कीपर ने थ्रो करना मुनासिब यहां पर नहीं समझा कि खुद डाउन कर आ गए स्ट्राइकर एंड की ओर, और 1 रन मिला। 36 एंड नाउ 3 टू गेट फ्रॉम लास्ट डिलीवरी एंड 2 फॉर टाई। एंड आप क्या समझते हैं सतीश? If the match is ended in tie, I think Fastech Warriors going to be winners, and only 2 runs they have to get. As far as the fall of wicket is concerned, they are the better. So that I think now it's going to be very interesting to see the field set of the opposition, Gopi. The kind of field set which they're going to arrange. They're definitely looking for the cutting that 2 runs instead of they cutting the boundaries. Of course, that will go take the match away from them. But they're definitely looking for how to cut that couple of runs. The kind of field set definitely going to be decided in this last delivery, Gopi. And wait and see. Even the mindset of the batsman, even the mindset of the bowler is going to be very, very interesting. Bowler have to bowl as per the field set by the captain for him, and at the same time the batsman have to look for something which is different, and where he can get couple of runs. 3 definitely it's going to be easy for Fastech Warriors. Exactly, Satish. The last ball of the match is now come. Match deciding ball comes. 3 of last delivery. Here we go. Sohail to right-handed batsman Safwan. ये गेंद इस बार चुके रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर यहाँ पर पहुंच चुके, विकेट तक दौड़ कर आ गए, बल्लेबाज दौड़ कर पहुंचे, क्लीन कलेक्शन, that's it. Friends Kuttar register 1 run thrilling victory against Fastech Warriors, and with this victory they are through to the next round of this tournament. So what a fantastic match ended now. Kyo Satish? Absolutely nail-biting finish, Gopi. What a fantastic last delivery there from Sohail. Absolutely great over. Absolutely great over. The last delivery, I think, is one of the best delivery. Look at the way that is defeat the batsman in the relegation. Even the pummel from the wicket keeper, but still they managed to get only single for that. Just a little bit presence of mind there from Santosh. Returns the ball quickly to the hands of bowler, and bowler completes the job. Just a 1 run victory for Friends Kuttar. Congratulations, Friends Kuttar. Hard luck, Fastech Warriors, because really you played a very good game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but I think you played a very good game of cricket here. And unfortunately, you're in the losing side, but you are witnessed one of the best game of this cricket tournament.
Now it's time to announce a man of the match award, and it goes to the bowler, one who really turned the match around when opposition fast track warriors are cruising towards the wicket, cruising towards the victory. He just came in and delivered one good over, and that over which is bowled by Pradeep of Friends Kuttar, who judged as a man of the match for his excellent 1 over, picked up a crucial wicket of Rajesh of the opposition, and he scored 2 runs as well for his team. So I request Pradeep, consecutive second times winning the man of the match award. That means he is dealing with some good times. Now I request Roland Pinto sir to please present this man of the match award to Pradeep for his excellent over, and that was really turning the match around when it's every 1 over was a single run required on every ball. Then he just came in and bowled a very good over, just an over of just 2 runs. Now our respected umpire Roland Pinto will go into present this T-shirt man of the match award. Man of the match award there from Roland Pinto sir. They're presenting this award to Pradeep for his wonderful performance from the ball. 1 over, 2 runs and 1 valuable wickets. Congratulations. And at the same time I request Fast Track Warriors captain, please come here. Collect your memento for the representation of this cricket tournament. Now we'll give a 5 minutes break, and after that 5 minutes break, we'll back in this very important match, the semi-final. Quarter-final, little correction, quarter-final. Sarvagni Urva takes on Friends Kuttar in the second quarter-final of this cricket tournament, and it's going to be a very interesting match between these two very good teams. And we are expecting the same kind of finish for that match as well. We'll take a 5 minutes break, and after that 5 minutes break, we'll back in front of you live and exclusively. Meanwhile, I request Fast Track Warriors captain, please come here to collect your memento for the representation of this cricket tournament, YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune in the memory of power star late Puneet Rajkumar. And so far, it's a wonderful day for cricket. After that successful day number 1, you are almost inching towards the end of day number 2. And tomorrow, I think it's going to be a rest day for this YUVARATNA Trophy. And day after tomorrow, in Sunday, we are coming to the last and final and decider day of cricket. And we are expecting some a very interesting game of cricket in this final day as well. We'll take a commercial break, and after that commercial break, we're right in front of you live and exclusively for this quarter-final, second quarter-final of this YUVARATNA Trophy 2022. Thank you very much.
So welcome back again. I request the two teams captain please report for the toss. Captain of Friends Kutar as well as captain of Sarvagni Urva, and this is the second quarter final of this cricket tournament. Five-star Adur, they came into the semi-final already in the other end. Then the winner of this match will go into play against Five-star Adur in the first semi-final of this prestigious cricket tournament. I request the captains of Sarvagni Urva and Friends Kutar to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು.
So friends Qatar, after won the toss, they elected to field first in the second quarter-final match of YUVARATNA Trophy 2022, which proudly organized by Team Fortune Mangalore, and the match is now coming up live exclusively just in front of you. The second quarter-final between Savagni Urva and Friends Qatar, and I request all the players of these two teams to please start the match as soon as possible. And we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to begin within just a short while. Thank you. Dhanyavad. So welcome back once again, and for the quarter-final of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. After winning the toss, captain of Friends Qatar, they elected to field first and opening batter for Sarvagni Urva. They came into middle, a little bit change in opening pair. Sujit came into middle along with Jayant instead of Shravan, the captain himself. He wanted to keep himself down in the order, sending Sujit a little bit promoted up in the order to take the advantage of the power play. I think Sujit is a very good striker of the ball, and it is a good move as well from captain, sending him to open the innings along with the very experienced Jayant. So far, Jayant not really able to talk with his bat in this particular tournament, but he's a kind of batter who can be very effective, especially in the matches like quarter-final, semi-final, the big matches.
the big batters like Jayant can able to bounce back. They got a potential of bouncing back, and wait and see how well they will go into contribute in this big match. From the commentary box, and Vishwas will go into start the proceedings right now over the wicket. First ball, Sujit looking for the off drive away from his body. Quicker one from Vishwas, seeing that the batter almost standing away from outside the line of leg stump, so that he balled outside the line of off stump. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Vishwas bowling with a lot of confidence. Vishwas means confident, and he was bowling very confidently so far in this tournament. Down the leg stump, going to be a delivery which is called as a wide by umpire Sri Raj. First run comes up here for Sarvagni Urva in the form of extra, and one without loss of any wicket from the commentary box, and Vishwas with a short run up, having 5 fielders on the onside, 4 in the offside. This time again the same line and length, a little bit struggling. Vishwas losing his confidence after getting one delivery which is outside the line of off stump, followed by 2 wide deliveries down the leg stump, and with that extra scoreboard now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Vishwas. So Sujit chip that one, not full-hearted cricketing stroke, half-hearted cricketing stroke down to deep extra cover region, but it's not important how technically that stroke is going to be sound, but important that he is able to deliver that one over the infield, so that he is able to get a couple of runs. Sujit is off the mark, and with that couple of runs, 4 without loss of any wicket. Sujit again back to strike now, facing Vishwas. This time he's just throwing it back and try to hit the big shot. Chance of run out, appeal for run out, and is gone. Sujit well out of his crease. Not really a good judgment of the run after he hit the ball. Not really seeing the ball where the ball is went. He just wanted to get the single. Even is not seeing the reaction of their partner. Look at that one. He's looking for the blind run. Ball went straight to the hands of square leg, and Pradeep returns that one. It's a left hand. He's a left hand, so it's a good hand for him. Good hand for him to return, and returns that one very quickly to the hands of Santosh. He completes the job. Sujit is back into pavilion, and looks like a little bit surgery in the batting department of Sarvagni Urva is not really working out, because Sujit, without making a big contribution from the bat, is back into pavilion, and he scored just 2 runs, and he's back. Now, someone coming into middle, Gopi. It's just like he's just making a little bit change in the batting order. That's remind me one of the best sledging, the comedy set sledging as concerned. And during in 1984, when West Indies came into India, when India losing a wicket because of the fast bowler Malcolm Marshall. In the first test he picked up dismantling a batting department, and second test Sunil Gavaskar just made an batting changes. He coming as a number 4 batsman, but in that particular match, Gopi, Malcolm Marshall picked up 2 wickets in 2 consecutive days, and when Gavaskar came into bat that time, then Richard said, whatever the place is coming, but you have to start from beginning only, because score is 0. And here is one more, I think just what here is Shravan is dead. He is coming as a number 1 batsman, but I think it's not a big contribution for my opening batsman. He's back into pavilion. Now he's off the mark with a single, 5 on the board for the loss of 1 wicket. Altogether, it's going to be a fantastic scenario here in this cricket ground. We can see that the crowds, even though it's a working day, it's a Friday, but still we can see that number of crowds enjoying the game of cricket. That was the kind of support which is required. It will going to lift the spirit of even the organizers as well, because they are the one responsible for any success of cricket tournament. This time appeal for leg before wicket, but ball is certainly that ball has got a little bit bad in the irrigation, so Jayant is survived from that delivery. If it is not bad, might be it is a close call, and even that ball is going a little bit down the leg stump as well. So 6 on the board for the loss of 1 wicket. Vishwas bowling very confidently in this over. After bowling 2 wide deliveries, then he came back very strongly.
Right arm over the wicket to Shawan. Shawan again without moving his feet. Try to hit the ball down to long on revision. That's the one area Shawan need to be very careful. He's not really moving his feet where he was standing. Try to hit against the line of the delivery. And the first over completed. Completion of over number first. It's a 6 for the loss of 1 wicket. And Gopi once again what Friends Kutar is knowing for the bowling department. Again they good start. They got a good start. 6 runs. Out of 6 over 2 wide balls. Otherwise I think it's a much better over which is bowled by the bowler Vishwas. बिल्कुल फ्रेंड्स कुत्तार के पास जो गेंदबाजी में डेप्थनेस है, जो शक्तिशाली गेंदबाजी का लाइनअप है, पिछले मैच में उसका प्रदर्शन देखने को मिला हमें, और यहाँ पर 6 रन सिर्फ प्रदान कर चुके हैं, इनमें से 2 वाइड है। तो मैं समझता हूँ अगर इन 2 वाइड को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो गेंदबाज ने एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर की है। और जहाँ तक सर्वाग्नि उर्वा के बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो सतीश न सिर्फ फ्रेंड्स कुत्तार के पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है बल्कि शक्तिशाली बल्लेबाजी का भी लाइनअप है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है, कम से कम 45 से 50 रनों का के आंकड़े तक उन्हें यहाँ पर पहुंचना होगा। और जब तक 50 तक के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा, और न सिर्फ 50 तक के आंकड़े को पहुंचना होगा बल्कि उनके गेंदबाज को भी सतर्क गेंदबाजी करने होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। Exactly, Gopi, and not only the bowling first over, it's not enough, but they have to bowl another 5 good overs. I think it's given him the leg before wicket as a giant is tried to swap that one in the irrigation. We thought that might be a chance of runner here. We can see that, and I think it's almost shuffled across the line of the delivery. The line of the delivery is almost in the midland off stamp, and rightly so. Shiniket has got no hesitation in his mind. Maybe he's played that one in the front foot, but he's right across the line of the delivery, Gopi. And I think it's the right decision there from Shiniket to raise his fingers. So Giant is back into pavilion. Not that much of impressive in this particular tournament. He's the one. He's got some runs in his bat in the previous tournament, the BK Champions Trophy. But Giant couldn't manage to perform in this particular tournament. So 6 for the loss of 2 wicket. Sarvagni cricketers has got a very shackling start here, but it's quite surprisingly, Gopi, lot of surgery. The batting order is a little bit changed here, but Sarvagni cricketers, Ajay still yet to come. In the previous matches came as a number 3 batsman, but now he yet to come. Now Dhanraj came into middle, and usually he's the one who can open the innings for Sarvagni cricketers. Now he's coming as a number 4 batsman. Maybe the reason that the restriction is very important. They lost the 2 wickets. Consolidation is much required. That's why Dhanraj came into middle. This time again the chance of run out direct. It might be the opportunity of run out as well. Dhanraj is looking for the single, but no damage done. 6 for the loss of 2 wicket. Sarvagni, the favourite of coming into the finals of this prestigious cricket tournament, because they are the runners of in the BK Champions Trophy. From the far end, Sanil. Right arm over the wicket, he bowls. This time, go all him, clean him up. Even Dhanraj doesn't know. He is very shocked to see that the bails are off, and he just wanted to play the reverse stroke. Looks like he was himself drags the ball into his stump. I want to see in the replay. Sanil, look at that one. He's coming wide of the crease. Ball is going down the leg stump, and ball, I think, deflected from the bat of Dhanraj, and then ball fell into the stump. Instead of flaying that one into deep backward point region, he just played that one into the wickets, Gopi, and he's back into pavilion, and they are in a deep in trouble. 6 for the loss of 3 wicket, and now I think only Ajay can lift them from trouble. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर धनराज ने स्टंप्स पर गेंद को खींच लिया था रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद सीधे स्टंप्स पर टकराए थे, और अजय का आगमन हो चुका है। और जैसा कि आपने कहा, अजय कैन लिफ्ट देयर टीम एट दिस सिचुएशन। उनके पास वो क्षमता काबिलियत है कि वो एक लंबी पारी यहाँ पर खेल सकते हैं। पिछले मैचेस में उन्होंने साबित किया है आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए, और यहाँ पर एक बेहतर पारी उन्हें खेलनी है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है सर्वाग्नि उर्वा का, तो अजय की उपस्थिति पारी के अंत तक उनके लिए बेहद जरूरी है। Exactly, Gopi, because his came a little bit early, because they lost 3 wickets, and that is just a second over in progress, and straight away his intention is very clear. Look at the confident level of the batter. Even is playing his first delivery, Gopi, but he's not really bothered about it, whether I'm playing my first delivery or not. But when the ball is hittable, he definitely will go and hit that one. Look at that one, short pitch delivery. You know exactly where the fielder is. Mid-off is up in the circle and just over the top, and one bounce over the row for 4 runs.
just breaking the shackle. That was the kind of batting required of Sarvagni cricketers. The gutsy and brave innings is required for Sarvagni if they wanted to come out from the trouble. Again, Ajay facing next delivery of Sunil. Right arm over the wicket. This time again, that was, I think, one of the strongest zone of Ajay. You cannot ball that line to him. He already hit some big shot on the deep extra coverage and lofted extra cover drive. He loves to play that shot again. He missed it completely, and there is no chance of any run at all. 10 for the loss of 3 wickets. Sunil, right arm over the wicket. Balls this time. Ajay, clever. Oh, still stands a fielder. The throw is not good enough from the fielder. I think is Pradeep not quite able to return that one into the hands of bowler, and Ajay just survived from that run out. Just I wanted to see in the replay. Look at that one, almost straight to the hands of fielder. Look at that, Pradeep. Oh, that was an underarm throw. Absolutely, just like he's bowling there, and he's not returning the ball to that into the hands of the bowler. That's why Ajay just got a chance here to get that quick single. So 2 overs completed after completion of over number 2, and Sarvagni Urva still they are not really out of the trouble. 11 for the loss of 3 wicket, and it's going to be very interesting to see that then there's 2 overs. I think the bowlers really dominated of Franz Kutar, unless the one boundary which is came from the bat of Ajay. I think otherwise it's going to be very disaster for Sarvagni Urva. But still they got the opportunity to bounce back to this in this innings, because 4 overs remaining, 24 possible deliveries remaining, and wait and see how many runs they will going to score in 24 deliveries. And having Ajay in the middle, having Sharan in the middle, it's definitely going to be very difficult to tell anything about the target. And as far as winning this match for Franz Kutar is concerned, I think they have to continue that bowling. Oh, what a delivery. Fantastic one. Appeal for leg before wicket. Umpire says it's not out. Just an excitement. Maybe that ball, the impact of the line is outside the line of half stamp. But very good delivery there from Pradeep. Just a slower one. Slower full toss. That was really going to be a trouble. The batsman, especially when the bowling like Jagadish Paddy is bowling some slower one. The bowling action is a left hand, and that means he's bowling the wide of the crease, and tried this time, lofted high and gone into the distance. Oh my goodness, he got the distance. Look at the stroke there from Ajay. Looks like Gopi, looks like not that much of enough timing, but he's got a power. He got a power, he got a muscles power. And look at that ball travels and gone with the direction of the wind towards a deep extra cover for a maximum. And for a fantastic struck, Gopi. Just like I mentioned the previous tournament as well, when he was hitting the ball, even he's not really getting the time, but he's got a muscles power. He's just muscles that one. बिल्कुल सतीश, और ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में जो बाउंस उछाल लेती गेंद, उस उछाल को अजय ने पहले ही भाप लिया था और ऑफ द बैकफुट गेंद को उछाला. शक्तिशाली क्रिकेटर है अजय, और अपने शक्ति का उन्होंने अपने ताकत का इस गेंद पर इस्तेमाल किया और गेंद को काफी लंबे छक्के के रूप में इस वक्त उछाल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर. बेहतरीन स्ट्रोक. Absolutely, one of the delightful stroke to watch. But he's a very strong player in the offside region, especially when it's going to play extra cover, lofted stroke. He's been outstanding. And here is Pradeep bowling away from us, left arm to Ajay. Ajay this time outside the line of off time, but Ajay a little bit surprised to see that why umpire not given a wide. That's well within the reach of the batsman. That was a wrong one there from Jagadish. He's not bowled incoming delivery. It's just a little bit away going delivery for the right-hander batsman. Here is Jagadish, right arm over the wicket. This time again a quicker one, absolutely quicker one, good one there from Pradeep. And surprised the batsman with a good delivery. One more addition to total in the form of leg by with that single scoreboard moves on to 19 for the loss of 3 wicket. Slowly Sarvagni Urva little bit coming out of the trouble now. Just the Ajay just lifting, just like I mentioned, he is the one can lift Sarvagni Urva from the trouble, and already he got 1 boundary and a 6 from this bat. Again this time Sharan really not a good batting performance there from Shawan. Again the ball is just passing between his 2 legs and little bit struggling here as a Shawan as far as hitting the ball is concerned. And Jagadish so far good comeback after he conceded the 6. Then he bowled a very good tidy line and line. This time again lofted that one, fielder there the deep long on. He takes a catch. The very good running catch taken there by the fielder in the long on.
He is in a wideish long on region. He had to run across quickly to take that catch. The wicket number 4 is back into pavilion of Sarvagni Urva. Captain Shravan back into pavilion. Look at that one in a replay. And outside the line of off and almost drags that one. Outside the line of off stamp. And look at that long on fielder. Oh, that was a fantastic running catch. A little bit low down to him. But he's kept the eye on the ball. And he just managed to control his speed where he was charging in from the wideish long on region, and he picked a very good catch in there. Spectacular catch. 19 for the loss of 4 wicket. So 3 overs completed, and after winning the toss, selected to field faster, and Sarvagni Urva managed to score 19 for the loss of 4 wicket. And Gopi, and a very interesting game of cricket is going on, and of course the first 3 overs which belongs to Friends Kutar, the way the 3 bowlers are bowled, but having Ajay in the middle, Gopi, I think no question of umpire, the captain of the position being relaxed here, because he desperately wanted this danger man Ajay back into pavilion. But I think at the same time, Sarvagni Urva wanted to see this man Ajay till the last delivery of their innings. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर एक चौका और एक छक्का अजय ने झड़कर जो दबाव बना हुआ था उस दबाव को काफी हद तक वो कम कर चुके हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया, अजय की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है पारी के अंत तक सर्वाग्नि उर्वा के लिए। और जहां तक सवाल है फ्रेंड्स कुत्तार का, तो उनके गेंदबाजों को जल्द से जल्द यहाँ पर अजय बल्लेबाज अजय का विकेट उखाड़ना होगा। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला, गेंद इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर की दाईं ओर से निकलती हुई इस वक्त पहुंच चुकी है डीप कवर पॉइंट पर। स्वयं खुद जब तक वो पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड द 4th ओवर नाउ इज गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ पर एक संघर्ष देखने को मिल रहा है इस द्वितीय क्वार्टर फाइनल मैच में। और मैं समझता हूँ सर्वाग्नि उर्वा का जहां तक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 50 तक का आंकड़े तक उन्हें यहां पर पहुंचना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना चाहिए। गेंद अंदर की ओर आती हुई बेहतर गेंद थी, निप बैक, और अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त खेल दिया बड़ी मुश्किल के साथ। और गेंद जब तक फील्ड हो वहां पर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो 22 रन इस वक्त बन चुके हैं, और कुल मिलाकर चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और 22 रन 4 ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ पर ಅಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ। ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ। ಆದ್ದರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ है। गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कैन नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। शाम का वक्त 5:45 यहाँ पर बन चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है धूप का, तो धूप का अस्तित्व इस वक्त जरूर मौजूद, लेकिन धूप का प्रकोप इस मैदान पर काफी हद तक कम हो चुका है। और यहाँ पर इस श्रृंखला का द्वितीय क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाता हुआ ये गेंद कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहा, चूंकि विकेट कीपर चुके इस वक्त स्टंप आउट का मौका था जरूर, लेकिन गेंद को विकेटों के पीछे गैदर करने में असफल। और इससे पहले कि वो दोबारा गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 24 रन बच चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। सोहेल गेंदबाज अजय बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। सोहेल की गेंदों का ये गेंद अजय के लिए, दिस इज अ बिग वन, यस इट डज, इट्स अ बिग, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल। और जैसे ही गेंद बल्ले पर टकराई मैंने अंदाजा लगा लिया, मुझे यकीन हो गया कि गेंद सर्टेनली इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ 6 फॉर अ मैक्सिमम। देखिए जस्ट लुक एट दिस, एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्ट्राइक। और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है। छक्का नंबर 2 अजय के बल्ले से लग चुका है, और इस छक्के के साथ वे अपने इरादों को और बुलंद यहां पर कर चुके हैं। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था, अजय की उपस्थिति यहां पर बेहद जरूरी है सर्वाग्नि उर्वा को जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है। अजय इस बात को जानते हैं कि उन्हें इस वक्त रुकना है, एक बेहतरीन बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए खेलनी है, और अपनी टीम के नैया को एक सही तट तक यहां पर पहुंचाना है। और वो इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ उछालने में सफल, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। कुल मिलाकर 18 रनों पर अजय पहुंच चुके हैं। सिर्फ 9 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है।
शीट एंकर्स रोल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहाँ पर वो अदा करते हुए, और इस बीच अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सोहेल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर। देखते हैं अगली गेंद पर वो कौन सा अस्त्र यहाँ पर प्रयोग करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अजय के लिए ये गेंद, इस बार द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम बिगर वन, consecutive success for Ajay, and his intentions is pretty clear, just go over the top and he is doing the right thing. Just look at this. लेकिन इस बार गेंद लगभग जमीन के साथ आए थे सतीश, और जिस तरीके से गेंद को उन्होंने पिक किया था right from the spot, absolutely exquisite. Exquisite, Gopi. It's not an easy stroke to play in the books because ball, just like you're mentioning, ball is just came along the carpet, and picking that one from along the carpet, I think is need to have some good piece of the sight, which is definitely required to pick that one, and he picked that one right from the middle. Once the ball is having a contact with the bat, but then that ball definitely will going to disappear out of the park. When he's in the arc, ball will going to disappear out of the park. बिल्कुल सतीश, और consecutive sixes, 36 for the loss of 4 wicket. Out of 36 runs, 24 runs scored by Ajay. That means 66% runs of their total runs scored by Ajay. तो यह बात यह दर्शाता है कि सर्वाग्नि उर्वा के लिए अजय कितने जरूरी हैं। और यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल बाकी, और इस बार गेंदबाजी पर उतरते हुए प्रदीप, जबकि कार्तिक इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। और यहाँ पर कार्तिक क्या करते हैं देखना पड़ेगा। क्या वो आक्रामक स्ट्रोक खेलेंगे, क्या वो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे, अजय को स्ट्राइक देंगे, कौन सी बात उनके दिमाग में चल रही है, ये अगली गेंद फेंकने के बाद पता लगेगा। और इस बीच प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद हवे में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 37 रनों पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, and this is the over number 5 in progress. What a fantastic tournament is now progressing here in the name of YUVARATNA Trophy 2022, which proudly presented by Team Fortune in the sweet memory of power star पुनीत राजकुमार। और यहाँ पर गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रन्स मिलेंगे, बल्ले से नहीं बल्कि अतिरिक्त के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इनफैक्ट ये गेंद इस बार उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, फॉलो थ्रू में इस कैच को लपक लिया गया। सो एट लास्ट a fantastic innings came to an end from Ajay. इस बार गेंद मैं समझता हूं कुछ हद तक धीमी गेंद थी और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए। I want to look at that delivery, और बाएं हाथ राउंड द विकेट देखिए किस तरीके से धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर, और इस धीमेपन को समझ नहीं पाई। Just played that one too early and the ball came quite lately, and because of that no contact between the bat and ball cleanly, and because of that the bowler collected the ball on his follow through, और बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा सदी। Just change of pace in this delivery made by Pradeep, and because of that he got the wicket of vital wicket of Ajay. Exactly, Gopi. Clever thinking there by Pradeep. Change of pace you are just mentioning about. That's the only weapon we can stop the batsmen like Ajay, because he is a kind of batsman he loves to see that ball is coming to the bat very quickly. When the ball is not really coming to the bat, he was tried to post the ball, and this is the result of that. He tried to post the ball is not really coming to the bat, and that he got a result here. But one more thing you have to see that, Gopi, the immediately when he is walking towards the pavilion, one fielder from short fine leg region just running towards Ajay and congratulated for his best innings. This is really will going to lift the true spirit of cricket, Gopi. It's an absolutely very good gesture shown by the short fine leg fielder. बिल्कुल सतीश, ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट के बलबूते पर कोई खिलाड़ी बड़ा नहीं हो जाता है, उसके साथ उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाना जरूरी होता है। और यहाँ पर निस्संदेह एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेल दिया, और गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर। कोई फील्डर वहां पर ने डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, और इससे पहले कि वो थ्रो करे बल्लेबाज के पास समय अवकाश 2 रन प्राप्त करने का। हालांकि अजय का विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन वो अपना काम तमाम कर चुके हैं इससे पहले कि वो पेविलियन लौटे, और 40 रन इस वक्त बन चुके, अपने टीम को लगभग एक सुस्थिति पर लाकर ठहरा चुके हैं। ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेला, और इस पर गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन पर। बल्ला अपना खो चुके हैं लेकिन रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। शाम का वक्त, सूरज का अस्तित्व मैदान की दाईं ओर इस वक्त नजर आता हुआ समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय कर चुका है, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी
इस मैदान पर कम होती नजर आती है। शाम के 5:50 यहाँ पर बच चुके हैं और यहाँ पर ये अगली गेंद बेहतर गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा का लेग स्टंप पर आती हुई ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रन पर। एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त दिया जा रहा है यूट्यूब के जरिए और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन वातावरण, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर इस वक्त छा चुका है। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला हो सकता है और इस बीच अपना बल्ला खो चुके हैं, उसके साथ साथ अपना विकेट भी खो चुके हैं और नाखुश इस वक्त दिखाई देते हुए स्ट्राइकर बल्लेबाज से, दूसरे छोड़ के बल्लेबाज से उन्होंने कुछ कहा जरूर कि भैया ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर मुझे मिल जाता तो आपको क्या हर्ज था, तो यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे और आखिरकार देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर विकेट, हालांकि बल्ले को उन्होंने फेंक दिया था कि शायद उसकी वजह से उनका विकेट बच जाए, लेकिन बल्ले और हाथ का कोई कनेक्शन नहीं, तो इस वजह से वो पेविलियन वापस लौटते हुए और यहाँ पर विकेट नंबर 6 गिर चुका है। 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड ओवर नंबर 5 has been completed. 42 exactly 8.40 runs per over. The present run rate is now progressing at for them. मैं समझता हूँ सतीश वो बल्ला उन्होंने जानबूझकर फेंका था हताश मनोभावना के साथ, फ्रस्ट्रेशंस कि वो दूसरे छोड़ के बल्लेबाज से नाखुश थे और यहाँ पर उनका विकेट गिर चुका है और अंतिम ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी। गेंदबाज इस वक्त तैयार अंतिम ओवर लेकर, सुस्तान का आगमन यहां पर हो चुका है और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार कार्तिक, गेंदबाज सुस्तान माफ कीजिए स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाज विश्वास, काफी विश्वास के साथ इस वक्त अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया, डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया। लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद डीप मिड विकेट और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज दायरे के अंदर तैनात। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए सुस्तान के लिए गेंद को उछाला लेकिन सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, नॉट क्वाइट मिड विकेट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 42 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड स्टिल नाउ जस्ट 5 बॉल्स रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो निस्संदेह सतीश यहां पर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंडरआर्म क्रिकेट के 2 बेहतरीन खिलाड़ी तुलु फिल्म में यहाँ पर अपना अभिनय कर रहे हैं, करना और आतिफ। तो निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि और अंडरआर्म क्रिकेट के और खिलाड़ी आने वाले दिनों में तुलु, कन्नड़ा या फिर हिंदी फिल्मों में अभिनय करें। और जहां तक देखा जाए क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री का जो नाता है वो सदियों से चला आया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में भी अगर देखें तो कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में वी जस्ट टॉक टू दैट मैटर लेटर। इस बार गेंद को इस वक्त खेलना चाहता मच स्ट्राइट लाइन, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर रुक चुका है 42 रन 7 ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಪರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ. and now back to this game और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया था लॉन्ग ऑन पर स्ट्राइट अवे, लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और इससे पहले कि गेंद को वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और मैं समझता हूं अजय का विकेट गिर जाने के बाद रनों की औसत में गिरावट इस वक्त आ चुकी है, रन से ज्यादातर सिंगल्स पे बनते हुए और सतर्क गेंदबाजी, विकेट टू विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फ्रेंड्स को तार के और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद विकेट से आगे दौड़ते हुए गेंद को खेलना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट गोचित, गेंद सीधे मिडल स्टंप को कंसंट्रेट कर आते हुए उनके पैरों पर टकराए और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 8वां विकेट गिर चुका है। अब गेंदें बाकी है, कितने? 2 गेंदें बाकी है कुल मिलाकर। 2 balls now remaining in their innings। तो जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड क्रिकेटिंग वर्ल्ड, तो मैं समझता हूँ सदियों से ये नाता यहाँ पर चला आ रहा है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को देखा जाए तो पहला ऐसा उदाहरण मिलेगा संदीप पाटिल, जिन्होंने कभी अजनबी भी थी, देवश्री रॉय। इट वाज रिलीज्ड इन 1983-84 आई थिंक सो। उनमें उन्होंने एज अ हीरो उन्होंने काम किया था। उस फिल्म में सैयद किरमानी ने विलन का किरदार निभाया था और हीरोइन थी देवश्री रॉय जो कि बंगाली एक्टर थी। वो
फिल्म 1983-84 में रिलीज हुई थी और उसके बाद मालामाल फिल्म इट वाज रिलीज्ड इन आई थिंक सो 1991 व्हेन उसमें नसीरुद्दीन शाह हीरो थे, जबकि सुनील गावस्कर ने उसमें उनमें एक अतिथि रोल में वो नजर आए थे। तो ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर मिलेंगे और सबसे बेहतर उदाहरण मैं दूंगा उनकी पारी यहाँ पर समाप्त होने के बाद। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज काफी आगे दौड़ा है और यहाँ पर एक और विकेट गिर चुका है। 44 for 9 and now 2 balls remaining and the last wicket they got in their hand। और विकेट यहाँ पर गिरते हुए ताश के पत्तों की तरह। तो देखते हैं अंतिम 2 गेंद में उनके पारी में और कितने रन बटोर पाते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा सतीश, पाकिस्तान के फॉर्मर आरंभिक बल्लेबाज मोहसिन खान, जो कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो सीधे फिल्म इंडस्ट्री आए बॉम्बे और उन्होंने कुछ ऐसे फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया, खासकर बंटवारा इट वाज रिलीज इन 86-87 एंड आफ्टर दैट साथी फ्यूचर्ड आदित्य पंचोली के साथ वो नजर आए थे। महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म का। और ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे और खासकर रिसेंट उदाहरण मैं दूंगा अजय जडेजा, जिन्होंने खेल फिल्म में सलीना जेटली के साथ वो हीरो के तौर पर नजर आए थे। वो फिल्म रिलीज हुए थे 2003-2004 में। और यहाँ पर 2 गेंदें बाकी है। ये गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर 1 रन न मिलेगा। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट एंड नाउ द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। बतौर हीरो, बतौर विलन के रूप में, बतौर सपोर्टिंग के रोल में कई क्रिकेटर्स फिल्म इंडस्ट्री में नजर आए हैं और ये बात ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में गहरा संबंध है। तो अंतिम गेंद, तो लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया एंड taken just inside the fence and their innings is up in the final delivery of their innings and they finished with 45. They were all out, they were bowled out for 45 in their stipulated 6 overs and now the target for Friends Kuttar is 46 and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not। तो 46 रनों का लक्ष्य। और जहां तक सवाल है हाईलाइट जो मैं कहूंगा सर्वाग्नि उर्वा की पारी का, तो निस्संदेह अनडाउटफुली अजय स्कोर्ड 24 runs in just 15 deliveries। Just look at it, टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है 11 balls 24 runs over 220 स्ट्राइक रेट। तो जहां तक सवाल है अजय के इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत और दूसरे कोई भी बल्लेबाज दो अंक का आंकड़ा यहां पर नहीं पार कर पाया। 2-0, 1-0, 5-3-0, 1-1 और अतिरिक्त यहां पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहां पर अतिरिक्त है यहां पर देखिए 8, तो 24 रन। तो almost just over 50% of the total runs scored by Ajay and that is an absolutely brilliant knock, came under pressure from him and because of his help they finished well with 45-46 the target। और देखते हैं सतीश इन 46 रनों के लक्ष्य तक फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाज यहां पर पहुंच पाएंगे नहीं। उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं एंड विल बी बैक राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक विद योरसेल्फ माय क्लोज फ्रेंड सतीश अंग्रेजी में आप आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। I request Friends Kuttar opening batters, please go for bat immediately. We are having a shortage of time. Now it's exactly 46 is a target now for 46 target for Friends Kuttar to qualify for the semi-final of this prestigious YUVARATNA Trophy 2022. So fantastic information. Thank you very much, Gopi. And just you are talking about the relationship of the international cricketers with the Bollywood movies. Absolutely, it was a fantastic
So thank you, and thank you, Gopi, for that information. And from the commentary box, and so within 28 minutes, I think Sarvagni cricketers have to finish this 6 overs quota. First over, right arm over the gate, beautifully bowled. I think ball, just a ball is missed and a wicket at that ball is a little bit outside the line of off stump, and just an inches that ball missed the off stump again. And good start there by Sustan in the first over, the first delivery. And Tagraj is a striker. Right arm over the wicket here. Again, the lack of placement. Chance of run out in the last strikers, and Nikhil is gone. Sarvagni cricketers has got a dream start. The second delivery itself, they got a big wicket of Nikhil. Look at that one in the replay. Tagraj drives that one powerfully. No question of any run, because that ball went very quickly to that shot. Extra cover. One of the best fielder in that region. Pradeep collects the ball, returns the ball. And Nikhil is not in the picture. Once again, disappointment performance from Nikhil, being the one of the top performer for the side of Friends Kutar. Again, he fails to contribute from the bat, but this time he is definitely going to be very unlucky. Without facing a single delivery, is back into pavilion. Always is going to be a disappointment factor for any batter when they were walking towards the pavilion in the form of run out. Good start there from Sistan. Right arm over the wicket, he bows. Driven firmly down to deep long on. Protection there in the deep, so that have to settle for the single. Dandras, the fieldsman, there in the deep long on, fields the ball. And first run comes off here for Friends Kutar. And one for the loss of 1 wicket. Now the deep long on is fielder coming inside the ring, because one fielder from I think as a mid-off is going back to deep long off, and the one fielder has really given protection towards a deep backward square leg. The very interesting field set. Long off and one deep backward square leg. The two fielders are in the deep here for Santosh. Sustan, right arm over the wicket. Ooh, that was a one more good delivery there from Sustan. Outstanding line and length indication. Extra bounce as well. Santosh went for the cover drive, but ball misses his bat, because that ball is got an extra bounce with the time of the batters going for the off drive. Sustan got a very good start, just like what the bowlers of the opposition team has got. Oh, that was again the little bit urgency shown there by Vijay in the negation. Tried to stop that one. That ball went very quickly. Good piece of fielding actually, Vijay, but he couldn't manage to gather the ball. Instead, that ball hits his front leg. Again, that ball is went towards his front, so that Santosh managed to complete that couple of runs. With that couple of runs, Coburn was on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Sustan back to his bowling mark. Away from us with a short run up. Pass the umpire Sriraj. Balls to Santosh. Santosh lofted that one. Not having enough bat onto that, but still he managed to go over the top. And before the fielder Pradeep run back to collect that one. Again, ample time for the batter to complete the single. Not quite getting control over that stroke. And they got a single for that. It's a very good over. The first over completed, chasing 46 to win this match. Just 4 on the board for the loss of 1 wicket. And Gopi Sarvagni cricketers, they got a really good start from Sustan. 4 in the first over, power play. And I think it's a big damage here for Friends Kutar, is that they lost the wicket of Nikhil, one of the outstanding the batter. But so far he's not really having the good time from the bat. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर पहले ओवर में विकेट जरूर गिर चुका है फ्रेंड्स कुत्ता का, लेकिन उनके बल्लेबाजी में जो गहराई है, डेप्थनेस है, और भी कुछ ऐसे बल्लेबाज मौजूद है जो मैच का तख्ता पलट कर रखने की क्षमता रखते हैं. और निस्संदेह पहले ओवर में कुछ हद तक ड्रॉबैक जरूर उनके लिए साबित हो चुका है विकेट गिर जाने की वजह से. लेकिन जहाँ तक कंपैरिजन देखा जाए तो मैं समझता हूँ पहले ओवर में शायद उन्होंने भी उतने ही रन बनाए थे. तो पहले ओवर में कंपैरिजन अगर देखा जाए 6 रन बनाए थे उन्होंने. 6 रन स्कोर्ड बाय सर्वाग्नि उर्वा, और यहाँ पर 4 रन बनाए. तो बाउंस बैक करने का मौका यहाँ पर है. दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ अगले 2 या 3 ओवर में बिना किसी विकेट को कम से कम 20 से 25 रन बल्लेबाज बटोरते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर वो सही राह पर आ सकते हैं.
All absolutely go behind. It's a oh my goodness! Ball is clearing the ground. Down to deep long on boundary for a maximum. There's a huge six coming from the blade of Santosh, just like what Ajay is did, and against Ajay's bowling. Now Santosh lofting that one down to deep long on, and he's just sending the message. You not only the you are going to hit the big six, but I can hit the six as well. And Santosh just sending a strong message here for Ajay that I am also capable of hitting a big shot. Gopi. बिल्कुल, सिर्फ आप छक्के लगा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं भी काबिलियत रखता हूं छक्का लगाने की, और यहाँ पर खासकर आपकी गेंद पर मैं छक्का लगा चुका इस वक्त। और देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद पर अजय कौन सा अस्त्र प्रयोग करते हैं। This is a big wide. That was what the scenario we can see expecting from the bowler when the batters hitting some big shots. He's a little bit frustration and pressure. Now he's trying for the quicker one in the negation. Ball far outside the line of off stamp, and wide signal by umpire. 11 for the loss of 1 wicket. Ajay back to his bowling mark. Right arm over the wicket, he bounce. Oh, extra bounce. But I think Santosh not happy with himself, because this is one more shot which delivery Gopi. If he able to wait for the delivery, he can hit the ball one more six down to deeper wideish long on. But that's why he's a little bit frustrated that he couldn't manage to wait for that turn of the delivery again. Oh, that was really, I think maybe the Ajay started to feel the pressure because of that mighty stroke came from the bat of Santosh. He's not really controlled his line, control his length as well. And one more wide is considered. 12 for the loss of 1 wicket. That's the beauty of cricket sometime. It's very difficult to handle the pressure. And Ajay taking his own time, need to be. And from the far end, right arm over the wicket, he bows a lovely leg cutter in the occasion. That's time Santosh waiting for the turn of the delivery, opening a piece of the bat and just gave the direction down to short tournament division for a easy single. And with the single, scoreboard was on to 13 for the loss of 1 wicket. Good comeback there by Friends Kutar in the previous over. They didn't got enough runs on the board. They quickly realizing Santosh, one of the experienced campaigner for the side, and need to get some runs in the power play overs, and they got what they wanted. It's a full toss but missed out by Tyagaraja. Almost can hit the ball down to extra cover, and there is no protection has been given for him in the offside region. He's just missed the opportunity to throw the bat towards the line of the delivery, but it's a quicker full toss, fast quick full toss from Ajay there. That's why he missed it completely. Oh, one more quicker run. That's one of the weapon what Ajay has got. And this is a really unplayable quicker one there from Ajay. Surprise Tyagaraja in the negation, and wicketkeeper Jayant managed to cut the speed of that ball from Ajay, and there is no possibility of any run. Ajay, right arm over the wicket, ball again. This time quite interesting to see that decision of umpire here. Will it going to be a now? Umpire says it's deliberate, and rightly so, because one more quicker delivery Gopi, and the batsman not really off for the stroke. He's deliberately padding that one. Instead of taking that deliberately padding, he's almost surprised with the face of the delivery. That's he couldn't manage to put the bat into the line of the delivery. Instead of putting his bat, he putting his leg into the line of the delivery. And as for the rules and regulation is concerned, it's deliberate. But outstanding comeback. After conceding 6, after bowling another 2 deliveries as a wide, still he didn't manage to pull the things back once again in favor of Sarvagni Urva. बिल्कुल सतीश, और अंतिम गेंद जो थी अजय की काफी एक्स्ट्रा क्विकर पेस के साथ आई थी, और इससे पहले के बल्लेबाज गेंद पर स्ट्रोक खेले, गेंद सीधे आकर उनके पैरों पर टकराई और निकल गई स्क्वायर लेग की दिशा में। और निस्संदेह आउटस्टैंडिंग कमबैक इस वक्त कर चुके। छक्का प्रदान करने के बाद 2 वाइड उन्होंने फेंकी, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए उन्होंने इस ओवर को समाप्त किया, और सिर्फ 9 रन उन्होंने प्रदान किए। छक्का और 2 छक्के को एक्सक्लूड, 2 वाइड को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो सिर्फ 1 रन उन्होंने बल्ले से बैट से प्रदान किया है, तो बेहतर ओवर कहा जाएगा अंडर दिस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस। अब 33 रन चाहिए, ओवर्स बाकी है 4, देखते हैं आगे क्या होता है। Absolutely Gopi, and the 2 overs, it's the equal battle is on. Both the teams has got opportunity to win the match. Just look at the record run rate. That's going to be a little bit problem here for Friends Kutar, that they have to get another runs in the form of remaining runs in at 8.25 runs per over. The first ball of the over number 2nd, this time outside the run of off time too far, so that umpire Sriraj, no hesitation in his mind to call that as a wide. Sagar is a new bowler, is one more young talented bowler for the side of Sarvagni cricketers. Starts with the wide. And with that extra scoreboard now moves on to 14 on the board for the loss of 1 wicket. Target 46, that means another 32 more runs required for the wicket. The outside edge of the bat, not quite getting hold of that one properly. Just a single for the batsman. Little bit of collision between Santosh and bowler Sagar, because Sagar just looking towards the ball where the ball is bent, but at the same time Santosh looking towards the run, and that's why that little bit
collision between bowler and the batter. So 15 for the loss of 1 wicket. The battle is on for the victory. Tyagaraja back on strike now. He's batting on 1. So far he's not really able to get some big shots in his bat. Now he's waiting for some loose delivery. But Sagar is a very good bowler for the side of Sarwag. This time he lofted, and he got the fielder. And it all drops the catch. Can you believe this? Sujit not only drops the catch, but he puts the ball outside the boundary line as well. It's definitely going to be disaster for Sarvagni. Not only they lost the big wicket. Look at that one on replay. Sujit is all in the right position to take the catch. Look at that one. After ball hitting his hand, ball going over the rope for 4 runs. Absolutely, the luck is going in favor of Tyagaraja. 19 for the loss of 1 wicket. Sagar bowling away from us. Right arm over the wicket, he bowls. Oh, that was a beauty. That was just an inch, just that ball missed the stump. Tyagaraja really dealing with some luck here. It's got a bat into that. Otherwise, that ball definitely going to hit the stumps. Maybe the ball is brushed the stump. Just seeing the body language of wicketkeeper behind the stump. Looks like ball might be kissed that wicket. The bails are not off. I'm also surprised why the ball is not hit the stumps. Sometimes it's happening in cricket, especially in a tennis ball. Underarm cricket again drags the ball almost into the stumps. Lucky now for Santosh. Both the batters are really lucky in this particular over. So 1 more run is added. Total 21 for the loss of 1 wicket. 46 is the target. 25 more runs required for the victory. This is the over number 3 in progress. 25 required. 20 balls remaining. The match is evenly poised. The better over here for Friends Kutar. They got some lucky run in this particular over. Tyagaraja, the good striker of the ball. Sagar bowling away from us. So far conceded 8 runs. Right arm over the wicket he bowls. This time again looking for the expansive shot. Not really getting the timing. Mistimed that one. Ball went towards a deep long on. His intention is to get that one down to deep long off. 1 more addition. 22 for the loss of 1 wicket. Now 24 required for the victory. The balls remaining exactly 19. Sagar, right arm over the wicket to Santosh. Santosh tried to turn that one on onside region. Vijay at a short fine leg region fields the ball. 1 more addition in the form of leg bites. 1 more over completed. Completion of over number 3 then chasing 46 to win this match. Half of the job completed, Gobi. And very interesting to see that. Half of the over is completed and half of the run is also completed. Now still half of the over remaining. Still they have to get another half of the runs. That means 23 runs completed. 23 runs required in remaining 3 overs. That means asking run rate is just under 8 runs per hour. Exact calculation is concerned 7.67 runs per hour. 6-7 runs per hour is the required run rate. And seeing all these factors, Gopi, I think 3 overs is going to be a more interesting game of cricket in front of you spectators, Saudi and UCG ground. बिल्कुल सतीश और यहाँ पर 3 ओवर में 23 रन बन चुके हैं 3 ओवर में 23 रन बनाने हैं exactly 7.67 runs per over. The present run rate is now going on here for them. Exactly 7.67 runs per over. They have to score for victory in remaining 3 overs. And as far as the victory of this match is concerned, this match is now evenly poised. जैसा कि आपने कहा, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. और संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अजय इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से. शाम के 6:20 बचते हुए पहली गेंद इस वक्त रक्षात्मक इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल खेलना चाहा संतोष ने. मैं समझता हूं वो स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, त्यागराज को स्ट्राइक देना चाहते हैं क्योंकि त्यागराज एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और यहां पर इस प्रयत्न में सफलता उनके पक्ष में नहीं आई और आखिरकार गेंद को ढकेला तो जरूर है लेकिन रन लेने का उन्हें कोई मौका यहां पर नहीं है. और यहां पर अंपायर इस बीच कुछ कहते हुए नो बॉल का इशारा यहां पर घोषित कर चुके हैं. तो शायद एक अतिरिक्त खिलाड़ी एक्स्ट्रा फील्डर जो कि पॉपिंग क्रीज के पीछे इस वक्त था. 3 खिलाड़ी और इस वजह से इसे नो बॉल घोषित किया गया है सही तरीके से अंपायर द्वारा. 1 रन मिलेगा और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रनों पर. तो 1 रन तोहफे के रूप में उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ. अब 22 रन चाहिए. गेंदें बाकी हैं 24 balls remaining. 22 runs they have to score for victory. और गेंदबाज फ्री हिट गेंद इस वक्त
बल्लेबाज के लिए दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली गुड वन जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन स्कोर बोर्ड रुक चुका है इस वक्त 24 रन एक विकेट के नुकसान पर और डॉट गेंदे इस वक्त चाहिए सर्वाग्नि उर्वा को इस मैच में वापस आने के लिए और जहां तक सवाल है रनों की सख्त दरकार इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार को अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश करना चाहा रन के लिए दौड़ पड़े विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो निशाना टकरा चुका है लेकिन इससे पहले मैं समझता हूं बल्लेबाज पहुंचे या नहीं देखना पड़ेगा नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर तो यहां पर देखना यह है कि जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया था तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं तो तीसरे अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त यहां पर देखते हुए कि क्या हुआ था उस गेंद पर और देखते हैं क्या निर्धार वो देते हैं तो यहां पर शाम का वक्त धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है 6:20 बज चुके हैं और धीरे धीरे मैदान पर रोशनी कम होती हुई अंधेरा सा छाता हुआ और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहां पर एक शानदार प्रगति करती हुई युवा रत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम पर जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं टीम फॉर्च्यून और इस श्रृंखला का आज का 7वां मैच द्वितीय क्वार्टर फाइनल मैच पूल ए का यहां पर खेला जाता होगा इस मैच की विजेता टीम का सामना होगा अगले मैच में जो कि पहले सेमीफाइनल मैच में 5 स्टार अड्डूर के साथ और यहां पर संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए ही इज सेफली होम नॉट आउट और यहां पर सब कुछ सुरक्षित एक रन पूर्ण कर चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस एक रन के साथ 25 now for the loss of 1 wicket and 21 more runs now they have to score for victory in remaining 17 deliveries in fact और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अजय इस वक्त काफी सोच विचार करते हुए कि किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए गेंदबाजी में और बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद हैं त्यागराज वो भी इस वक्त सोच विचार करते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए कुल मिलाकर ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतरीन साझेदार यहां पर निभाते हुए और अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद थी ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी एक रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच और बाई का इशारा अंपायर द्वारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर रन इस वक्त चाहिए फ्रेंड्स कुत्तार को वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और दर्शकों की तादाद इस ढलते हुए शाम में इस वक्त काफी हद तक बढ़ चुकी है मैदान के चारों ओर दर्शक यहाँ पर नजर आते हुए मैच का मुआयना काफी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर करते हुए अजय फील्डिंग में जमावट करते डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर तैनात होने के लिए उन्होंने कहा और एक अगली गेंद लेकर तैयार गेंद को ड्राइव कर दिया सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल गेंद को लॉन्ग ऑफ पर्सन तो उसने ड्राइव कर दिया और एक रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस और त्यागराज बैक ऑन स्ट्राइक अजय की गेंद त्यागराज के लिए अंदर की ओर आई और विकेट कीपर के हाथों में इस वक्त गेंद पहुंच चुकी है लेकिन ऑफ द पैड ऑफ द लेग इन फैक्ट और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इससे पहले कि बल्लेबाज गेंद पर कुछ स्ट्रोक खेले देखिए किस तरीके से गेंद अंदर की ओर आई थी पैर पर टकराई हवे में उछली और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं 28 नाउ 18 टू गेट एंड 13 balls remaining again reverse shot खेलना चाहा not quite mid leg hit once again he gets a single for that और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 तो बेहतर ओवर यहां पर अजय का समाप्त हो चुका है और अब 4 ओवर की समाप्ति 29 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर 29 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs 46 द टारगेट 17 टू गेट 17 रन 12 गेंदों में और यहां पर सतीश कुछ हद तक रिक्वायर्ड रन रेट कुछ हद तक बढ़ चुका है एक्जैक्टली 8.5 रन पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और जहां तक सवाल है करंट रन रेट का तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7.25 रन प्रति ओवर अब मैं समझता हूं ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है इट्स गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर फॉर द बोथ साइड्स यहां पर 10 से 12 रन 8 से 10 रन कम से कम बटोरते हैं फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाज तो लक्ष्य उनके लिए आसान हो जाएगा इस ओवर में किफायती गेंदबाजी अगर करते हैं सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाज जो इस वक्त नया ओवर प्रारंभ कर रहे हैं तो निस्संदेह यहां पर लक्ष्य फ्रेंड्स कुत्तार के लिए कठिन हो सकता है कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर फॉर द बोथ साइड्स Exactly, Gopi. It's a total game plan. You can see that the body language of the two batters in the previous over.
They know exactly Ajay can be the very effective. He can take the wicket. So they just rotate the strike in this because they knows that the two bowlers have to be introduced. Two new bowlers has to be introduced. They're targeting that 2 overs. Gopi. That is 100% is a game plan between the Tyagaraja and Santosh knows that they will going to target two new bowlers. That's I think is a good thinking as for the point of view of winning this match is concerned because Ajay is a kind of bowler. It's a very difficult to hit some big shot against his bowling. So that batsmen are a little bit playing a defensive frame of mind. Now 17 to get from 2 overs. Gopi. They know is that if they're able to get one big hit in out of that 2 overs, they will certainly safe into the target. बिल्कुल सतीश और सही बात आपने फरमाया बिल्कुल गेम प्लान के अनुसार यहाँ पर खेलते हुए वो जानते हैं अजय का ओवर कोटा अगर पूरा हो जाएगा तो 2 नए गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो वो 2 गेंदबाजों की गेंद पर उन्हें फायदा उठाना होगा तो यहां पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो इस वक्त संपूर्ण गेम प्लान के साथ पिछले ओवर में अजय की गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजी की थी देखते हैं 17 रन 12 गेंदें बाकी और विजय गेंदबाजी पर इस वक्त लगते हुए ऑफ द टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ा डीप मिड विकेट पर फील्डर काफी पीछे धनराज गेंद पर पहुंचते हुए थ्रो पहुंचा और इस बीच थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए विकेट कीपर जयंत और ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ा था कलाइयों के साथ सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए डीप मिड विकेट पर धनराज मौजूद थे काफी पीछे जब तक वो दौड़ लगाकर पहुंचे इस वक्त गेंद को थ्रो करें गेंदबाज विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का 15 रन चाहिए 11 गेंदों पर एक और बेहतर मैच क्यों सतीश पिछले मैच की तरह और द मैच इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू अ नेल बाइटिंग फिनिश और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से विजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विजय की गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा नॉट क्वाइट पिट लेकिन गेंद पहुंची गली पर फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन से आए उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 32 14 टू गेट 10 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग और इस वक्त शीट एंकर्स रोल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए संतोष 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से ही इज बैटिंग ऑन 18 इंक्लूडिंग 1 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक नॉक कमिंग फ्रॉम हिम वेल सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द अदर एंड फ्रॉम त्यागराज हालांकि त्यागराज कुछ ज्यादा आक्रामक रवैया नहीं अपनाए हुए 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए लेकिन एक अच्छा साथ यहां पर निभाते हुए संतोष का कुल मिलाकर ये साझेदारी इस वक्त धीरे धीरे खतरा पैदा करती हुई यहां पर सर्वाग्नि उर्वा के लिए तो जहां तक सर्वाग्नि उर्वा के कमबैक करने का सवाल है यहां पर सबसे पहले उन्हें इस साझेदारी को यहां पर तोड़ना होगा और उस प्रयत्न में गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज विजय इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त या डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद और जहां तक सवाल है कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन नहीं डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनात लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद और गेंदबाज इस बीच तैयार विजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए त्यागराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विजय की गेंद इस बार त्यागराज के लिए गेंद को ड्राइव करना चाहा गेंद इस वक्त गई है शॉर्ट थर्ड मैन पर मिसफील्ड और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े यशस्वी पूर्ण करते हुए यहां पर स्ट्रेट अवे दबाव फील्डर के ऊपर यहां पर अंतिम क्षण में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली थी और आखिरकार गली पर जो गलती इस वक्त फील्डर ने की उसकी बदौलत बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुका हर रन इस वक्त कीमती बेशकीमती साबित होता हुआ फ्रेंड्स कुत्तार के लिए और विजय के लिए जहां तक सवाल है कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और गेंदबाज विजय एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए त्यागराज एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ और मैदान के बाहर रास्ते की पत्तियां स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इस वक्त जल चुके हैं और अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार विजय दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन नहीं गेंद 4 नहीं 2 पर रोकने में सफल इस वक्त फील्डर यहां पर अंतिम क्षण में ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा जाएगी लेकिन दूसरे फील्डर ने गेंद को रोक लिया था और 4 की जगह सिर्फ 2 रन यहां पर मिले बल्लेबाज को और यहां पर रन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर तो देखिए किस तरीके से यहां पर रोका था डीप थर्ड मैन पर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 10 रन चाहिए गेंदें बाकी हैं 8 तो
अभी भी मैच बराबरी पर रुका हुआ, दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। विजय एक बार फिर से तैयार था ना, तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतरीन गेंद थी, पैरों पर टकराई, ऑफ कटर गेंद, विजय खुद दौड़कर आए स्क्वायर लेग पर, लेकिन इससे पहले पहुंचे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और स्पीड बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 37 नाउ, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और यहां पर जहां तक सवाल है अजय, तो इस वक्त जहां तक सवाल है विजय गेंदबाजी करते हुए, और अजय जो कि 2 ओवर का कोटा बेहतरीन फेंक चुके हैं, उनके बड़े भाई अब छोटे भाई को यहां पर अपना किरदार अदा करना है। और देखते हैं यहां पर विजय इस ओवर में बची हुई जो आखिरी गेंद है उसको किस तरह से फेंकते हैं। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बीच फील्डर पहुंचते हुए दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर थ्रो बचा और बेहतर थ्रो, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। संतोष की लंबी पारी पर पर्दा गिर चुका है और निस्संदेह इंटेलिजेंट थिंकिंग इस वक्त की थी, चतुर सोच, गेंद को फील्ड करते हुए गेंद को इस वक्त थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर, और जहां तक सवाल है वो थ्रो भी पहुंचा, देखिए स्ट्राइट ओवर द स्टंप, जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स, और थ्रो को रिसीव करके रन आउट करने में कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई विकेट कीपर को, और इसी के साथ विकेट गिर चुका। अब 6 बॉल्स एंड 8 रन्स, और जहां तक सवाल है सतीश, अब चौके और छक्कों की उतनी ज्यादा दरकार उन्हें नहीं है, अगर सेंसिबल क्रिकेट भी अंतिम ओवर में अपनाते हैं तो फ्रेंड्स कुत्तार यहां पर इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक सवाल है सर्वाग्नि उर्वा का, इस बचे हुए अंतिम ओवर में उन्हें डॉट गेंदे फेंकने ही होंगे, विकेटें उखाड़ने ही होंगे अगर उन्हें इस मैच में वापसी करना है। तो गेंद के स्वभाव को देखते हुए मैं कहूंगा सतीश कुछ ज्यादा कठिन सा लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम आखिरी गेंद फेंकी जाए। तो यहां पर जहां तक विजय का सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi. The match is evenly poised because seeing the condition of the weather condition, looks like it's about the dark is slowly taken place here, and 8 runs to get from 6 balls. I think it's even though I think it's manageable. Both the teams has got opportunity to win the match, and just like I mentioned about it's a game plan, Gopi. Before the start of that the over of Vijay, I already mentioned that they played a very good game of cricket against the bowling of Ajay. That's a game plan. Then once the Vijay came into ball, they started to open up a little bit and they got the runs what they really wanted. Now they won the first step. Now they have to win another step. That's 8 runs required from 6 balls, and another new bowler is brought into attack. That's I'm mentioning about it. That's a game plan, Gopi. It is absolutely game plan. Now Sustan now coming from the wrong end. His ball is first over from this end. Now he's going to bowl the second over from the far end, and wait and see how well these two batters will going to get 8 runs from 6 balls. But desperately required some dotted deliveries. At the same time, sensible batting required for our friends Kutar to win this match. बिल्कुल सतीश, सेंसिबल बैटिंग की इस वक्त जरूरत है फ्रेंड्स कुत्तार को, जबकि एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है इस अंतिम ओवर में सर्वाग्नि उर्वा को। 8 to get from 6 11, इस फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई शाम के 6:30 यहां पर बच चुके हैं, और ये मैच भी सतीश 1 घंटे से ऊपर इस वक्त जा चुका है। तो ये बात ये दर्शाता है कि संघर्ष की तीव्रता कितनी ज्यादा हद में, कितनी ऊंची हद में यहां पर बरकरार है। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार सीधे कवर पॉइंट पर थ्रो पहुंचा, रन आउट, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट कवर फील्डर अजय के हाथों में, हालांकि कैच जरूर छूटा लेकिन रन आउट यहां पर जरूर हुआ। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंद फेंकी थी, गेंद को इस वक्त ड्राइव किया था त्यागराज ने, गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट कवर फील्डर अजय के हाथ में, गेंद उनके हाथों से छूटी लेकिन यहां पर रन आउट करने में सफल। अब 8 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी। अब मैं कहूंगा सतीश कुछ हद तक लक्ष्य कठिन यहां पर नजर आता हुआ फ्रेंड्स कुत्तार के लिए। Exactly, Gopi. It's a clever piece of fielding set, isn't it? It's an unorthodox cover point, and not in the deep, but is in the middle of that. It was unorthodox. Certainly, it's going to be a chance of single. It is good thinking by the captain's point of view, by the Sarvagni, keeping one fielder in the very close to the batter, so that they got the result. They able to not only able to stop the runs, but even they got a wicket of the very subtle batsman. I think now it's going to be a good chance here for Sarvagni cricketers, because the new batters coming into middle, it's not so easy to handle the pressure. बिल्कुल सतीश, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और नए बल्लेबाज को इस अंतिम ओवर में प्रेशर दबाव को झेलना उतना आसान नहीं है। और देखते हैं इस बार बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे, महेश इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, विश्वास इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 8 गेंदें चाहिए, 8 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। रिवर्स शॉट, टॉप एज, बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में गेंद पहुंच चुकी है, 1 रन मिलेगा। धनराज का थ्रो
सीधे पहुंचा स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स। दूसरा रन चुराने का प्रयास और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। एक और विकेट देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, रिवर्स शॉट खेला था, टॉप एज पर गेंद टकराई, धनराज ने गेंद का इंतजार किया, बैकवर्ड थर्ड मैन पर थ्रो उन्होंने किया सीधे विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम यहां पर तमाम किया। तो अब 4 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए 7। तो गेंद और रन, बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच में 3 का फासला अभी भी बरकरार है सतीश। Absolutely, the difference between us remains the same between run and ball, but through magnificent piece of fielding performance, the return, the throw which is coming over the bails. One is from Sagar from the deep long on. One from Ajay is a backhand throw, and one from Dhanraj. That really going to be very crucial in this moment. And now Gopi, it's very interesting. 7 to get from 4 balls, and new batters now came into middle, and I think. Nishant, I think you have to handle the pressure now. But still, match is not yet over. The match is evenly poised. बिल्कुल सतीश, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और निशान का आगमन हो चुका है। महेश नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, सुस्तान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दबाव दोनों टीमों ऊपर साफ बढ़ता हुआ, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को चलना चाहा, शॉर्ट फाइनल की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज और 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। न सिर्फ विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए बल्कि शॉर्ट फाइनल लेग फील्डर के हाथों से भी गेंद छूटी थी। इस वक्त मैं समझता हूं गेंद विकेट कीपर जयंत के सिर के ऊपर से निकल चुकी थी, एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम क्षण में, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 40-40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ 6 टू गेट। 4 कुल मिलाकर 6 रन चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी हैं 3 और 2 रन प्रति गेंद की औसत से इस वक्त रन बनाने हैं। और देखना यह है कि यहां पर फ्रेंच कुत्तार के बल्लेबाज इन 6 रनों को बचे हुए 3 गेंदों पर बना पाते हैं या नहीं। सुस्तान की गेंद दाहिना तो बढ़ता विकेट महेश के लिए, फील्डिंग में इस वक्त रन अप गेंदबाजी शुरू करने से पहले एक बार फिर से उन्होंने फील्डिंग का मुआयना किया और इस वक्त गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए, फिलहाल यहां पर फील्डिंग में कुछ जमावट चलती हुई और फील्डिंग में हालांकि डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर तैनात नहीं है। इसके बारे में उनके टीम के खिलाड़ी जिक्र करते हुए गेंदबाज से, लेकिन गेंदबाज ने कहा जी नहीं सब कुछ सही सलामत है। और यहां पर फील्डिंग में एक बार फिर से फील्डिंग के जमावट के बारे में बातचीत हो रही है और कुल मिलाकर 6 रन अभी भी चाहिए विजय के लिए। लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद काफी वाइड आ रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान, और गेंदबाज सुस्तान इस वक्त तैयार, 6 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी। महेश दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंदबाजी करते हुए गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपील और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। महेश की पारी समाप्त, प्लम इन फ्रंट एंड नाउ द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। तो यहां पर देखिए किस तरीके से महेश का विकेट गिरा था, लाइन पर टिप्पा खाई, उनके पैर पर गेंद टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो यहां पर निस्संदेह गेंद मिडल स्टंप को कंसंट्रेट कर आती हुई और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। अब 2 बॉल्स एंड 6 रन, अगर 5 रन भी बना लेते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में फ्रेंच कुत्तार तो वो विजेता कहलाएंगे, क्योंकि सर्वाग निउरुआ ने अपने सर्व 10 विकेटों को खोए थे, जबकि सिर्फ 5 विकेटें यहां पर खो चुका है फ्रेंच कुत्तार। तो मैं समझता हूं अंतिम 2 गेंदों में 5 रन भी बना लेते हैं तो उनके लिए काफी है, लेकिन 5 रन बनाना अंतिम 2 गेंदों में उतना आसान नहीं है सतीश। And exactly, Gopi. But Naveen is a very experienced batter, just walking towards the middle. He's got a capability of hitting some big shots as well. You cannot underestimate his potential. He's one of the most senior most player in the side of French Kutar, and wait and see how well he will going to use that experience in this under pressure situation. And he's just right, Gopi. The 5 is enough for French Kutar to win the battle. Now floodlights are on, Gopi. It's very good sign for French Kutar. They will going to get sight the ball quite easily. बिल्कुल, अब देखते हैं दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चूके और गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, नॉन स्ट्राइक रन पर एक और विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 6। अब अंतिम गेंद पर चाहिए छक्का, तो 5 रन बनाने की संभावनीयता अंतिम गेंद पर काफी कम है और सिर्फ छक्का ही अब ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंच कुत्तार का भविष्य यहां पर बदल सकता है।
Exactly, Goodly. But look at the Sustan in this particular way. It's outstanding, isn't it? He's really handling the pressure. Absolutely, very interesting to see that how well he managed to handle the pressure. He's coming from the far end, but he managed to ball the very accuracy, the line and length. Even the each and every batters of Prince Kutar trying for the big shot, but he's not really settling the batsman for the big stroke. That means he's really bowled a very good over. But job is not yet over, Gopi. One ball can change the complexion of the match. He cannot relax until he bowled the one good delivery. And even Navin is also knows that the match is not yet over for them. If one big hit came from his bat, it's quite enough for them, Prince Kutar, to win this match as well. Exactly, Satish. He's got a chance to hit a six in the last delivery क्योंकि गेंद सख्त है, स्टिफ गेंद इस्तेमाल की गई है और एक बार गेंद के लाइन को पहचानेंगे, फुटवर्क अगर एक्सपीडिट जमाएंगे अंतिम गेंद पर तो यहाँ पर निस्संदेह गेंद को कनेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसा कहना पड़ेगा. फ्रेंच कुत्तार का फ्यूचर भविष्य इस वक्त नवीन के हाथों में, जबकि सर्वाग्नि उर्वा का भविष्य गेंदबाज सुस्तान के हाथों में. देखते हैं इस मैच निर्धारित गेंद पर क्या होता है. और इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए लगभग ऐसा कहना पड़ेगा 1 घंटा 10 मिनट इस मैच में बीत चुका है और मैच में एक गेंद अभी भी फेंका जाना बाकी है. फ्लडलाइट्स इस वक्त मैदान पर जल चुके हैं और यहां पर कुछ हद तक रोशनी फ्लडलाइट्स के लाइट से इस वक्त अपने रोशनी कुछ हद तक इस मैदान पर फैलाता है. अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल कम्स, six of last ball, and Sustan the bowler and Naveen the batsman. And the last ball of the innings is now coming up. Here we go, last ball, this time lofted that one, not quite middling it, down to long on, and that's it. Sarvagni Urva are through to the semi-final of this competition, defeating Friends Kuttar by a thrilling 5 runs victory, by 5 runs in a thrilling encounter, and with that 5-run thrilling victory, they are through to the semi-final of this competition. So one more fantastic match ended now, and now the first semi-final of this competition will be played between 5-star Addur versus Sarvagni Urva, and that match is now coming up live and exclusively right after the short break. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे थकान को मिटाने के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे, मैं और सतीश, जब पहले सेमीफाइनल मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल ब्रेक के बाद. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. It's now to announce a Man of the Match award. Once again, consecutive times, the man who is played single-handedly as far as the innings of Sarvagni cricketers is concerned. And Ajay once again was judged as a Man of the Match for his outstanding under pressure situation. He came into bat and is just destroying the bowling attack of their opposition, and they scored a valuable 24 runs. So I request Ajay of Sarvagni Urva to come here and collect your Man of the Match for your wonderful all-round performance. We'll take a 5 minutes break, and after that 5 minutes break we are right back into this semi-final. Thank you. I request even Friends Kuttar captain, the captain of Friends Kuttar, please come and collect your memento for the representation. You played a very good innings, very good game of cricket. The losing and of winning is a part of cricket, but again Friends Kuttar, they tried their level best to win this match, but unfortunately, and from the bottom of heart, here is organizer would like to congratulate you and would like to give special thanks for the representation for this cricket tournament. And
I request Ajay of Sarwag Nirwa, please come here to collect your man of the match consecutive second time. He's won that man of the match award. He's in a terrific form. He's in an outstanding form. He's been really unstoppable in the previous tournament as well. And now it's Anif, the manager of Young Friends Urva, will going to present this man of the match award. Tribal Tattoos is presenting this very attractive t-shirt for Ajay for his wonderful performance from the bat and from the ball, and he's deserved this man of the match award. At the same time, I request Friends Kutar captain, please come here. I request captain of Friends Kutar, please come here, collect your memento from organizer for your representation. I request Sarvagni cricketer Surva, please complete your formalities of signatures as soon as possible. And at the same time, I request captain, please report it for the toss. I request the captains of Sarvagni Urva and 5-star Addu to please report to the stage immediately for toss.
So Sarvagni Cricketers captain won the toss and they elected to field first against 5-star Adoru. So welcome back once again and after winning the toss, captain of Sarvagni Rua elected to field first and 6 hours side to be played between Sarvagni Rua versus Fast Track Warriors. So that I request Fast Track Warriors opening batsman please get ready, and at the same time the fielders please enter the ground as soon as possible. Sarvagni Rua. I request
So it's a time to the semi-final. Before that, I would like to present the memento for the representation for Friends Kuttar, one of the very good and disciplined team. They came into this tournament, but unfortunately they are not really qualified for the semi-final. But they played a very good game of cricket, and I request. I request Kuttaraj, the manager of Sai Slok, will go into present the memento for the representation for the captain of Friends Kuttar. And they done a fantastic job in this particular cricket tournament to came into the quarter final. Congratulations, better luck for the next tournament. And we are straight away coming into the semi-final of this prestigious cricket tournament. And the news here is the captain of Sarvagnirva winning the very good toss and they elected to field first, and Gopi the winning the toss elected to field first. I think all we can see that the Sarvagni cricketers who was a journey towards the semi-final, they won the toss, elected to field first, and they managed to win the match. In the previous match, I think they depend the total. They batted first because of Ajay's innings. I think they managed to win the match, but this time they will go into restrict the opposition and wait and see how the strategy will go into help here to win the big semi-final. But fast track warriors, Addur, 5-star Addur, they got some excellent players in the side. Maybe the name is the new, but they got some very good players in the side, especially the Asif Addur is leading from the front, one of the experienced batsmen for the side of 5-star Addur. They got some players like Altaf, one more very dashing the batters. They got one more very good player. I think it's one more big hitter in the side of the batting department of 5-star Addur. So considering all these factors, I think it's going to be a fantastic match. Both the teams has got opportunity to winning the match. Both the teams has really evenly the balanced team. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर कहना पड़ेगा टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय सर्वाग्नि उर्वा ने लिया है, और निस्संदेह उनके कप्तान की रणनीति ये होगी कि कम से कम रन में 5-स्टार अड्डूर के बल्लेबाजों को रोक कर रखे और बाद में उस लक्ष्य का पीछा करें, लेकिन अंडर फ्लडलाइट में उन्हें बल्लेबाजी करनी है, दूसरी बल्लेबाजी करनी है। और जहां तक 5-स्टार अड्डूर का सवाल है, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, कुछ ऐसे बल्लेबाज उनके पास मौजूद हैं जो एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता वो रखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने नाम फरमाया, अल्ताफ, आसिफ जैसे घटानुघटी गेंद बल्लेबाज है जो कि 5-स्टार अड्डूर के साजिद, एक और नाम मैं लेना चाहूंगा जो मेरे काबिल दोस्त ने फरमाया। तो ये बल्लेबाज अगर निस्संदेह अपनी क्षमता के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं, एबिलिटी के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं, तो निस्संदेह ज्यादा से ज्यादा स्कोर उनकी टीम खड़ा कर सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है, न सिर्फ सर्वाग्नि उर्वा के पास बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट शक्तिशाली है, बल्कि गेंदबाजी का डिपार्टमेंट भी उनका बेहतर है। तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन क्रिकेट गेंद और बल्ले के बीच में हमें यहाँ पर इस सेमीफाइनल मैच, इस श्रृंखला के पहले सेमीफाइनल मैच में देखने को यहाँ पर मिलेगा। Exactly, Gopi, and just like what Sarvagni Urvais did in the previous match, the bowling department, they have to once again need to perform from the bowling, because playing in the under floodlight, playing in the daylight is quite different, Gopi, and different tactics, different technique to be implemented. If you are playing under the floodlight, it's not that much of easy. And wait and see how well these two teams will go into perform under the floodlight. And I think it's good news here for the cricket lovers as well. There's so many times in UCG cricket ground, surprisingly sometimes they will got opportunity to watch the match under the floodlight. And it's going to be really a prize to watch, Gopi, whenever you're watching the match under the floodlight. And wait and see how well these two teams will go into qualify for the final. Right, I'm over to get the first ball. Sajid drives straight to the hands of short extra cover. That's the wicket they wanted, Sarvagni Urva. The first ball itself, they got a dream start. And Sustan, the man who's got a very good time from his bowling, he just got a wicket what his team is wanted. Look at that one, outside the line of off time. Sajid went for the drive towards extra cover, not quite keeping down. Maybe the intention is to go over the top, but is the back into pavilion. So first wicket is back into pavilion, 0 for 1. First, I think
5-star Adur, they got a shackling start. Warm welcome to President of Young Friends Rohan Montero. So warm welcome Rohan for this wonderful cricket tournament, YUVARATNA Trophy 2022. On behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, I would like to welcome Mr. Rohan for this cricket tournament. One of the best, the batsman, the very good fielder as well, and even useful leg spin bowler as well during the 90s and of course the 2000s. He's done a great job for Young Friends Ruwa, and even he was one of the best fielder in the backward point region, and one without loss, 1-0 for the loss of 1 wicket. So from the commentary box end, Sustan got a dream start, the start which is needed for Sarvagna cricketers. Winning the toss, elected to field first, and they got a wicket. Now Ashraf, oh what a delivery, what a delivery that one from, oh misfield, not a good fielding there by Vijay, and one fielder at short third man. And Karthik, I think, is there in the short third man. D1 Vijay, the misfield did it. What could be a certain dotted delivery because of that misfield? Because that ball is got an extra bounce when Ashraf went for the stroke, and bad bounce for the batter. He missed it completely. Wicketkeeper also missed it. And even short fine leg fielder also missed it. 1 for the loss of 1 wicket. Sustan bowling away from us with a short run up. Right arm over the wicket to process umpire Shriniket. To Altaf. Oh, ball was back grab, driven powerfully back down to deep long of boundary for 4 runs. Ball is really rocketing towards the fence. That was a certain chance of cotton ball, but he cannot catch when the batsman like Altaf is really beating a ball pretty hard. Look at that one, little time to react. And even the more than the reaction from the bowler Gopi, the reaction from the umpire Shriniket, just get away from that stroke which is played just past the bowler in the negation. And look at that one, and in the replay, definitely it's a fraction of second. The system have to react to that catch. Very difficult to take the cotton ball on his follow through whenever the batsman hitting the ball pretty hard, and the batter like Altaf has got a lot of power behind the stroke, and they got a lucky boundary. Again, right arm over the wicket, balls down to short fine leg region for a easy repercussion. Ball is running down to leg side, so that wide call by umpire. One more addition to total, 7 for the loss of 1 wicket. The runs, they got what they really wanted. 5-star Adur in this first over. Right arm over the wicket, ball slower one, change of face, negotiated very well by Ashraf, just waiting for the turn of the delivery. Slow leg cutter, and he got a single down to deep long on. With that single, scoreboard moves on to 7 for the loss of 1 wicket, 8 for the loss of 1 wicket. I think it's a good strategy there from 5-star Adur, because they knows that they're playing a power play overs. This is a lovely delivery, lovely delivery. That ball just an inches, that ball missed the stumps of Altaf, and one more dotted delivery. 8 for the loss of 1 wicket. The last and final time in this over, Sustan bowling with the 5 fielders in the offside region, 4 in the on, short fine leg, short mid wicket, short square leg, in fact, left of short square leg, short mid wicket, 1 at deep long on, 1 at deep long off. There is a backward point, short cover point, short extra cover. Very interesting field set here. And here is again Sustan. Right arm over the wicket. Altaf lofted that one right in the vacant area. Long chase here for the square leg fielder before he's running back. The fields the ball down at deep backward square leg region. Ample time for Altaf to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 10 on the board for the loss of 1 wicket. So after losing the toss, asked by the opposition to bat first, and I think 5-star Adur, they got to start what they really wanted in this first over. And Gopi, even they lost the wicket of the first wicket in the first delivery of the innings, but I think it's almost the game plan of Adur that even they're losing a wicket, but they doesn't want to lose that 2 power play overs. They wanted to get some runs, and that's the intention, and they really got that 10 runs even they lost the wicket of Sajid. बिल्कुल सतीश, हालांकि पहले गेंद पर विकेट जरूर गया था साजिद का, लेकिन 2 पावर प्ले ओवर जो है उसका फायदा उठाना उन्हें जरूरी है, और इस गेम प्लान के साथ वो उतरे हैं। हालांकि विकेट जरूर गिरे, लेकिन बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक खेलते रहे, और अगली गेंद पर अल्ताफ ने देखिए किस तरीके से चौका झड़ा था, और उसके बाद 2 रन बटोरे थे। तो यहाँ पर पहले ओवर में 10 रन बन चुके, 1 विकेट खोने के बावजूद बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है सतीश 5-स्टार अडूर।
Absolutely, Gopi. Once again, Giant is not having a good time behind the wicket, but this time no signal coming from umpire Roland Pinto. That means it's from the bat, and outside edge of the bat is difficult for wicketkeeper to collect that one. Quicker one there from Ajay, the hero of last two matches. He is in action from the far end. Right arm over the wicket, he bowls. This time beautifully bowled, equal well placed by Altaf, right in the gap towards the deep wide long off region. Again the fumble from Vijay. They're coming back for second. Throw is coming to the hands of Ajay, but Ajay missed the ball completely from the hands. He's uprooted the stump, but that time ball is not in the hands of Ajay, so that no question of run out there. But excellent running between the wicket, but fielding is not up to the mark. Pretty ordinary effort there from the fielder. Look at that one, charging in from the deep long off. And fumble from the fielder. I think Dhanraj once again is not really having a good time in the field, as in not an easy job, Gobi, because whenever the batsmen are running between the wicket very quickly, the first run, all in sudden the outfielder started to feel the pressure, because they knows that if they made a misfield, then that they will go and convert that single into two. That's why Dhanraj could a little bit under pressure, and he made a misfield fumble in the negation, so that they got a couple of runs. 13 for the loss of one wicket in the over number second in progress. Ajay from the far end, right arm over the wicket, he bowls lofted straight to the hands of Dhanraj, making no mistake at all. Altaf departs and Sarvag Nikita celebrates. Look at that one in a replay. The width is offered outside the line of off stamp, off volley, and Altaf going after that one, but didn't got elevation what he's looking for, and that ball went in the flatter version, and Dhanraj this time making no mistake at all. Again, he knows that he need to get that catch. He need to take the catch, because that's a wicket of Altaf. It's very costly if he drops the catch. That's why he's a little bit carefully and he gets his eye in, and it takes a very good catch in the end. The wicket number 2 is back into pavilion. Now look at that one, the moon. We can see that just like a fingering, Gobi, and absolutely it was a one more. The skill of our cameraman is doing a fantastic job of this King Sports. Not only is not covering just the matches, but even sometime it's one must say that was good thinking to see that something different you want to catch here, and I think he's got a good eye. And straight away he goes into moon and capturing the moon in the negation. So Ajay, and from the far end he got a wicket. He's got a very good tournament from the ball and bat, and immediately he picked up valuable wicket of Altaf. And the new batter, Asif Adur. One more very good striker of the ball, who got experience of playing for NM Cricketers Mangalore, one of the top team of South Kent district. Oh, that was a beauty, absolutely beauty. Asif a little bit lucky in the negation, because that ball almost curving around the legs of Asif Lekater in the negation, and luckily that ball just missed the wicket stumps of Asif. Ajay bowls this time, went for the reverse ape right in the gap. Pretty ordinary effort there from Sagar. They're coming back for the second. In comes the throw, and they managed to complete that couple of runs. Second time in this particular over, the fielder misfielded that one, and they converted that single into two. Then with that couple of runs, scoreboard now moves on to 15 for the loss of 2 wickets. The very innovative cameramans of King Sports, there needed to be. The innovation is much required. This time lofted down to deep wide is long on boundary for a huge 6. Asif, just like we are mentioning about when he came into middle, he is such a danger batsman. Look at that and how quickly he picked that one. Nothing wrong with the line of the delivery, copy. Almost in the Yorker land delivery, but he's just taking that in the full. Almost that was the ball is going to land in front of his bat, and he's just extending his bat towards the line and taking that one in the full. Look at that one in replay. Ajay ball, and absolutely take that one right from the middle of the bat and taking that one in the full. I think it's a good strategy. Not allow the ball to turn and taking that one in the full, and hits that one down to wideish long on for a maximum. Excellent cricketing stroke.
बिल्कुल सतीश, और गेंद हालांकि उनके बल्ले के करीब जैसे ही टिप्पा खाई, गेंद को टर्न लेने उन्होंने नहीं दिया, घुमाव लेने नहीं दिया, एक्सक्यूजिट फुटवर्क के साथ गेंद को कनेक्ट किया मिडल ऑफ द बैट और डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज दिया। और ऐसे स्ट्रोक खेलने में आसिफ माहिर है। इससे पहले भी कई श्रृंखलाओं में हमने देखा है कि आसिफ ने ऐसा स्ट्रोक खेला है और यहाँ पर अपने काबिलियत के अनुसार इस गेंद को उन्होंने उछाला था। और इस छक्के के साथ अब मैं कहूंगा 2 विकेट खोने के बावजूद यहाँ पर 5 स्टार अड्डूर एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। Exactly, Gopi. Can you imagine that one misfield costing a big stroke here, 6? Because otherwise, if it's a neat fielding, just the one and Asif is out of the strike. And that was really going to be something you need to be see in cricket. One mistake by the fielder costing a lot here. And first delivery of the over number 3 as Sagar is introduced from the community box, and that ball just passed between the leg of Ashraf, and there's no possibility of any run. 21 for the loss of 2 wicket. Here is again Sagar bowling away from us. Right arm over the wicket, ball to Ashraf. Ashraf doing a fantastic job. He know exactly. He just need to rotate the strike. Just wanted his partner Asif into strike as much as possible, because he is the one got a potential of hitting a big stroke. Even Ashraf, I think is a very good striker of the ball. But seeing this condition here, Asif is in a good nick, so he just wanted to give strike as much as possible to Asif. Asif and Ashraf, 2 big A's in 5-star Adur are in the middle to get some runs here. 22 for the loss of 2 wicket. Very, very good runs here for Adur, 5-star Adur. Now, Sagar bowling with a short run up away from us. Right arm over the wicket he bowls. This time he going for the reverse sweep appeal for leg before wicket, but cut just an excitement rather than the confident appeal. But that ball is got extra bounce as ball and moving towards the leg side outside the line of leg stamp. And even that ball hits the bat of Asif. So one more dotted delivery, much required, quite over there from Sagar. Away from us, right above the wicket, just making room, lovely shot. Look at the shot that from Asif, beautifully played down to deep cover point region for 4 runs. That was outstanding cricketing stroke. Look at that one, how far he is outside the line of off stamp. You know exactly, wanted to play over the top of that inside, that fielder. There is no protection has been given in the deep backward point region, and he got the placement right to get the boundary. Even though he played that one Gopi away from his body, but he is able to make a contact with the bat, and he's got a timing behind that one. Not a big effort, but he's delicately played that one. Clever batting there from Asif. Score jumped into 26 for the loss of 2 wicket. So far in the 3 deliveries, bowled a very good line and length, but this time he's bowled outside the line of off stamp, and Asif taking a full advantage of that delivery. Sagar again, right arm over the wicket, balls down the leg stamp, going further away, far away down the leg stamp. That's why it's going to be a wide. Right call from umpire Shiniket, because that was a too far outside the line of leg stamp. 2 more extras added to total scoreboard. Now was under 28 now for the loss of 2 wicket. Now I think it's a really not good going here for Sarvagni Urva. They won the toss, elected to field first, but everything is going in the favor of 5-star Adur. Just mentioning about earlier, Gopi and me talking about the batting department. They got a really strong batting lineup in the side, so that Sarvagni cricketers really bowled good overs, but so far they're dominating. That was a front foot defensive stroke back to bowler, and there's no possibility of any run. Good one, almost that ball came in a block hold of Ashraf, and he has to play that and force the batsman to play that one back to bowler, and there is no chance of any run. Sagar, right arm over the wicket, again the wicket keeper not up to the mark, again he missed the ball completely from his hand. One more dotted delivery, good comeback there by the bowler. So over number 3 completed. After completion of over number 3, 5-star Adur are looking in a commanding position, getting some runs in this 3 overs. 3 overs completed, 28 for the loss of 2 wicket. The projected scores showing exactly 55. If it goes on, get the runs in the similar run rate, current run rate of 9.33 runs per hour, and they will going to get 55. And if they get that 55, I think it's going to be a strong and a danger message for the Sarvagni Urva Gopi. They have to bowl very well remaining 3 overs. They considered a lot of runs. As far as my point of view, that 28 is too much, and they have to bowl another 3 good overs if they wanted to restrict the opposition less than 45.
एब्सोल्युटली सतीश, जैसा कि आपने कहा, और 28 रन 3 ओवर में बन चुके हैं और अगले 3 ओवर में भी 28 रन बनते हैं तो 56 तक पहुंच सकता है और 56 का स्कोर कॉम्पिटिटिव अंडर दिस कंडीशन कहलाएगा, क्योंकि 5 स्टार अड्डूर के पास गेंदबाजी के डिपार्टमेंट पे भी डेप्थनेस है और यहां पर कम से कम स्कोर में यहां पर रोकना है बचे हुए 3 ओवर में सर्वग्नि क्रिकेटर्स के गेंदबाजों को। जहां तक सवाल है उनके गेंदबाजों का, तो यहां पर उसके लिए कोशिश इस वक्त जारी है और गेंदबाजी पर इस वक्त लगाया गया है अजय को और अजय इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को उछालना चाहता, काफी आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता, लेकिन यहां पर स्ट्रोक से खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के आते हुए। 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और अजय एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने के बल्लेबाज आसिफ के लिए गेंद को उछालना चाहा, गेंद नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची शॉट मिड विकेट पर ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे गेंदबाज और यहां पर इस बीच बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं, तो 30 रन यहां पर बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ 5 स्टार अड्डूर के, हालांकि पारी की पहली गेंद पर साजिद का विकेट जरूर गिरा था, उसके बाद कुछ गेंद बाद अल्ताफ भी आउट हुए, लेकिन अशरफ और आसिफ खासकर पारी की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए, खासकर आसिफ काफी आक्रामक का रवैया यहां पर अपनाए हुए हैं और इस वक्त तैयार अजय की गेंदों का सामना करने के लिए आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, शॉट फाइनल की दिशा में निशाना इस वक्त लग चुका है और इसी के साथ अब गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। बेहतरीन थ्रो शॉट फाइन लेग फील्डर विजय का फेंका गया है, स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और बल्लेबाज अपने गज से अपने क्रीज से कुछ इंच इस वक्त बाहर रह गए। देखिए किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस वन, गेंद पहुंची थी शॉट फाइन लेग पर, सीधा निशाना दागा था इस वक्त और निशाना टकरा, एब्सोल्युटली दैट्स आउट और यहां पर ये विकेट नंबर 3 गिर चुका है। अशरफ की पारी समाप्त और 30 रनों पर 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। अंडर फ्लड लाइट्स देखिए किस तरीके से फ्लड लाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध यहां पर कर चुकी है। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जो इस वक्त टीम फॉर्च्यून ने आयोजन किया है, इस श्रृंखला का दूसरे दिन का 8वां मैच और पहला सेमीफाइनल मैच इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता हुआ अंडर फ्लड लाइट्स और ये श्रृंखला जो कि युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम पर यहां पर एक शानदार प्रगति करती हुई दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ा फिल्म्स के नामी कलाकारों में से एक हैं, उनकी मधुर याद में यहां पर इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है और यहां पर पहले सेमीफाइनल में इस वक्त संघर्ष जारी है सर्वाग्नि उर्वा और माफ कीजिए 5 स्टार अड्डूर के बीच में। और जहां तक का सवाल है बेहतर स्कोर का, तो इस वक्त एक बेहतर प्रगति करता हुआ 5 स्टार अड्डूर 30 रन जोड़ चुका 3 विकेट के नुकसान पर, इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नए बल्लेबाज विनोद का आगमन हो चुका है इस वक्त। विनोद इस वक्त अजय की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप पर आते हुए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी अब तक इस ओवर में अजय ने की है, सिर्फ 2 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं और बल्लेबाज को खामोश रखने में सफल अब तक वो इस ओवर में। एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता वाइड लॉन्ग ऑफ पर और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। तो बेहतर ओवर सतीश मैं कहूंगा, 3 रन, जस्ट 3 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर और मैं कहूंगा इस ओवर की बदौलत अब मैं समझता हूं कुछ हद तक अंकुश लगाने में सफल रहे गेंदबाज सर्वाग्नि उर्वा के 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाजों के ऊपर। Exactly, Gopi. That's I mentioned before I hand over the microphone to you. That I mentioned that 3 overs very crucial for Sarvagni cricketers. They need to bowl very economical overs because they consider so many runs in the first 3 overs. And compared to the previous over, the first over which is bowled by Ajay is much accuracy in his bowling, isn't it? It's not really given a width for the batsman, especially like Asif is having in the middle. And if he bowl a little bit down the leg side, he's definitely going to hammer that one out of the park. And he bowled almost targeting outside the line of off in this particular over, and he got a success. बिल्कुल सतीश, और अजय का बेहतर ओवर समाप्त हो चुका, उनके भाई विजय इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और 5वां ओवर उनके पारी में यहां पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर जयंत काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण यहां पर दिखाई देता हुआ। दर्शकों की तादाद इस शाम के वक्त यहां पर बढ़ चुकी है, दिन धीरे धीरे शाम धीरे धीरे रात की ओर इस वक्त बढ़ती हुई, शाम रात के 7:25 यहाँ पर बच चुके हैं और यहाँ पर इस श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। ये गेंद पहली गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन एंड ही हैज गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन।
much straighter line, extra quicker, and the ball passed just wide of his bat and stuck to his middle of stump. Bills are disturbed, और इस बेहतरीन गेंद की बदौलत ये विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं विजय. देखिए किस तरीके से गेंद को फेंका था, और यहाँ पर दिस इज एन एब्सोल्युटली terrific one, deviating just a little bit of the last moment and passed between his bat leg and stuck to the middle of stump. परफेक्ट ऑफ कटर गेंद पर यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं विजय, और इस बार चौथा विकेट यहाँ पर खो चुका है 31 रनों के ऊपर. It's 31 for the loss of 4 wicket and the man Vinod now dismissed for 1. तो पांचवा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर अब 11 गेंदें उनकी पारी में बाकी. आसिफ एक छोर पर इस वक्त मौजूद, काफी सोच विचार करते हुए कि स्ट्राइक इस वक्त उनको कैसे मिलने चाहिए, और यहाँ पर नए बल्लेबाज जो मैदान पर उतर रहे हैं उनको कुछ आसिफ कहते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी उस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए बचे हुए गेंदों में. और वो बल्लेबाज जो कि नंबर 12 की जर्सी यहाँ पर पहने हुए मैदान पर इस वक्त उतर चुके हैं और वो इस वक्त जाते हैं स्ट्राइकर एंड की ओर, और नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. विजय इस वक्त अल्ताफ इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे विजय की गेंदों का. पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद विनोद का काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए विजय और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट कीपर डाइविंग लगाकर विकेट कीपर ने गेंद को रोका और यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. कम से कम 40 से 45 रनों के अंदर रोक कर रखना होगा 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाजों को अगर सर्वज्ञ उर्वा को कम लक्ष्य का पीछा करना है. तो यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप. गेंद जाते हुए काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके. दूसरे रन के दौर पर अल्ताफ धीमे जरूर लेकिन अंतिम क्षण में जब तक थ्रो पहुंचे एक टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. हालांकि अल्ताफ पहला रन पूर्ण करने के बाद उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि शायद 1 रन काफी है, स्ट्राइक उनको मिलेगा, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि बल्लेबाज स्ट्राइकर की ओर दौड़कर आ रहे हैं तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया और यशस्वीतम इस बीच 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार ब्रिलियंट से ऑफ स्टंप से काफी बार दिशाहीन गेंद और स्कोर 1 रन के साथ इस वक्त बढ़ चुका है 35 रनों पर इस वाइड के रन के साथ. और निस्संदेह अभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को तलाशते हुए गेंदबाज विजय इस ओवर में 2 वाइड ओ फेंक चुके. हालांकि 2 बेहतर गेंदे उन्होंने फेंके थे लेकिन उसके बाद एक गेंद के फासले में 2 वाइड सही गेंद फेंकी और उसके बाद वापस उन्होंने इस गेंद को वाइड यहां पर फेंका है और अब अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर. देखना यह है कि बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था. जी हां, गेंद इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज आसिफ स्ट्राइक पर आ चुके हैं और यहाँ पर उनके दिमाग में इस वक्त ये बात जरूर चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा रन से बटोरने के लिए. और विजय जिनके दिमाग में इस वक्त ये बात चल रही है कि ये सोच चल रही है कि किस तरह इस वक्त बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया जाए बेहतर गेंदबाजी के जरिए. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है. फील्डिंग में जमावट विजय इस वक्त करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 4 से 5 कदम उनका रन अप. दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद आसिफ के लिए चिप किया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए इनटू द गैप, लेकिन फील्डर काफी पीछे वहां पर मौजूद. कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट और गेंद पहुंची थी हवे में लेकिन फील्डर जो डीप एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद थे थोड़ा सा स्क्वायर और जब तक वो गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 38 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. विजय एक बार फिर से सोच विचार करते हुए गेंदबाजी के लाइनअप मार्क पर इस वक्त आ चुके हैं. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा गेंद पहुंच चुकी है इस वक्त डीप मिड विकेट पर. धनराज गेंद तक पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन थ्रो पहुंच चुका है लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास पर्याप्त
समय था कि वो दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर सके। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किया और बल्लेबाज को कोई दिक्कत ही यहाँ पर नहीं हुई दूसरे रन पूरा करने के लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर, एक गेंद अभी भी बाकी और आसिफ इस वक्त रनों की रफ्तार को बरकरार रखते हुए 5 स्टार अड्डूर के लिए और इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए यहां पर तैयार। विजय एक बार फिर से पूरी तरह उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने नजर फिराए, फील्डिंग का मुआयना किया और तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ के लिए ये गेंद, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली गेट, गेंद पहुंची गली की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 41 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 5th ओवर हैज बीन केम टू एन एंड। तो यहां पर इस ओवर में कुल मिलाकर 10 रन बने और एक और बेहतर ओवर सतीश, और मैं समझता हूं 10 रन इस ओवर में बने, अगर अंतिम ओवर में भी 10 रन बनते हैं तो 50 के आंकड़े को 5 स्टार अड्डूर पार कर जाएगा और 50 के आंकड़े का अगर वो पार कर जाएगा तो अंडर फ्लड लाइट मैं कहूंगा ये एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खेलाएगा। Exactly, Gopi. Playing under floodlight and playing in natural light, the sunlight, it's going to be a different ball game. And for more than 45-50, it's going to be very difficult to chase down. Of course, they got some very good batting department like Ajay and Jayan. But so far, Gopi, if you look at that batting department, the batting performance of Sarvagni Urva, all the time one-handed, one-man army, and only Ajay managed to get the run. No one able to score the runs. That's why it's going to be a difficult year for them. If they're able to get 45 to 50 runs in the stipulated 6 hours, it's going to be a very difficult task to chase down. But here, Gopi, the last over remaining, I'm a little bit disappointed with the bowling of Vijay, because after getting a wicket in the first delivery, then he bowled 2-3 wide balls. That was really going to become a costly in that turn, and that's why they got 10 runs in that over. But the last over, I think if they're able to get, just like you're mentioning about, if they're able to get another 9 to 10 runs, it's going to be a 50 plus. Once it's 50 plus, it's going to be a psychological advantage for 5-star Addur, because they will going to depend a big total here. And having Altaf Basavanagudi and Asif Gopi, both the batsmen that have capability of hitting big shots. And just like Altaf Walpadi, just like Altaf which came as an opener for the side, another Altaf, that Basavanagudi, is also one of the tremendous striker of the ball. So need to be very careful here for the bowlers of Sarvagnerva. They need to bowl one very good overs, just over of just 3 to 4 runs. Then only they can be given having a hope of winning this match against opposition team 5-star Addur. बिल्कुल सतीश, और अंतिम ओवर में कम से कम 3 से 4 रन जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त प्रदान करने होंगे। अगर 45 या 46 रनों के अंदर उनको रोक कर रखते हैं सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाज, तो लक्ष्य उनके लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है। और अंतिम ओवर में जो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर है, अल्ताफ बसवनगुड़ी और आसिफ, ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक, धुआंधार, एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और करारे स्ट्रोक्स कुछ अंतिम ओवर में लगाते हैं, तो 5-स्टार अड्डूर ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बना सकता है और एक लंबी चुनौती यहाँ पर दे सकता है सर्वाग्नि उर्वा के लिए। देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है। तो जैसा कि बिल्कुल एक बात आपने फरमाया, इस श्रृंखला में सर्वाग्नि उर्वा का प्रदर्शन बल्लेबाजी में जहां तक कहा जाए तो एक डिपेंड्स ऑन वन मैन अजय, जैसा कि आपने फरमाया इस श्रृंखला में लगभग ज्यादातर मैचेस में अजय ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को विजय दिलाई है। तो यहां पर उन्हें संगठित होकर इस सेमीफाइनल मैच में इस वक्त बल्लेबाजी करनी है। जब वो अपने बल्लेबाजी पर उतरेंगे सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाज, और टीम वर्क अगर वो यहां पर दिखाते हैं तो निस्संदेह वो लंबे से लंबे लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें इस वक्त रोकना है 5-स्टार अड्डूर के बल्लेबाजों को इस अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए। तो जहां तक 5-स्टार अड्डूर का सवाल है, मैं कहूंगा अंतिम ओवर में कम से कम 15 से 20 रन वो बटोरते हैं तो मैं कहूंगा वो सुस्थिति में पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने और आपने फरमाया, अंडर फ्लडलाइट्स रनों का पीछा करना उतना आसान नहीं है। आमतौर पर शाम होने के बाद इस उर्वा क्रिकेट मैदान पर हवा का रुख काफी कम हो जाता है और बल्लेबाज को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतें पैदा होती हैं। और जहां तक सवाल है, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आती है और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस अंतिम ओवर में
ज़्यादा से ज़्यादा रन इस वक्त बटोरना 5 स्टार अड्डूर के लिए ज़रूरी बन चुका है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रन देने से रोकना इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाजों के लिए ज़रूरी बन चुका है। इस वक्त बातचीत जारी है दोनों अंपायर्स और सर्वाग्नि उर्वा के खिलाड़ियों के बीच में। मैं नहीं जानता क्या बात उनके बीच चल रही है, लेकिन सब कुछ इस वक्त सही सलामत और एक बार फिर से खेल पुनरारंभ होता हुआ और छठा और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। अल्ताफ इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और आसिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए निस्संदेह एक बेहतरीन नजारा राइट फ्रॉम द अवर कमेंटेटर बॉक्स यहाँ पर दिखाई देता हुआ। फ्लड लाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान पर गिर चुकी है, इस मैदान को और प्रकाशमान यहाँ पर कर चुकी है और दर्शकों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। मैदान के बाहर सुंदर सा नजारा हमें दिखाई देता हुआ। मैदान के बाहर जो रास्ता इस वक्त गुजरता है उस रास्ते में कई गाड़ियां इस वक्त गुजरती हुई, रास्ते के बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स, मैदान के बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स है वो इस वक्त जल चुके हैं। और यहाँ पर पहली गेंद स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड हिट दैट वन फॉर अ बाउंड्री। तो व्हाट आई मेंशन्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस ओवर, मैंने कहा था अंतिम ओवर में जितना ज्यादा रन 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाज बटोरेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अंडर फ्लड लाइट्स यहां पर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है। तो यहां पर स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला था आसिफ ने और गेंद इस वक्त क्लियर होती हुई लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्रेट हिट एरिया पर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर, 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सुल्तान की गेंद एक बार जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, इस बार नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर कमबैक इस वक्त कर चुके हैं, चौका प्रदान करने के बाद गेंदबाज सुल्तान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। ना तो ओवर द विकेट, एक बार फिर से बेहतरीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक, 2 consecutive dot balls after conceding a boundary. This is an fantastic comeback made by the bowler सुस्तान। और अब 45 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी है। जस्ट 3 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और आसिफ एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। सुस्तान की गेंदों का ये गेंद इस बार एक बार फिर से विकेट कीपर चुके इस बार मोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा। अल्ताफ स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं और इस बार रनआउट का मौका गवा, इस बार रनआउट मेरे ख्याल से रनआउट का मौका गवा चुके हैं, बाई का इशारा हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अंपायर रोनाल्ड पिंटो ने यहाँ पर हाथ उठाया था, शायद मैंने सोचा कि वो वहां पर आउट है, वो आउट दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अंधेरे में ठीक से साइड नहीं होता है, लंबा फासला है और शायद उन्होंने बाई के लिए बाई का इशारा किया था हमारी ओर। और यहाँ पर 2 रन जुड़ चुके हैं उनके खाते में और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अल्ताफ आसिफ इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और स्ट्राइक रिटेन कर चुके हैं इस गेंद पर और इस बीच बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, मिट्टी को अपने दोनों हाथों में घिसने के बाद सामना करने के लिए तैयार सुस्तान की गेंदों का ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, गेंद जाती है स्क्वायर लेग पर। अल्ताफ एक बार फिर से दूसरा रन लेना चाहते हैं, स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो बच पाएंगे या नहीं देखना पड़ेगा। ओवर थ्रो हो चुका है, तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं और यहाँ पर अब नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। यतिन विकेट कीपर थे, थ्रो को रिसीव करने के बाद उन्होंने यहां पर विकेटों पर थ्रो किया था। देखिए किस तरीके से स्टंप्स को तो गेंद टकरा चुकी थी, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या गेंद जब स्टंप्सों पर टकराई थी, बेल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। तो तीसरे अंपायर यहां पर परिशीलन करते हुए श्रीरज तीसरे अंपायर और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है।
दैट्स नॉट आउट। और यहाँ पर आसिफ क्रीज पर पहुंच चुके हैं। जब गौतम ने विकेट कीपर गौतम ने विकेटों पर गेंद को शाइन किया था, थ्रो किया था, तो वहां पर 2 रन 3 रन मेरे ख्याल से उनके खाते में जुड़े गए। और इन 3 रनों के साथ द 50 कम्स अप फॉर 5-star Addur. 50 came in 5.5 overs for losing 4 wickets and now just a last ball remaining in the innings. आसिफ ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अल्ताफ बसवनागुडी। और इस वक्त अल्ताफ के लिए उसी तरह का क्षेत्र रक्षण सजाई है इस वक्त कप्तान ने सर्वाग्नि उर्वा के। अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज और अगली गेंद के लिए तैयार। अंतिम गेंद लेकर सुस्तान दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ के लिए अंतिम गेंद लेकर तैयार। ये गेंद चूके इस वक्त शॉट फाइनल की दिशा में विजय गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद जाती हुई थर्डमैन की दिशा में बैकअप होता हुआ वहां पर दूसरे के लिए दौड़ पड़े। तीसरा रन लेना चाहते लेकिन नहीं मिलेगा और अंतिम गेंद पर 2 रन मिले और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं। द इनिंग्स इज अप फॉर 5-star Addur. They finished well. They started in the first over slowly, but after that they progressed very well and at last they finished very well with 52 for the loss of 4 wickets in their stipulated 6 overs. And now a competitive target in front of Sarvagni Urva. 53 they have to score for victory under floodlights with the required run rate of just under 9 runs per over. That means in exact calculation it's going to be 8.85 runs per over they have to score for victory in their stipulated 6 overs. And 53 they have to score. और सतीश निस्संदेह यहाँ पर अपनी काबिलियत के अनुसार बल्लेबाजी इस वक्त की 5-star Addur के बल्लेबाजों ने और सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाजों ने जीतोड़ कोशिश जरूर की थी लेकिन 50 रनों के आंकड़े के अंदर यहाँ पर उनको रोक कर रखने में असफल रहे। लेकिन यहाँ पर 53 रनों का लक्ष्य कुछ हद तक कठिन जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। और मैं समझता हूं एक बेहतर शुरुआत उनको अपने मंजिल की ओर अग्रसर कर सकते हैं और खासकर सलामी बल्लेबाज खासकर 2 पावर प्ले ओवर का फायदा उठाना होगा जिस तरह बल्लेबाज 5-star Addur के बल्लेबाजों ने उठाया था। और यहां पर एक बेहतर साझेदारी अगर सलामी बल्लेबाज पहले चंद ओवर में टिकते हैं खासकर पावर प्ले का फायदा उठाते हैं एक बेहतर शुरुआत अपनी टीम को देते हैं तो निस्संदेह सर्वाग्नि उर्वा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकती है। लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप अगर उन्हें एक बेहतर शुरुआत करनी है तो कुछ विशेष रणनीति डिफरेंट टैक्टिक के साथ सर्वाग्नि उर्वा के आरंभिक बल्लेबाजों को यहां पर पारी की शुरुआत करनी पड़ेगी। Thank you very much, Gopi. And exactly what we are talking about, that the 50+ runs is definitely going to be a difficult task for Sarvagni Urva under this condition, and at the same time not impossible. And just like you were mentioning about the possibility of winning possibility, the percentage of winning possibility for Sarvagni cricketers might be lesser than the opposition team 5-star Addur. But everybody knows that cricket is a game of glorious uncertainty. We cannot say anything in cricket. It's a funny game. And the possibility of winning this match from Sarvagni cricketers, just we are talking about how important for Sarvagni cricketers to get some good start from the opening batters. They didn't got a good start so far in the first 2-3 matches what they played earlier. But this time I think is no excuse. This is a big match. This is a do-or-die situation. This is a big match, a semi-final they're playing. So they have to put their 100% effort in this particular semi-final if they wanted to win this match against 5-star Addur. For that, they have to get some good starts in the sense 2 over of the power play. It's going to be so crucial, very crucial for Sarvagni cricketers. They have to look for some the big runs in the first 2 overs. Then one day they can able to win this match. Of course, just like what they did in the previous 2 matches, they didn't got a good start. Especially, I think Jayant is a key player. And so far in this tournament, he couldn't manage to talk with his bat. He's failed to get some runs from his bat. But in this particular semi-final, they have to get some runs. They have to get some runs. He has to get some runs because he's a key player. And wait and see how well he managed to get the start for his team.
So signal just came from umpire. Now Shiniket at the start of the big semi-final. And 53 is the target. 36 is the deliveries. In that 36 delivery, they have to get 53 runs to win the match. And a difference between run and ball, exactly that 17 runs difference between run and ball. And that was the difference what Sarvagni cricketers have to reduce each and every over what they're going to play now. First over of the power play will going to start from the commentary box and right arm over the wicket to Sujit. Sujit this time just tap the ball down to short cover point region, not for run. There is no chance for any run in the negation. The width is offered, but Sujit not quite able to even try to drive the ball. He just tap the ball down to cover point, and there is no chance of any run at all from the commentary box. And right arm over the wicket, Alta balls this time again, beautifully ball, perfect delivery. Fayaz, little correction, he is the one who is a very good starter. He's got experience of playing for Gori Young Boys in this particular season, and so far he's been outstanding. 2 deliveries and 2 dotted deliveries. Pressure is mounting up now after that 2 deliveries. Again, Fayaz back to his bowling mark. Away from us. Right arm over the wicket. Balls to Sujit. Sujit again a bit, and this is not a good start. This is not a good thinking from Sujit. If he fails to get a big stroke, his job is to just rotate the strike and pick the single. And that's what's really lacking here, isn't it? It's just a presence of mind. The sensible batting which is required. And 3 dotted deliveries and good start there from Fayaz. 3 very good deliveries outside the run of half time. And Sujit has got no answer for that particular delivery. This time he went for the reverse. He got not enough bat. And a good piece of fielding there by the fielder. Just an off stop by the fielder, diving to his right and stopping certain boundary there. The full toss delivery, free meditated switch it is attempted by Sujit. He got a bat onto that, but couldn't manage to get that timing and placement right. And fielder in the short backward point region, Altaf Basavanagudi managed to got a hand onto that, just stopping the speed of that ball. The 4 deliveries completed, just 1 run they got. So now his announcement came here from the fans of Fayaz that each and every wicket he will going to get 500 rupees cash. Imtiaz Adur is just announcing this cash prize for Fayaz. The very talented bowler, no doubt at all. So far he's been outstanding in this over. Right arm over the wicket, balls. This time again Jayant went for the reverse sweep, but he's got a protection in the deep tournament region, so that they have to settle for the single. With the single the leg by, no contact with the bat of Jayant, so that 1 run, just a 2 on the board. And so far I think it's been a really a quiet over, absolutely quiet over here for the innings of Sarvagni Urva. Fayaz, right arm over the wicket, Destin tapping the ball. That's what's needed in the early. The first delivery itself, you need to see that. You want to rotate the strike at least. If they not managed to get the big stroke, he wanted to get the single, but at last he managed to get the single in this last delivery. So Gopi, first over what we are talking about, that the start what they wanted to get in this power play overs, but unfortunately they got 1-3. That's only because of the bowler, the Fayaz. He's been outstanding in this first over, but Sujit maybe needed some little bit presence of mind, and they managed to get only 3 runs in this particular over. बिल्कुल सतीश, और अंतिम गेंद पर जैसा कि आपने फरमाया था, जस्ट गेंद को टैप करने के बाद जिस तरीके से सिंगल लिया है, वो जैसा कि आपने फरमाया बिल्कुल सही बात सतीश, पहले गेंद से ऐसी क्रिकेट उन्हें अपनानी चाहिए थी। और यहाँ पर पहले 2 गेंदों पर रक्षात्मक तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और मैं कहूँगा पहले ओवर में फयाज ने अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी की है, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किया है। अब देखिए इक्वेशन, आस्किंग रन रेट जा पहुंचा ठीक 10 रन प्रति ओवर, 5 ओवर में चाहिए 50 रन। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चौके और छक्के की उन्हें सख्त दरकार इस मैच में वापस आने के लिए। Absolutely, Gopi. Don't want to take that distance between run and ball too much. Again, Sujit not really getting that one right from the middle of the bat. Almost he drags that one outside the run of off temper. Sujit is not a good striker of the ball, especially as far as hitting the ball in the offside region is concerned, Gopi. That's why he's struggling, and that's a really game plan from the bowlers. You know exactly what is the strong point, what is the weak point of each and every batter. That was really required for each and every bowler. Now, 7 balls completed, only 4 runs scored, and Vinod is operated from the far end. Right arm over the wicket, the last and final over of the power play. Jayant back on strike now, facing Vinod.
Right arm over the wicket. This time, what we're talking about, lovely shot. No need to run for that ball, traveling towards the deeper mid-wicket boundary for 4 runs. Look at that one, stroke from Jayant. Nothing wrong with the line, but he's just played that one across the line, almost drags that one. That was a very good looking slog sweep shot coming from the blade of Jayant. They needed some risk, needed to get some risk if they wanted to win the match. Without taking a risk, getting a target is definitely going to be dreamy for Sarvagni Urva. And just in the right time, I think Jayant is just open up with this fantastic slog sweep shot down to deep mid-wicket boundary for 4. 8 without loss of any wicket. Now, 8 balls and 8 runs they scored. Required run rate 9.64. They desperately bring that required run rate less than 8 and less than 7 in each and every over. This time, a very interesting kind of reversal stance of run out. Umpire asking for the third umpire, but I think Jayant is in trouble. Just seeing in the naked eye, I think Jayant is in trouble. Look at that one. He tried to go for the reverse sweep. The good change of line there by the bowler. Bowled around the legs, outside the line of leg stump. He drags the ball from outside the line of leg stump. Ball went straight to the hands of short mid-wicket. Returns the ball very quickly. Bowler Vinod completes the job very quickly. And now Roland Pinto refer for the third umpire to give the decision. So once again, King Sports cameramans and technicians are so good so far, and once again testing time and testing time as well for the technicians to give some good angle for the third umpire to get the best result of this run out. Third umpire here in our commentary box, Sri Raj. We'll go in to see whether it's out or not. I think it's out, almost 3-4 inches. Is short of his crease, and wicket number the first is back into pavilion, 8 for the loss of 1 wicket, and I think Gopi, it's really a big breakthrough. Jayant, after hitting 1 boundary, looks like his lift limit got a confidence back in his favor. Out of the strike for a long time because he didn't got that much of strike in the first over. Sujit got most of the strike, but unfortunately when he's in a good rhythm, he's back into pavilion in the form of run out. I think it's going to be a big breakthrough here for Sarvagni, but the hero walking towards the middle, Ajay. बिल्कुल सतीश, जयंत एक चौका लगाने के बाद अपने लय को धीरे धीरे प्राप्त कर रहे थे और दुर्भाग्यवशात उनका विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में. अब उनका विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव क्रिएट हो चुका है सर्वाग्नि उर्वा के ऊपर. तो इसलिए जो दबाव इस वक्त क्रिएट हो चुका है, इस दबाव को मिटाने के लिए इस वक्त बल्लेबाज द सक्सेसफुल बल्लेबाज, यशस्वी बल्लेबाज ईश शक्ला के अजय को इस वक्त नंबर 3 स्पॉट पर प्रमोट किया गया है. और देखना यह है कि इस प्रमोशन का अजय यहां पर किस तरह सदुपयोग करते हैं. और जहां तक सर्वाग्नि उर्वा के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो मैं कहूंगा सतीश, अजय की उपस्थिति यहां पर उनके लिए बेहद जरूरी है. Exactly, Gopi, little bit surgery in the batting order needed to be, because Ajay is needed. This time straight to the hands of short mid wicket. What a catch there from Altaf. Absolutely extending his hand in the right time. The timing of extending extending his two hands is really terrific, Gopi, because ball traveled very quickly. And Sujit hit that one right from the middle of the bat. Look at that one in replay. Vinod bowled wide of the crease. Again, he drags that one outside the line of off stamp. Look at the ball traveling very quickly, but he's a tall fielder, Altaf, so that it's so easy for him and so easy for Altaf to catch that ball when his ball is traveled, just going over the top. An excellent catch taken there by Altaf. The wicket number 2 is back into pavilion of Sarvagni cricketers. Look at that one in replay, and Altaf reacted very quickly. That was really required for especially the closing fielders. And I think Rohan will going to agree with my point, because each and every teams required some fielders. Only the quick fielders will definitely they will stand inside the ring. The closing fielding needed some quick reaction, because ball really coming very quickly, especially in the backward point and cover point region. Some excellent fielder required, and just like I think one of the best fielder ever seen in international cricket, Jonty Rhodes is standing at backward point region. And in overarm cricket overs, the season ball cricket, Gopi, the ball travels very quickly in that region, the backward point, because just like you are cutting the wood in the axe, when the batsman going for the cut shot,
because that ball is, when bowler cuts the ball, you know, that ball is coming very quickly to that backward point region, and in a fraction of second, that's a good fielder required in that region, backward point. 9 for the loss of 2 wicket. Here is a right arm over the wicket. Next ball going to be a wide. Good piece of fielding there. Oh, one! This time the big wicket, huge wicket. Ajay back into pavilion. The celebration begins here. Why not? The hero of the last 2 matches is back into pavilion. I think Ajay is not really run well. Ah, my goodness. That was a total misunderstanding between the wicket. I think looks like the batsman, the striker, is not interested for the run. You know exactly, Ajay is not a quick runner between the wicket. That's why he stands there. But Ajay is running here. That's a big mistake. But in this occasion, with a little bit presence of mind required here from the striker, because if Pradeep stays in there only, then after Ajay crossing to here, then he might be safe. And even if the first attempt, the wicketkeeper managed to stump, I think the striker as the batsman going to be out. And the fact that the first attempt, the wicketkeeper missed the stumps, second attempt made the stump, then Ajay is definitely is out of the crease. बिल्कुल सतीश, शायद स्ट्राइकर के बल्लेबाज वहां पर रुके रहते, जब विकेट कीपर ने स्टंप्सों को बिखेरा था तो शायद अजय का विकेट यहां पर बच सकता था और वो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पर आउट हो सकते थे, लेकिन वो दौड़ पड़े थे। और यहां पर मैं कहूंगा सतीश, गलती अजय की थी। उन्होंने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी, वाइड गेंद थी, तो यहां पर वो स्ट्राइक को अपने पास लेना चाहते थे, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, खुद स्ट्राइक पर आना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और इस जल्दबाजी का भुगतान उन्हें यहां पर करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद। और निस्संदेह बेशकीमती विकेट यहां पर प्राप्त कर चुका है 5 स्टार अडोर और एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लग चुका है सर्वाग्नि उर्वा के लिए। Absolutely, it's a big blow for Sarvagni Urwa. This time, lovely shot, beautifully driven down to deep, extra coverage, and there is a protection in the deep, so that just a single. So once again, one more very good over progressing here for 5-star Adore. They're strengthening a grip over this match after getting a wicket of Ajay. Look at the body language. Looks like they're in a stop. From the far end, went for the big shot without coming into the line of the delivery. One more good over is completed. 2 overs completed after completion of 2 overs, chasing 53 to win this match. Now they are 11 for the loss of 3 wicket, and now 42 more runs required for the victory. 24 deliveries, 10 on the board for the loss of 3 wicket. Now 43 more runs required for the victory, and 24 deliveries remaining of the innings. And Gopi, once again I want to welcome back for this the crucial situation, but I think a little bit disappointment for Sarvagni cricketers. They couldn't manage to perform just like we are predicted earlier, that if the opposition team able to get 50 plus runs, then it's going to be a psychological advantage. That is the result here. That is the result, that if they couldn't manage to handle the pressure to chasing a big total like 52 runs under floodlight, it's a big score. And even the wicket of Ajay, the little bit looks like there was a curtain in front of Sarvagni Urva, that winning this match is definitely going to be a little bit dream, unless 1 or 2 batsmen need to go for some big shot. There is no other option at all. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अजय का विकेट गिरना निस्संदेह शायद पर्दे को कुछ हद तक गिरा चुका है, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर इस वक्त सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही अब उनको इस मैच में वापस ला सकती है। और क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और यहाँ पर एक आक्रामक, एक विध्वंसक, एक चमत्कारी गेंदबाजी निश्चित रूप से मैं कहूंगा यहाँ पर सर्वग्नि उर्वा को इस मैच में वापस ला सकती है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मुस्तफा ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था, ना तो द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज आगे निकल आए थे, एन मौके पर अपने कदमों को वो क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और देखा कि गेंद वहां पर विकेट कीपर फील्ड कर चुके अपने दूसरे प्रयत्न में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर तो यहाँ पर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। और गेंदबाज एक बार फिर से
गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्डमैन पर और एक रन फिर से मिलेगा वाइड के रूप में। तो दो लगातार वाइड यहाँ पर गेंदबाज मुस्तफा फेंक चुके हैं और इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस तरह किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी यहाँ पर करनी चाहिए। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर और एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जैसा कि मैंने और सतीश ने कहा, सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। हर डॉट गेंद के साथ रिकॉर्ड रन रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ उनके लिए। गेंदबाज मुस्तफा इस वक्त तैयार, 10 से 12 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहता है। एक बार फिर से वाइड, हैट्रिक वाइड, 3 लगातार वाइड यहाँ पर फेंक चुके हैं और सामने वाले टीम के 3 विकेटें सिर्फ 10 रन पर गिरे हो तब आपको विकेट टू विकेट यहां पर गेंदबाजी करनी होती है। और यहां पर निस्संदेह ऐसे वाइड्स बल्लेबाज का मानसिक आत्मविश्वास को काफी हद तक वृद्धि करते हैं। और जहां तक सवाल है 3 वाइडों की बदौलत अब स्ट्रेट अवे मैं कहूंगा दबाव गेंदबाज के ऊपर। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, मुस्तफा गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। प्रदीप, माफ कीजिए कार्तिक, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कवर पॉइंट पर गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट से फीटर दौड़ कर आए। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। निस्संदेह एक सुंदर सा नजारा हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, फ्लड लाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई इस मैदान पर गिर चुकी है। इस मैदान को उज्जवल यहाँ पर कर चुकी है, उजाला फैला चुकी है। और इस अंडर फ्लडलाइट्स के तले इस श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से आयोजन इस वक्त किया है टीम फॉर्च्यून ने। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स पर इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए। इस बीच मुस्तफा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, इस वक्त कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई और वाइड की जरूर मांग की इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर ने इशारे से कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है। धीरे धीरे गेंदबाजी में अपने वापसी करते हुए 3 लगातार वाइड फेंकने के बाद मुस्तफा अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए प्रदीप और मुस्तफा की ओर की अगली गेंद क्रीज के कोने से गेंद बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह चुके और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर 14 रनों पर रुक चुका है। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और निस्संदेह इस वक्त तख्ता 5 स्टार अड्डूर का भारी लगता हुआ और सर्वाग्नि उर्वा को चाहिए इस वक्त एक आक्रामक बल्लेबाजी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। और इस बीच मुस्तफा एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडली गेंद, गेंद पहुंची सी लिमिट ऑन पर, गेंद को रोका गया 20 गज के दायरे के अंदर। 1 रन बल्लेबाज को यहां पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 15 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress। और मुस्तफा गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में केवल सिंगल्स के रूप में अब तक वो रन प्रदान कर चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, जस्ट ओवर द कवर फील्डर सेट, गेंद निकल चुकी है इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर और गेंद इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर बैकअप किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर 3 रन प्राप्त कर चुके हैं। तो इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया था, नॉट क्वाइट मिडली गेट, लेकिन गेंद कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से निकली, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकना चाहा था लेकिन नाकामयाब। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। 18 रन यहां पर बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, एक लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर मुस्तफा का। और एक बार फिर से वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप, जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और 10 से 12 बार एक बार फिर से गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को छालना चाहा और इस बार बाउंड ऑफ हिज लेग्स,
शफल होते हुए गेंद को उछालना चाहता है, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लगभग जमीन के सहारे आई और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी. एक्स्ट्रा क्विकर came almost along the carpet and got rid of the right-handed batsman. तो यहां पर विकेट गिर चुका है 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर एक दुखदायक न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा, दुखदायक खबर कहना पड़ेगा. हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्पिन मांत्रिक, महान क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, जिनका निधन अभी कुछ देर पहले यहां पर हुआ है हार्ट अटैक की वजह से. थाईलैंड में उनका निधन हुआ है. तो यहां पर निस्संदेह मैं कहूंगा सतीश, ये एक क्रिकेट जगत के लिए बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज है. Absolutely, Gopi. Two shocking news. Early morning, it's Rod Marsh is passed away. Now it's a Shane Warne. It's definitely very shocking because he's just 52, and a man who definitely was ruled the world is this leg spin, and I think it's 708 wickets he took in the test matches, and the second highest wicket taker in test cricket matches after Muthaiya Muralidharan. And definitely, Gopi, it was definitely very difficult to digest that news, Gopi. The Shane Warne, one of my favorite spinner as per the spin bowling is concerned, more than Muthaiya Muralidharan. I think I refer Shane Warne, one of the best leg spin bowler ever seen in international cricket. Really, it's a very shocking news. बिल्कुल सतीश, और लेग स्पिन मांत्रिक जिसे कहा जा सकता है, जिन्होंने लगभग 2 डिकेड्स, लगभग 20 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप जमाई और कई बेहतरीन गेंदें उन्होंने पे की. 708 विकेट, बिल्कुल सही बात, और लगभग 300 के करीब विकेट वो वनडे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैचेस में भी ले चुके हैं. और उनका अकालिक निधन निस्संदेह यहाँ पर सारे विश्व में क्रीड़ा प्रेमियों को दुख के सागर में ढकेल चुका है. और हम सर्व क्रीड़ा प्रेमी, विश्व के सर्व क्रीड़ा प्रेमी और सब लोगों की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. तो यहाँ पर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं. एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेटर लाइन. गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. और गेंद, उस गेंद को कौन भूल सकता है सतीश, जो बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब से वहां नवाजा गया था उन्हें. माइक गैटिंग लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, फॉरवर्ड शॉट लेके अति करीब टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा घुमाव लेकर माइक गैटिंग के पैरों के बीच से निकलकर गेंद को, स्टंप्स को बिकर कर ले गई थी. और निस्संदेह उस तरीके की गेंदबाजी को आने वाले वर्षों में भी क्रीड़ा प्रेमी भूल नहीं पाएंगे. और एक बासी ताली अगेंस्ट पाकिस्तान, अंतिम ओवर बाकी था, उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट ने आकर उनसे कुछ कहा और दोनों ने कुछ चंद सेकंड बातें की और करीबन 3 या 4 गेंदें बाकी थे खेल समाप्त होने में, और अगली गेंद पर ही गॉट रिड ऑफ बासी ताली. और उसी तरह की गेंद लगभग लेग स्टंप पर आई, डिविएट होती हुई काफी ज्यादा टर्न ली, इतनी ज्यादा टर्न ली कि बासी ताली सिर्फ पैर को आगे लाकर गेंद को ढकेलना चाहा, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उनके गेंद उनके टांगों के बीच से निकलकर सीधे मिड और लेग स्टंप पर जा टकराई. तो इस तरह की गेंदबाजी सिर्फ शेन वॉर्न ही कर सकते हैं. और निस्संदेह क्रिकेट इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सदा अमर रहेगा. जैसे डॉन ब्रैडमैन, जो कि क्रिकेट विश्व के ध्रुव तारा जो कि जिन्हें कहते हैं, उसी तरह शेन वॉर्न का नाम भी हमेशा, जब तक क्रिकेट जीवित रहेगा तब तक शेन वॉर्न का नाम हमेशा लिया जाएगा. तो एक बार फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस गेंद की, इस ओवर की अगली गेंद पर बढ़ते हैं. बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ और धीरे धीरे इस मैच में 5 स्टार अड्डूर अपनी पकड़ को मजबूत यहां पर करता हुआ. तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद जाती हुई और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. वाइड का इशारा और फ्रस्ट्रेशंस इस वक्त बल्लेबाजों के चेहरे पर दिखाई देता हुआ. 19 for the loss of 4 wicket, and now they are looking deep in trouble. और निस्संदेह उनके बारे में और एक बात कहनी होगी. आईपीएल 2008 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स के वो कप्तान थे और अपने टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया था उस ऋतु में. 2008 when he was captained Rajasthan Royals, and Rajasthan Royals become the champion of IPL in that season.
तो ये सब तरीके का खेल है, सब तरीके का साधन उन्होंने अपने अचीवमेंट कहना पड़ेगा अपने क्रिकेट करियर में किया। और निस्संदेह यहाँ पर दुर्भाग्यवशात उनका हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से यहाँ पर निधन हो चुका है। तो बहुत ही बुरी खबर यहाँ पर सारे विश्व के क्रीड़ा प्रेमियों के लिए। और यहाँ पर जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो अगली गेंद की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा विकेट कीपर और गेंद इस वक्त निशाने पर टकरा चुकी है। तो विकेटों पर विकेट गिरते हुए और दबाव यहां पर बढ़ता हुआ, और ऐसा कहना पड़ेगा अब कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही इस मैच में सर्वाग्नि उर्वा को वापस ला सकती है। 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस एंड नाउ 14 balls remaining in overall calculation in their innings and 34 more runs now they have to score for victory. टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई जा रहा है, देखिए 34 रन चाहिए 14 गेंदों पर। समीकरण इस वक्त बिल्कुल आईने की तरह साफ, सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित है और नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। तो मैं कहूंगा इस मैच में 5 स्टार अड्डूर के सदस्यों ने संगठित प्रदर्शन दिया है और उसकी बदौलत इस वक्त उनकी टीम का तख्ता भारी लगता हुआ। तो विजय इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विनोद, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाज फयाज, माफ कीजिए, और इस बार गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है, अपील जारी है और अंपायर की उंगली यहां पर उठ चुकी है। बाउल्ड आउट के रूप में एक्स्ट्रा क्विकर गेंद पर अपना विकेट खो बैठे थे विजय, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, नाकामयाब, और गेंद सीधे उनके मिड लेग स्टंप पर टकरा चुकी है। विकेट यहां पर गिर चुका है, देखिए यहां पर किस तरह से हुआ। हैव अ लुक एट दिस एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी एंड आई थिंक आफ्टर स्टकिंग टू हिज लेग द बॉल आफ्टर हिटिंग द स्टंप्स, तो 7वां विकेट गिर चुका है 19 रनों के योग पर। अब 13 गेंदें बाकी, 34 रन चाहिए, 34 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज। जस्ट दे गॉट 3 विकेट्स इन हैंड। निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए, और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का तो नंबर 9 बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर मौजूद है और बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बारी है। गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद का शॉट कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ रन मिलेगा, इस वक्त जरूर थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा। मैं समझता हूं गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी अंतिम क्षण में, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 20 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति। 33 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज एंड द टारगेट सीम्स टू बी स्टिफर एंड स्टिफर नाउ फॉर सर्वाग्नि उर्वा। तो जहां तक इस श्रृंखला के बारे में कहा जाए तो निस्संदेह व्हाट अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट, युवरत्ना ट्रॉफी 2022 which proudly organized by टीम फॉर्च्यून, और निस्संदेह ये श्रृंखला आयोजन किया गया है दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आज इस श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल, दूसरे दिन का पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ, और इस बीच और निस्संदेह और यहाँ पर एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और निस्संदेह अगर आप लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के जरिए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव टेलीकास्ट का मजा लें यूट्यूब पर। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो अब मंजिल काफी दूर, और ऐसा कहना पड़ेगा सर्वाग्नि उर्वा की नैया बीच मझधार में इस वक्त जूझती नजर आती हुई, डोलती नजर आती हुई, और मंजिल काफी दूर है। सिर्फ छक्के या चौके ही अब उन्हें उनकी नैया को सही तट तक पहुंचा सकते हैं। पहली गेंद ड्राइव किया, हेलीकॉप्टर शॉट, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 21 रनों पर। 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 11 balls remaining, 32 more runs now they have to score for victory। और जहां तक सवाल है इस वक्त
यहाँ पर 21 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। तोइफ इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त सीधी मिडॉन पर और बल्लेबाज धनराज इस वक्त रन के लिए दौड़ चुके हैं। एक रन मिलेगा। 22 नाउ रन इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए सिर्फ और इस वक्त करारे स्ट्रोक ही उनको सही अपने सही तट तक सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज 5 स्टार अड्डूर के और इस बीच तोइफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार टिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट जस्ट ओवर द एक्स्ट्रा कवर फील्डर सेड। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 23 for 7 now, 9 balls remaining and 30 runs more now they have to score for victory। और लगभग अपना शिकंजा कस चुका है इस मैच में 5 स्टार अड्डूर और इस वक्त बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए बल्लेबाज सर्वाग निरुवा के ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी, सफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहता धनराज ने, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े धनराज, स्ट्राइकर एंड पर खतरा हो सकता है, निशाना चूका और इस बीच एक रन का इजाफा हो चुका है। 24 for the loss of 7 wickets, 29 to get now from 7 deliveries। इस ओवर में अंतिम बार तोइफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, सामना इस वक्त लेने के लिए तैयार सागर और इस ओवर में आखिरी बार तोइफ सागर के लिए दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को उछाला, शॉट मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से, मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से गिरना पड़ेगा, लॉन्ग ऑफ पर एक रन मिला। 25 for 7 एंड नाउ 28 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। और सतीश आइए अंतिम बार माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं, अंतिम ओवर बाकी 28 रन चाहिए, 28 टू गेट और मैं समझता हूं 28 रनों के लिए इस वक्त उन्हें करारे स्ट्रोक्स ही अब लगाने होंगे और जहां तक सवाल है सिर्फ 3 विकेटें सुरक्षित है और ऐसा कहना पड़ेगा जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब उन्हें कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जहां तक मैच के विजय के संभावना का सवाल है, इट्स गोइंग टू बी 80-20 एट द सिचुएशन इन द फेवर ऑफ 5 स्टार अड्डूर। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। So thank you very much, Gopi. So from the far end, it's a 28 to get for victory here. The first ball, it's going to be dotted. And now I think the format is not the format, it is because 28 to get from 5 balls. The 5 sixes takes Sarwag Nirva into victory, but I think it's definitely going to be a difficult task. Under floodlight hitting 5 sixes in a row, and it's definitely just a celebration required here for 5-star Adur to getting into the finals of prestigious YUVARATNA trophy. This time lofted, the chance here for the fielder to take the catch, and he taken that one comfortably. And one more wicket is back into pavilion. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದಿವಸ 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಡ್ನಿ ಮಾಸ್ ಹಾಗೂ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ we want to give tribute to 2 stars of international cricket. They left away, especially the big loss is Shane Warne. From the far end, right arm over the wicket, balls, and again they wanted to hit a big shot on this time. Dhanraj wanted to hit a big shot down to onside region, missed it completely. Now last 4 deliveries left here. 3 deliveries left and 28 runs required for the victory. Right arm over the wicket, balls again now. The opportunity of run out, but they are not interested, rightly so.
because that wicket will not going to affect the result of this match. Already 5-star Adur, they came into the semi-final. Now just one ball remaining, the formalities of the winning this match. So last ball of the over. Right, over the gets ball him, that's it. And now I request all the cricket players and as well as cricket viewers, please just for a minute, we want to give a tribute for Shane Warne as well as Rodney Marsh, who left us today. Those who are got a fantastic record in international cricket, and especially the Shane Warne, I think it's going to be very shocking news. One who got 708 wickets in test matches, 293 in ODI, and 70 wickets in T20 matches. That means almost 1,000 wickets, more than 1,000 wickets. It was absolutely unbelievable, incredible performance. So here we go. ದಯಮಾಡಿ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಯಮಂತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲಕದಂತದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಬಕ ರಾಡ್ನಿ ಮಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ. So it's a time for the prayer. Please stand for 2 minutes. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So that's it for the day number 2, and the news here is the 5-star Adur, they came into the finals of prestigious YUVARATNA Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in the memory of late Puneet Rajkumar, and congratulations 5-star Adur for a wonderful performance. You are deserve this place where you are played in this particular cricket tournament and defeating one of the favorite of coming into the finals, Sarvagni Ruwa, in the semi-final as well. And a disappointment, Sarvagni, but they played a very good game of cricket till the semi-final. But in the semi-final, not up to the mark. But winning and losing is a part of cricket. They played a very good game of cricket as well. And it's time to say goodbye from the commentary box. So we'll see you not tomorrow. Exactly day after tomorrow, Sunday, will going to be a final day of this cricket. In this final day of cricket, we have the 8 top teams will going to participate to get the place in the big final as well. Now time to announce a man of the match of the semi-final. I think it's going to be only one choice, that is Asif Adur is a man of the match of the semi-final. At the same time, I request the captain of Sarvagni Ruwa, please collect your memento for the representation of this wonderful YUVARATNA Trophy 2022. And okay, thank you very much each and everyone. Special thanks to the spectators. They came in a huge number today also, and they supported this cricket tournament. Thanks to each and everyone. Special thanks to the officials, the field umpires, the third umpires, and they done a great job. And special thanks to our scorer, Satya Swarup, done a great job as a scorer. And thanks to all the technicians of King Sports YouTube channel. They're the one responsible for the success of the cricket tournament, Gopi, because throughout the 2 days they've done a great job getting some quality coverage of this cricket tournament. A lot of the very good feedback coming for King Sports channel as well. And I once again request on behalf of ourselves for the cricket lovers, please subscribe this channel and support this YouTube channel, King Sports. And thank you very much. That's it for the day number 2. We'll see you day after tomorrow, exactly at 8:30 a.m. in the morning, Sunday. Thank you very much. Thank you. So man of the match winner, Asif. Asif of a 5-star Adur. So congratulations Asif, you played an excellent game of cricket, especially the semi-final.
Really, he changed the game for your team. Played a magnificent innings, and you deserve this Man of the Match award. Nayan Kunjatbail of Team Fortune presenting this Man of the Match award to Asif. Tribal Tattoos presenting this award. Thank you very much, Tribal Tattoos, for your cooperation. And colorful t-shirts. Man of the Match for Asif for his wonderful performance in the semi-final, quarter-final, semi-final in fact, and they came into the finals of this wonderful cricket tournament. I request Captain of Sarwag Nirwa, please report here. Captain of Sarwag Nirwa, please come and collect your memento for the representation of this cricket tournament. Played a very good game of cricket. I'm a little bit disappointed that you are not through to the final, but you played a very good game of cricket. It's not a easy job to coming into the semi-final. You done a great job as well. And I request the captain, please come here and collect your memento from our organizers. Thank you very much. So Naveen will going to present this memento for the captain of Sarwag Nirwa for his representation.